ये रावलपिंडी है, पोठोहार का सबसे पुराना और कदीम शहर, और यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी आज शुरू हो रहा है। सेंट्रल पंजाब और सिंध की टीमें आमने सामने होंगी। ये दोनों बराबर की टीमें हैं और इनमें से एक आज इस पिच से अच्छी यादें लेकर वापस जाएगी। ये टिपिकल रावलपिंडी की पिच लगती है। इस पर हरियाली आपको नज़र आएगी जा बजा, और पहले दिन आमतौर पर फास्ट बॉलर्स के लिए इस विकेट को साजगार ख्याल किया जाता है, और आज भी हालात मुख्तलिफ नहीं हैं माजी से। अब से कुछ देर पहले टॉस हुआ, अली यूनुस दोनों कप्तानों के हमरा मौजूद थे, और आइए पता चलाते हैं वहाँ क्या हुआ। It's a lovely morning here in Rawalpindi for the start of Quaid-e-Azam Trophy season 22-23, and we are all set for the toss. I've got the two captains with me, Saud Shakil for Sindh, Mohammad Saad for Central, and Ali Naqvi is our match referee. And the news that is that Sindh, being the away side, have opted that they're going to ball first. And I would like the captains to shake hand and have a word with us. Saud, आप नेचुरली आपके पास ऑप्शन थी बॉलिंग करने की, तो पिच को देखते हुए आपको लगा कि ये सही डिसीजन है? हाँ, मेरा ख्याल है ये काफ़ी सही डिसीजन रहेगा। नया सीज़न स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा चीज़ों को देखेंगे, थोड़ा सा रियलाइज़ करेंगे, उसके मुताबिक फिर प्लान करेंगे। T20 सीज़न बहुत शानदार रहा आपका, तो आप चाहेंगे कि आपकी टीम वैसी ही परफॉर्मेंस रिपीट करें यहाँ पे? ऑब्वियसली जब आप इतना अच्छा टूर्नामेंट जीतते हैं तो आपका मोरल वैसे ही बूस्टअप होता है। कोशिश करेंगे अच्छी क्रिकेट खेलें, क्वालिटी क्रिकेट खेलें। और टीम चेंजेस आपके, अगर हम T20 से बात करें कमिंग टू 4-day क्रिकेट? जी, हमारे सीनियर प्रोज वापसी आ गए, खुर्रम मंजूर वापसी आ गए, फवाद आलम वापसी आ गए, लेकिन हमारे पास यंगस्टर वही हैं, साद खान भी खेल रहे हैं, मैं उमर यूसुफ भी खेल रहे हैं, साइम अयूब का डेब्यू कर रहे हैं आज, आसिम महमूद का डेब्यू है, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है सीनियर्स और जूनियर्स का। राइट, ऑल द बेस्ट साद शकील, थैंक यू वेरी मच। साद, ऑप्शन नहीं थी आपके पास, अगर आपके पास ऑप्शन होती तो आप क्या डिसाइड करते? आई थिंक वी वुड हैव बैटेड फर्स्ट। सीनियर प्रोज अभी आपके साइड में नहीं है, अजहर अली को वापस आना है, तो अभी यंगस्टर्स के साथ जा रहे हैं इस साइड में? आई थिंक वी जस्ट मिसिंग अजहर, बाकी आबिद है, अब्दुल्ला है, दे वेरी गुड ओपनर्स फॉर दे प्लेड फॉर पाकिस्तान, करंट खेल रहे हैं। उसके बाद वी हैव अ मिक्स टीम, एक्सपीरियंस भी है, फिर यंगस्टर्स हैं, वी गॉट द एनर्जी, होपफुली लेट्स होप फॉर द बेस्ट। या और आपको पिच देख के कैसा लगा? काफ़ी घास मौजूद है, तो क्या ये खतरे की घंटी है? आई थिंक ये पिच बाद में व्हाट आई फील के थोड़ा तेज़ होता जाएगा, तो आई थिंक लेटर हाफ या लेटर ऑन जो थर्ड फोर्थ डे होगा वो ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा, सो आई थिंक वी वुड हैव बैटेड एनीवे। राइट, चलिए, ऑल द बेस्ट Mansad. Right, the news is that Sindh had the option to ball first as they are the away side, and they will be bowling first. यहाँ टॉस के मौके पर सिंध ने पहले बैटिंग का इंतखाब किया है, और ये आपके सामने दोनों टीमें हैं। मोहम्मद साद की आदत कर रहे हैं सेंट्रल पंजाब की, क्योंकि इस पहले मैच के लिए अजहर अली दस्तयाब नहीं थे। आबिद अली की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापसी हो रही है पूरी तरह फिट होने के बाद। अली ज़रियाब जो हैं इनको भी खेलने का मौका मिलेगा अजहर की अदम मौजूदगी में, और सिंध की टीम में साइम अयूब अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेलेंगे, और आसिफ महमूद को भी डेब्यू करने का मौका है, जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। मतला बिल्कुल साफ है और गेंद आज वाज़े नज़र आएगी इन बैट्समैनों को। नई कुकाबरा से आमना सामना होगा आबिद अली का, जो 9000 रन बनाए हुए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 25 सेंचुरियाँ हैं, 249 उनका बेहतरीन स्कोर है, और उनके हमरा अब्दुल्ला शफीक। इनके मुतालिक कुछ भी कहना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। यहीं पर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी स्कोर की थी, और मेरे साथ टेस्ट डेब्यू पर 2 सेंचुरी बनाने वाले यासिर हमीद कमेंट्री बॉक्स में आ गए। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। जी शुक्रिया तारिक भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज फर्स्ट क्लास का नई उम्मीदों और नई उमंगों के साथ सीज़न का आगाज़ हो रहा है पिंडी स्टेडियम में, जहाँ 4 स्लिप्स खड़ी की हैं। यहाँ आबिद अली के लिए मीर हमज़ा ने पहली गेंद इन स्विंग करने की कोशिश की थी, आबिद अली ने इससे अच्छा टैकल किया। यहाँ के बाउंस से पाला पड़ेगा इन ओपनर्स को, ख़ासतौर पर नई गेंद का सामना करना ये कभी भी आसान नहीं होता रावलपिंडी में।
जी बिल्कुल नया बॉल और कंडीशन जो हैं वो फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ी सूटेबल हैं और मैं समझता हूँ जिस तरह की फॉर्म में मीर हमज़ा हैं तो आई मस्ट से कि ये डेफिनेटली ट्रबल कर सकते हैं बैट्समैन को अर्ली ऑन। और हवा में, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर थी। ये पहला स्कोरिंग शॉट सेंट्रल पंजाब के लिए इस 2022 के कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का सीजन का। आबिद अली अपने स्ट्रोक खेलने की शनाख्त रखते हैं, सूरत हाल जैसी भी हो, ये हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेलने पर यकीन रखते हैं। जी बिल्कुल आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक की आपने बात की, दोनों अपना पॉइंट प्रूव कर चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे और आबिद अली का कम बैक है आफ्टर इलनेस और विश हिम ऑल द बेस्ट। शॉट उन्होंने खेली, थोड़ी सी हवा में थी, पिच में थोड़ा सा मॉइस्चर है। बाहर जाता हुआ बॉल और बड़े आराम से उन्होंने छोड़ा और ये इनकी खासियत है इनकी बैटिंग की। आबिद अली ने जहाँ पे भी रन किए हैं तो नया बॉल जो है जो इनकी रीच में नहीं है उसको छोड़ते बहुत अच्छा रहे हैं। तो आई गेस यहाँ पे ये सिंध के बॉलर्स को टेस्ट भी कर सकते हैं अगर ये थोड़ा सा लंबा खेल कर फॉर्म इनकी वापस आती है। सिंध की टीम क्योंकि मेहमान है और जो प्लेइंग कंडीशंस हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की, उनके मुताबिक मेहमान टीम के पास ये हक होता है कि वो पहले बॉलिंग कर सकते हैं अगर वो उन कंडीशंस को समझते हैं कि एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अलबत्ता अगर दोनों टीमें बैटिंग करना चाह रही हैं, या यूँ कहना चाहिए कि मेहमान टीम अगर बैटिंग करना चाह रही तो फिर टॉस होगा। आज टॉस की नौबत नहीं आई क्योंकि सऊद शकील की ख्वाहिश पहले बॉलिंग करने की थी। बहुत अच्छा आगाज़ किया सिंध ने इस सीज़न का, नेशनल T20 कप जीतकर उन्हें अपनी धाक बिठाई। रावलपिंडी के बाद मुल्तान में खैबर पख्तूनख्वा की मजबूत टीम को शिकस्त दी। ये इकलौते लेग स्पिनर हैं जाहिद महमूद, 3 पेसर हैं सिंध की टीम में, मीर हमज़ा के अलावा मोहम्मद उमर और आसिफ महमूद, खुर्रम मंजूर। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट का यहाँ हिस्सा समझे जाते हैं सिंध के लिए। सरफराज अहमद विकेट कीपर हैं। फवाद आलम को भी हम एक्शन में देखेंगे, आपको स्लिप में नज़र आ रहे हैं। तजुर्बा ज़्यादा है सिंध की बैटिंग लाइनअप में अगर दोनों टीमों का मवाजना करते हैं, क्योंकि सेंट्रल पंजाब की बैटिंग लाइनअप जो है उसमें ज़्यादातर नए खिलाड़ी हैं। इस पर यासिर की राय लेंगे। पहला ओवर ख़त्म हुआ 2 के स्कोर पर। एक्सीलेंट फिनिश टू दी ओवर। मीर हमज़ा ने बहुत अच्छा बॉल किया और इस बार स्विंग होके अंदर आया बॉल, जो वो चाह रहे थे आखिरी बॉल वो कर गए। तो थोड़ा सा अब ये है कि आफ्टर द पिच जो मूवमेंट है उसको भी देखना पड़ेगा। मोहम्मद उमर जो हैं इनको तरजीह दी गई है सुहेल खान पर। ये दाएं हाथ से सीम बॉलिंग करते हैं, अच्छे टैलेंटेड क्रिकेटर हैं। 2 साल पहले इनका भी डेब्यू हुआ था, खासा मुतासिर कुर्राम। ये 2 फास्ट बॉलर सिंध से उभर कर सामने आए थे, शाहनवाज धानी और मोहम्मद उमर। बाद में दोनों मुल्तान सुल्तान्स के लिए PSL क्रिकेट भी खेले। मोहम्मद उमर ने 13 विकेटें ली हुई हैं। ये भी गेंद को स्विंग करने की सलाहियत रखते हैं। इनकी स्टॉक डिलीवरी है वो पढ़ने के बाद बाहर निकलती है। जी गालबन कोई स्क्रीन के सामने आ गया था। बिल्कुल मोहम्मद उमर की बात की आपने। मोहम्मद उमर पेशावर ज़ल्मी से इन्होंने बड़ा मुतासर कुन एक सीज़न भी खेला हुआ है और
प्रेशर में अच्छे बॉल करते हैं और बॉल आगे करते हैं। और इट विल बी इंटरेस्टिंग मैच बैटल बिटवीन अब्दुल्ला शफीक, जो कि हम सब जानते हैं बड़े टेक्निकल प्लेयर हैं, बॉडी के पास खेलते हैं, बिल्कुल आई लाइन के नीचे। देखना होगा कि आज वो किस तरह अपनी इनिंग को बिल्ड करते हैं। विकेटों के पीछे इस वक्त जो फील्ड है वो खासी गुंजान लग रही है। उसमें खुर्रम मंसूर पहली स्लिप में, उनके बिल्कुल बराबर में दूसरी स्लिप पर इस वक्त देखा जा सकता है साद खान को। और उसके बाद गैप है, क्योंकि दो जो फील्डर इसके बाद कैचिंग पोजीशन में है, कप्तान सऊद और फवाद आलम। तो हम कह सकते हैं कि दो स्लिप्स हैं, दो गलीज हैं। बैकवर्ड पॉइंट पर साइम है। ओह, ये अच्छी डिलीवरी थी, बड़ी आला लाइन और लेंथ। अब्दुल्ला शफीक शशोपंज में नजर आए, छोड़ा जाए, खेला जाए। खूबसूरत बॉल, यही एरिया है जहाँ पे इनको हिट करना है। और ये ऑल डे लॉन्ग अगर यहीं पे हिट करते रहेंगे इनको रिजल्ट भी मिलेंगे। जिस तरह के ये बॉल बीट हुआ, अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेले, बल्ले को अपने पास रखा। अगर थोड़ा सा हैंग करते बल्ला तो बॉल स्लिप्स की तरफ जा सकती थी। यहाँ अब्दुल्ला शफीक अब जान गए हैं इन 3 गेंदों के बाद कि ज़्यादातर गेंद उनसे दूर लेकर जाएंगे, क्योंकि इनको देखा है कभी कभार परेशानी हो जाती है अब्दुल्ला शफीक को जब गेंद गुड लेंथ से जो है इन स्विंग करे। अभी हाल ही में ये जब खेल रहे थे हॉलैंड में वनडे इंटरनेशनल मैच, तो वहाँ पर भी बोल्ड हो गए। T20 क्रिकेट में भी 1-2 बार यहाँ पिंडी में ही खेलते हुए बोल्ड हुए ऐसी गेंदों पर जो कि गुड लेंथ से इन स्विंग हुई थी। अच्छी फील्डिंग फवाद की, बिल्कुल। ये जो गुड लेंथ का एरिया होता है तारिक भाई, ये यहाँ पे अगर बॉलर दोनों स्विंग करता है तो बैट्समैन को काफ़ी ट्रबल हो सकती है। तो इसलिए प्रिएम्पशन नहीं करनी चाहिए कि ये बॉल आउट स्विंगर है, तो हमेशा इन स्विंग ही खेलना चाहिए बैट्समैन को, स्पेशली ओपनर को। तो बाहर का बॉल जो है वो फिर उसमें ये होता है कि उनकी जो हेड पोजीशन है वो घिरता नहीं है, हेड आउट स्विंग को लीन नहीं करते। तो ये चीज़ अच्छी है, अगर ये इन स्विंग खेलते रहे तो जो बॉल अंदर आएगा वो बल्ले पे लगेगा, जो बाहर जाएगा वो उसको जाने दें। ऐसे कहते हैं कि आती को आने दो, जाती को जाने दो। तो यहाँ 2 ओवर्स मुकम्मल हुए। ये मेडन ओवर रहा मोहम्मद उमर का, अच्छी इब्तिदा की उन्होंने। स्कोर है 2, किसी विकेट के नुकसान के बगैर। सेंट्रल पंजाब की बैटिंग लाइनअप में आपको कई निस्बतन ना तजुर्बेकार खिलाड़ी नज़र आएंगे। तैयब ताहिर, उनके भी इब्तदाई अयाम हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। आमिर यामीन को खेलने का मौका दिया है सेंट्रल पंजाब ने। सदर्न पंजाब से ये आए हैं नॉर्थ की जानिब। और क्योंकि अजहर अली नहीं है, अहमद शहजाद भी स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन उनको खेलने का मौका नहीं मिला। अलबत्ता जो सेंट्रल पंजाब का आज उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो निस्बतन आजमूदा कार है। वकास मकसूद हैं, मोहम्मद अली ये पिछले सीज़न के टॉप विकेट टेकर, और उसामा मीर लेग स्पिनर हैं। कासिम अकरम ऑफ स्पिन बॉलिंग करेंगे। जी, सेंट्रल पंजाब ने यंगस्टर्स को मौका दिया है और यंगस्टर्स पे रिलाई किया है, बट यू नीड सम एक्सपीरियंस एज वेल, क्योंकि इस तरह की कंडीशंस को कोप करने के लिए आपके पास बैटिंग लाइन में अजहर अली नहीं है, तो मोहम्मद साद
कप्तान हैं, नंबर 4 पे खेलते हैं। काफ़ी टेस्टिंग होगा ये यंगस्टर्स के लिए और डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी भी है जो हमेशा डोर्स खोलती है उनके लिए। एक अपॉर्चुनिटी है कि इधर परफॉर्म करके अपना लेग मार्क साइड बनाए। में नाचिया 1 रन के लिए। आबिद अली ने, ये जो ओपनिंग पार्टनरशिप है ये बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में वैसी डेप्थ नहीं है सेंट्रल पंजाब की। जिस तरह पहले जिक्र हुआ, अली ज़रियाब ये भी इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट के उफक पर नए नए हैं, बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं। तैयब ताहिर, ये भी देखना होगा कि क्या उनको वनडे में खेलने का मौका मिलेगा या अली ज़रियाब आएंगे। पहली विकेट गिरने के बाद कासिम अकरम जो हैं ये आमतौर पर नंबर 5 और नंबर 6 की पोजीशन पर बैटिंग करते हैं। जी, पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है सेंट्रल पंजाब के लिए, क्योंकि ये दोनों जो हैं टेक्निकली बड़े इक्विप्ड हैं। अब्दुल्ला और अज़हर इस दफ़ा गैप में खेले और 2 रन हासिल किए। अगर आप इस शॉट को भी देखें तो इनका बल्ला बिल्कुल पास रहा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनका बहुत अच्छा है, इनकी बैटिंग की जो खासा है। एंड यही किया इन्होंने, बॉल को रोका आने दिया अपने पास, 2 रन हासिल किए आराम से। जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अब्दुल्ला की बैटिंग की बात होती है तो ये ऐसा लगता है जैसे मछली जो है पानी में आ गई है, क्योंकि इसी से इन्होंने शोहरत हासिल की है बड़े कम अरसे में। रेड बॉल क्रिकेट में ये इनको अपने जिस तरह करीब आने देते हैं, बिल्कुल अपनी पलकों के नीचे खेलते हैं और तवाज़ुन इनका जो है लाजवाब है, मिसाली तवाज़ुन है। और इनका जो दिफा है वो भी बड़ा मजबूत है। पाकिस्तान में बहुत कम ओपनर्स का जो डिफेंस है वो इतना मजबूत देखा गया करियर की इब्तिदा में। जी बिल्कुल तारिक भाई, और इन्होंने प्रूव किया है बियॉन्ड द लिमिट्स के इज़ वेरी गुड। इनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, बॉलें खेलते हैं, इनको कोई फिक्र नहीं होती, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑल्दो थोड़ा सा स्ट्राइक रेट में कम हो जाता है, लेकिन इनके पास शॉट्स भी हैं, बाद में कवर कर लेते हैं ये। 3 रन मीर हमजा के इस ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने बनाए, मजमूई स्कोर है 5। थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है सेंट्रल पंजाब का ड्रेसिंग रूम, विच इज़ गुड साइन कि ओपनर्स ने, देखिए ओपनर्स का एक बहुत बड़ा रोल है स्पेशली 4 डे में, और इस तरह का पिच हो और अगर वो सुकून से खेल रहे हो तो ड्रेसिंग रूम में एक अच्छा मैसेज जाता है। और आई गेस कि इन लोगों की यही कोशिश होगी कि जितना लंबा लेके जा सकते हैं, क्योंकि सिंध की जो बॉलिंग है इतनी एक्सपीरियंस्ड है कि अगर उनको यहाँ पे 1-2 विकेट्स मिलती हैं अर्ली ऑन तो एक प्रेशर डाल सकते हैं पीछे। ये गुलाम अली हैं जो कि इस मैच में हेड कोच हैं सिंध के। इसके बाद ये पीजीएल के लिए लाहौर चले जाएंगे। गुलाम अली और पॉल निक्सन जो इंग्लैंड से आ रहे हैं लेस्टरशायर से, वो सिंध के हेड कोच हो जाएंगे। वो अभी क्योंकि काउंटी का जो आखिरी राउंड चल रहा है तो ख़त्म होते ही पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। सिंध के साथ इनके अच्छे चंद हफ्ते गुजरे। सिंध के ड्रेसिंग रूम में इन्होंने फाइटिंग स्पिरिट पैदा की और टीम चैंपियन बनी मुल्तान जाकर पहली बार कौमी T20 कप में। दोनों टीमों के जो नामजद हेड कोचेस हैं वो गैर मुल्की हैं। पॉल फ्रैंक्स ये नॉटिंघमशायर में कोचिंग करते रहे, वहीं से इन्होंने अपनी ज़्यादा क्रिकेट खेली है। अच्छे ऑलराउंडर होते थे इंग्लैंड के लिए भी, ये वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में नज़र आए थे कुछ अरसे के लिए। पॉल फ्रैंक्स ये हेड कोच हैं, उनके साथ बिलाल शफायत ये असिस्टेंट कोच हैं। ये भी नॉटिंघमशायर के लिए क्रिकेट खेले हुए हैं, पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर। और जी ये फर्स्ट क्लास भी खेले यहाँ से, हबीब बैंक से खेले थे, और
हम एक दूसरे के अगेंस्ट भी एक मैच खेले, इन्होंने इसने 100 किया था और अच्छे प्लेयर थे टेक्निकली, ही वाज गुड प्लेयर। अच्छा ये दिस इज़ आई थिंक अगर ये चीज़ थोड़ी सी प्लेयर्स को काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। फॉरेन कोचेस ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं तो प्लेयर्स का थोड़ा सा वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी, अपने कल्चर को इंजेक्ट कर सकते हैं। अच्छी दिफाई बैटिंग कर रहे हैं ये दोनों खिलाड़ी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ सर झुकाकर इनिंग्स का आगाज़ किया है, क्योंकि जानते हैं कि पहले वार नहीं करने देना सिंध को। ये बहुत ही आम घंटा है इस मैच में। रावलपिंडी में अक्सर देखा गया कि पहले दिन जो पहली इनिंग्स है ये कई बार ये खाने के वक्फे के आसपास ही ये निमट जाती है। तो कई बार यहाँ ऐसा भी हो चुका है कि तीसरी इनिंग्स मैच की पहले ही दिन शुरू हो गई पिंडी में, ख़ासतौर पर जब मौसम सरमा में यहाँ क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेली जाती थी। देखिए तारिक भाई, इसीलिए कहते हैं एक्सपीरियंस इज़ विजडम। ये दोनों जो हैं अपने एक्सपीरियंस से जो अच्छी बॉल्स उनको जाने दे रहे हैं, और यही इस इनिंग्स का मैं समझता हूँ कि की पॉइंट होगा इस पिच पे, कि अगर आप जो बॉल पास आ रही है उसको खेलें, क्योंकि गैप्स की तो कमी नहीं होती 4 डे क्रिकेट में। आपने सिर्फ बॉल को मिडल करना है और जो ज़बरदस्ती की शॉट्स हैं उनसे अवॉइड करें, क्योंकि 4 स्लिप्स खड़ी हैं, वो किसी वक्त भी फील्डर के हाथ में जा सकता है बॉल। बेस्ट थिंग यही है जो दोनों कर रहे हैं इस वक्त। और इस बार एस की शक्ल दी थी, अच्छी बॉलिंग उमर की, बैट्समैन का एस बना दिया था। इंग्लिश टर्म में जब आप ओपन अप होते हैं आउट स्विंग गेंद पर। 4 ओवर्स मुकम्मल हुए, एक और मेडन ओवर, मुसलसल दूसरा मेडन ओवर नौजवान उमर की जानिब से। मजमुआ 5 सीपी। मामूल से ये क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जो है ये पहले शुरू हुई है इस साल सितंबर में। पहले हम अक्सर यही देखते थे कि ये टूर्नामेंट जो है विंटर से मंसूब होता था, और ज़्यादातर जो मैचेस हैं ये पाकिस्तान के जनूब में खेले जाते थे। इस बार इसकी इब्तिदा शिमाली इलाकों से हुई है। आज एबटाबाद में खैबर पख्तूनख्वा की टीम खेल रही है अपने होम ग्राउंड पर बलूचिस्तान से। फैसलाबाद में भी सदर्न और नॉर्दर्न का मुकाबला हो रहा है। तो इस बारे में क्या कहना है यासिर? ये जो टूर्नामेंट जो है निस्बतन सीज़न के शुरू में शुरू करने का ख्याल है। जी तारिक भाई, थोड़ा सा हॉट वेदर की वजह से बैट्समैन को थोड़ा सा एडवांटेज तो होता है डेफिनेटली, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो जल्दी ड्राई होता है। जो आपने बात की सर्दियों की, विंटर की, तो डेफिनेटली ठंड की वजह से मॉइस्चर रहता है और बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती है जो पास में होता रहा है। बट थोड़ा क्लाइमेट चेंज की वजह से और दूर से खेले, लेकिन गैप में आउटफील्ड बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, इसलिए फील्डर कोशां हैं, लेकिन गेंद उन्हें मात दे गई। अब्दुल्ला शफीक टेम्प्ट हो गए थे ऑफ स्टंप के बाहर, क्योंकि तकरीबन 5 ओवर से उन्होंने कोई स्ट्रोक नहीं खेला था। जी बिल्कुल, थोड़ा सा बाहर किया बॉल और आगे था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने इसको अच्छा मैनेज किया और थोड़ा बॉडी से दूर था, लेकिन वो कनेक्ट कर गए बिकॉज ऑफ रीच। यही चाह रहे हैं सिंध की टीम के थोड़ा सा ये शॉट्स खेलने जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो पॉप डाउन हो रहे हैं। तो ये चीज़, दिस इज़ अ गुड साइन फॉर सिंध अगर देखा जाए। और किनारा लगा, और जो गैप है 4 फील्डर्स के दरमियान विकेटों के पीछे, गेंद वहीं से जा निकली। खुश नसीबी ने साथ दिया, ये तकरीबन जाल में आ गए थे तजुर्बेकार मीर हमजा के। अब्दुल्ला
देखिए जो सिंध का जो प्लान है वो ऑलमोस्ट वर्क कर गया था, क्योंकि अब्दुल्ला का बल्ला निकला है थोड़ा सा, जिसकी वजह से बॉल ने एज लिया, लेकिन लकी रहे गैप में गया, कैरी नहीं हुआ, 4 और रन हासिल हुए। तो इस पिच पे ये तो चलता रहेगा तारिक। कई जो कप्तान हैं वो गेम को फॉलो करते हैं क्रिकेट फील्ड पर जब वो क़यादत कर रहे होते हैं, तो यहाँ कमेंट्री बॉक्स से अगर हम गेम को फॉलो करें तो ये जो इनने फील्ड खड़ी की हुई है, ये 4 फील्डर कॉर्डन में हैं, आप नहीं समझते उस गैप को ये ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि शुरू के ओवर्स हैं और आपको ऑल आउट अटैक पर जाना है। अगर यहाँ पर फील्डर होते तो ये मौका हो सकता था। देखिए ऑलरेडी तारिक भाई 4 स्लिप्स खड़ी हैं, और आई गेस जो बात आप कर रहे हैं गैप को कवर करने की, बिल्कुल डेफिनेटली इसको कहते हैं फ्लाइंग स्लिप, जो 4th स्लिप होती है, और अक्सर बॉल इधर ही जाता है। लेकिन जो फील्डर अब इन्होंने लिया है शॉर्ट कवर पे, तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा टीज करेगा अब्दुल्ला को। ओवर इख्तिताम हुआ, 5 ओवर्स के बाद 13 कोई आउट। अब ये बैट पर लेकिन बाहर इम्पैक्ट हुआ है। मुसलसल आउट स्विंग बॉलिंग कर रहे थे और इस बार बैट्समैन को खेलने पर मजबूर किया उमर ने। जी अगर देखा जाए तो सिंध के जो बॉलर्स हैं बिल्कुल अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, और ये बॉल भी डिसीव हो गए थे ऑलमोस्ट। लकी रह के इनसाइड एज हुआ, पर थोड़ा सा हाई जा रहा था। लेकिन अगर सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दिस इज़ अ गुड साइन। तारिक भाई, जिस तरह बैटिंग पिच पे बैट्समैन खेलने जाता है और उसको टेम्परामेंट चाहिए, इसी तरह ग्रीन पिच जब होती है तो फास्ट बॉलर को भी टेम्परामेंट चाहिए। तो एक ही एरिया में बॉल करे और अपनी कंसंट्रेशन लूज़ ना करे। ये लास्ट बॉल जो हमने देखा, उमर ने थोड़ा सा ऑफलाइन हो गए थे, थोड़ी सी हल्की सी फ्रस्ट्रेशन नज़र आई। जब 2 अच्छे प्लेयर खेल रहे होते हैं, एक दफ़ा फिर ऑफलाइन हुए, इस दफ़ा टांग पे गई बॉल। अगर आप विद इन द लिमिट्स खेलें जिस तरह दोनों खेल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली बॉलर की कंसंट्रेशन को भी डाउन कर देते हैं थोड़ा सा। लेफ्ट साइड में सब 2 फील्डर बैट्समैन के सामने हैं। फाइनल के अलावा अच्छा मुकाबला हो रहा है, गेंद और बल्ले के दरमियान चमकदार मुकाबला है। दोनों अपना सीज़न की इब्तिदा में अपनी टीम के लिए इस वक्त दिफाई इनिंग्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी जानिब सिंध के बॉलर्स की ख्वाहिश है कि वो टोन सेट करें विकटें लेकर, क्योंकि ऐसी पिचेस पर जो है बैटिंग से ज़्यादा इस फॉर्मेट में जो फास्ट बॉलर होते हैं उन्होंने टोन सेट करनी होती है मैच की, ख़ास तौर पर जब आप पहले बॉलिंग करने का फैसला कर चुके हों। ये अच्छा शॉट, दिल का शॉट ड्राइव, और ये ख़ास ड्राइव है आबिद अली का, 4 रन्स। जी खूबसूरत शॉट। आबिद अली इसी बॉल का वेट कर रहे हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जो बॉल उनके स्लॉट में होगी उसको मिडल करेंगे, और बिल्कुल वैसा ही किया। खूबसूरत शॉट, और गैप में खेल के 4 रन हासिल किए। बिल्कुल कोई
एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं कर रहे. दैट्स वाई दे आर किलिंग द इंटेंट. सिंध की जो नए बॉल की इंटेंट है उसको किल करने में इन दोनों का एक रोल है जो नज़र आ रहा है. ये दोनों जो हैं ये मिलकर बैटिंग करना इनको बहुत पसंद है. जो हमने बांग्लादेश में देखा था 2 टेस्ट मैचों में, ढाका और चिटागोंग में, जिस तरह दोनों की पार्टनरशिप्स हुई थी. 6 ओवर्स के बाद स्कोर 18 है किसी नुकसान के बगैर. और आबिद ने बड़ी मदद की थी अब्दुल्ला शफीक की दोनों इनिंग्स में, क्योंकि जब आप नए आते हैं तो आपको मदद की ज़रूरत होती है. दूसरे एंड पर यासिर बैटिंग करते हुए. जी डेफिनेटली आपका पार्टनर अच्छा हो, सीनियर पार्टनर हो और आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो तो वो हमेशा आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है. और जितने भी प्रेशर लॉक्स होते हैं वो सारे खुल जाते हैं. और सेम बिल्कुल आप जिस टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं उसमें दोनों ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की थी, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया था. हालांकि मुश्किल कंडीशंस थी और बॉल स्पिन भी हो रहा था. स्पिनर्स बहुत जल्दी आ रहे थे टेस्ट मैच में. यहाँ पे इस बार चलते हुए आए आगे ताकि बॉलर को मजबूर करें, गेंद पीछे गिराए, स्विंग न कर सकें. मीर हमजा आबिद अली से आप ऐसी चालों की तवक्को करते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत क्रिकेट खेली हुई है इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड भी. एक ज़माने में इस्लामाबाद के लिए भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे जब लाहौर की टीम में जगह नहीं बनती थी. और उसी ज़माने में ही इन्होंने ज़्यादा मुतासिर करना भी शुरू किया था आबिद ने. पिछले सीज़न में इन्होंने खासा मुश्किल वक्त भी गुजारा, आसान नहीं था. जिस तरह का आर्जा को लाक हुआ सीज़न के दौरान जब ये अपनी क्रिकेट की जोबन पर आ रहे थे बांग्लादेश में. ये पाकिस्तान के विनिंग बैट्समैन साबित हुए थे और उसके बाद अचानक क्रिकेट से दूर होना पड़ा. लेकिन अच्छी खबर ये कि बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख कर कि वापस आ गए फिट होकर. जी बिल्कुल एक बाहिम्मत इंसान है आबिद अली. और इस तरह की आपने बात की उनकी करियर की, शुरू में उन्होंने काफ़ी मेहनती क्रिकेटर हैं और एक अनफॉर्चुनेट हुआ इनके साथ, लेकिन होपफुली कम बैक इंशाल्लाह और दोबारा इसी तरह अपनी क्रिकेट खेलेंगे, अपनी फॉर्म को वापस लेके आएंगे. एक पॉजिटिव इंडिविजुअल है. आप बात कर रहे थे अभी जो नुक्ता आपने उठाया कि जो इस तरह की पिचेस होती हैं जब पहला दिन हो और फास्ट बॉलर्स से तवक्कुआत बढ़ जाएं. जिस तरह चौथे दिन जो है किसी भी टर्निंग पिच पर स्पिनर्स पे दबाव आ जाता है कई बार कारकर्दगी दिखाने का. ऐसी पिचेस पर जब कप्तान टॉस जीत के पहले बॉलिंग करे और पिच पे हरियाली भी हो तो फास्ट बॉलर्स पे भी दबाव आ सकता है पहले दिन विकेटें लेने का. जी बिल्कुल तारिक भाई, देखें जिस तरह जो पॉइंट जो मैं बात कर रहा था और आपने बिल्कुल ठीक बात की, क्योंकि एक आपसे एक्सपेक्टेशंस का भी प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशंस का. ये देखें पिच को अगर आप देखें तो इस पर काफ़ी घास नज़र आ रही है, तो एक बॉलर्स के लिए एक काफ़ी उम्मीद और होप है कि यार इस पर मैं अगर जिधर भी बॉल करूँगा तो सीम होगा, स्विंग होगा. लेकिन ऐसा नहीं है, वेदर वो नहीं है, नीचे जो फाउंडेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो आपको बड़े टेम्परामेंट से बॉलर बड़े प्लान के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी, ट्रैप करना पड़ेगा. आई रिमेंबर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब हम खेलते थे, थोड़ा सा अगर वो सीधा पिच होता तो वो स्लिपें निकाल के 2 सामने रख लेते थे और ड्राइवें खिलाना शुरू कर देते थे. तो उसमें 2-3 चौके लगते थे और चौथी 5वीं स्लिप में या फिर हाथ में चली जाती. तो इस तरह के कोई टैक्टिक्स यूज़ करने पड़ेंगे कैप्टन को. सिर्फ एक प्रीएम्पशन नहीं है कि आप प्रीएम्प्ट कर लें यार अगर घास है पिच पे तो आपने 4 स्लिपों के साथ करना नहीं. आप 2 गली, 2 स्लिप, 2 एक्स्ट्रा कवर इस तरह जाएँ और ऑफ स्टंप को पूरी तरह हिट करें. एक और अच्छी गेंद अब्दुल्ला शफीक ने आखिर में नरम हाथों से इससे खेला ताकि ये हवा में ना जाए. फील्डर के पास 7वां ओवर जाता रहा. सेंट्रल पंजाब ने बनाए हैं किसी नुकसान के बगैर 19.
Wonderful. That is a good start from Umar. He's into his 4th over. He's kept things tight. He's bowled in the right areas. He's asked a lot of questions. We're into the 8th over. 19 runs Central Punjab has scored. I've been joined by Shah Faisal alongside me. Stable start for Central Punjab, would you call it? Yeah, they negotiated the first half an hour with ease. Just a couple of alarms which are expected with the new ball. And although there's plenty of grass on the pitch, but this grass, not a lot of it is very green, and it is very deceptive. I think this Pindi pitch, I don't think this grass with the new ball is going to help a little bit, but it's not a given that you'll make the batters fall into any kind of trap if you don't bowl consistently in good areas. That's a little different that we witnessed here at National T20 Cup. Those were little bouncy pitches, and we haven't seen that sort of bounce as yet. Abid Ali has used his feet a couple of times. That shows that there's not much pace in that pitch, although there is dry grass on it. But that pace and bounce, we have not seen it yet. Before the start of the game, when we were out there, a lot of people were out there, and they had different opinions about what this pitch was going to do. I think Central Punjab assistant coach Humayun Farad came up with the idea. He said he expects the pitch to get drier and the ball to carry further, and he said he wouldn't mind batting first on that pitch, and eventually Sindh didn't contest the toss, so Central Punjab kind of got what they wanted. Absolutely. I think it was a straightforward decision for Central Punjab, as you just said. But Sindh, they were always looking to ball first, and you were talking about the grass on it. That might have, given them that edge that they wanted to bowl first, looking at the grass on the pitch. But it has not quite worked as they would have expected. A few misses, a catch going through the fielders. That's all that has happened for Sindh. But when you bowl first, you expect the bowlers to get those early wickets. They do, but it's going to be hard work for the bowlers, because Abid Ali and Abdullah Shafiq are test quality openers. They're not going to give their wickets away. And Yasir Hamid made a very good point towards the end of his first spell, that you've got to realize quickly as a captain what's happening on the pitch. You've got to be very proactive with your plans. You cannot just sit with one plan and wait for the results to come. You've got to keep an eye on how things are progressing, and you can change your plans. Yes, I agree partially, but still I believe that you got to be patient enough as a bowler. You got to keep hitting the right areas. We just in the 8th over of this first match, you got to wait enough, got to be patient. Yeah, that's what Umar is doing. He's just hitting the same area, same line and length over and over again. End of 8 overs, it's 19 for none, Central Punjab. I just love this news inside. Again, we've been talking about it all through that national T20. Here also, they've given a lot of opportunities to the youngsters. Somebody like Saim Ayub is making his debut today. Asif Mahmood. They're the two real players that really came out in national T20. And it's good to see them playing here with the red ball alongside players like Khurram Manzoor, Quaid-e-Azam, Sarfaraz Ahmed also in that side. So this will give a lot of confidence to these youngsters. And it's a big season in more than one ways, not just for these two teams but all the 6 teams. The debutant, Asif Mahmood. He was probably the pick of the cricketers from national T20 if you talk about. He's a very energetic, very hard boy, tall, he bowls well, bats well too, and is an excellent fielder too. Interesting to see him bowl in the longer format.
You know, Sindh has always had Sohail Khan in their ranks. He's a very, very good bowler with the new ball, but here young Asif has been given his opportunity. One change, just the 2 slips and a gully for him to start off. Punched nicely. That is beautiful. This will run away for 4. Yes, it does. That is Abdullah Shafiq special. Off the back foot, punched. Got up on his tiptoes. Rode the bounce very nicely. Asif is tall. He's likely to get more bounce. That's not the right length for the first day of a first-class game. Too short. And if you ultra critical, as we watch Abdullah Shafiq really timing the ball sweetly. This is his forte. Had a quiet time with the bat in the national T20. But what I was saying, Asif Mahmood, and if you want to be ultra critical of Sindh this morning, they haven't bowled enough balls in the right area, the fuller length. Yeah, the moment we were talking about these 2 youngsters, Saim Ayub, fantastic player, getting his first class cap, that yellow one, and Asif Mahmood also, another very fine all-round cricketer. Such a huge moment, such a great feeling this is. Well bowled. Is there any better feeling than this? Incredible. These 2 will remember this day for the rest of their lives. They've made a name for themselves in the white ball game, but this is different. This is where they really, the men, they're categorized as men, the boys turning into men when they play first class cricket. Nicely clipped. Couple of runs. Asif has been all over the place in this first over. Too short, too full, too straight on that occasion. As we were discussing, first day of the 4-day game, we really need to be consistently good in the areas, and that area has to be fuller. You have to invite the batters to drive, and even if you get scored in front of the wicket, you don't mind that. At least you give yourself a chance. It's 3 catchers, 2 slips and a gully behind the wicket. And a first over for Asim Mahmood in his first class career. 6 coming off it. After 9, it's 25 for none. Mohammad Umar has looked the most impressive of the fast bowlers used by Sindh side. Stuck to the task. Bowl those right areas. He's kept things tight for them. But again, if you look at that first ball. Ball length. That is used mostly to save runs, not to attack, not to get the wickets. I think, as you said, you got to be a little more fuller. You got to make them drive, because 3 slips and a gully are waiting for that edge. You make a good point. This is the white ball length. And Umar, although he didn't play in the National T20 Cup, but he's more renowned for his white ball cricket as well. That adjustment, which may seem very easy, it is not very easy actually for the bowlers to make that adjustment. We saw that edge, the only chance that went through the slips, Mir Hamza. He was inviting the drive. We haven't seen that consistently from Sindh bowlers. Yeah, that's one way of doing it. Yeah, that's not bad really. Push him back in the crease. A genuine bouncer. That's the first one we've seen today. Now, it can be only a plan, part of a plan.
plan would be to just keep him back in the crease and then float up that fuller delivery to see if he's slow in getting forward, getting the weight transferred onto that front foot. Sajid Afridi, Imran Javed, the two on-field umpires officiating this game. 10 gone, 30 for none. Slip has come out and a fielder at deep point has been placed. It was a matter of time that we saw this field change. 10th right, you get to change those field. It's on defensive side now. The run saving position that deep point is. So things don't looking good for Sindh after opting to ball first. We're nearing about the first hour of the play. Nothing really has happened for them. We were making a point earlier in our stint that South Shakil needs to look out for plans B and C. We didn't agree on what time, and you said they need to keep patient. It's again glorious. This is absolutely delightful piece of timing. It's again that back of a length, but he was onto it in a flash. Yeah, that is easily negotiated. This length will never trouble these two batters. They're too good for it. Very classical, very traditional batters, both of them. They play well on the back foot, even better on the front foot. But this time off the back foot. Brilliantly done by Abdullah Shafiq. Coming back to the point that you said plan B, when would you think that time will arrive where South Shakil would need to think elsewhere? Look at that, it has to come sooner than later because runs are coming. Now that the last shot we saw, there was a field at deep point, but still he timed it so beautifully. So that shows that they're getting comfortable. Both these batters, they're quality batters minded, and they've got a good batting lineup. They've got Tayyib Tahir, Mohammad Saad, Ali Zaryar, Qasim Akram also. So they've got a quality batting lineup, this central Punjab side. You got to think and think quickly. Nicely clipped. Should be able to get 3 if not 4. Easily done in the end. 3 runs for Abid Ali. Too inconsistent there from Asif Mahmood in terms of line and in terms of length as well. If you ball there to Abid Ali, he'll clip you all day long. No trouble whatsoever. Good bouncer. Just so good to be here in Rawalpindi for this Quaid-e-Azam Trophy match. The first game being played between Sindh and Central Punjab. Two big sides. A bit of rivalry between them. The sort of semi-final we saw in Multan for that National T20 Cup was just an excellent game of cricket. Things did heat up in the end. Sindh came out victorious. Would they have that effect over here coming into first class cricket, the 4-day game? I would think so, because there was a needle between the two teams. Quite a few players are exactly the same from that semi-final lineup. They plug that gap now. Consistently back of a length from Asif Mahmood. Not threatening at all. 11 gone, 40 for none.
Three bowlers used: Mir Hamza, Mohammad Omar and Asif Mahmood. It won't be long that we see Zaid Mahmood in action. He's the leg spinner in the side. No wicket so far. 3 maidens for Mohammad Omar. I think that is the only positive. Change of ends for Mir Hamza. He was the one probably who looked to bowl that length that you were talking about, that fuller length, that make me drive length. Interesting this spell, because that lacquer would have come off by now. There's a little bit of breeze blowing as well. Will it help Hamza? It's a good, genuine swing bowler. See that? There you go. At least he's drawing Abid onto that front foot. Not quite the driving length, but at least getting him out of his comfort zone. And if he slips on one slightly fuller, lure him into the drive, those slippers will be in play. Yeah, only if he had a little more pace behind him, Mir Hamza, it would have been very lethal, very difficult, because he gets the swing. He bowls those in-swingers to the right-handers with the angle, leaving the right-handers. This won't trouble them. This length and with this pace, I think it's easy for the quality of Abid Ali and Abdullah Shafiq. The breeze that I was talking about, it should, the way we'll be looking at the pure strain, it will help Hamza take the ball away from the right-hander. That cover fielder, he's got a fielder in cover, 2 slips, 3 slips rather. Could do well with leaving that cover gap empty for Abid Ali. Was in the air for a bit. Abdullah Shafiq likes it on the back foot. We've seen that in this inning. He likes those punches off the back foot. And as this pitch progresses, as the match progresses, we will see quite of these shots from Abdullah Shafiq, because these pitches in Rawalpindi, they've got a bit in them, that bounce that we want to see in first class cricket. It's one thing we'll see in this first class season whilst we're covering the games in Rawalpindi. There will be opportunity for good stroke play. And some quality bowling just like that. That bounce will gradually get more and more for the bowlers, and that back of a length will become relevant. This one, the angle created more trouble to Abdullah Shafiq than anything else. That breeze just helping Hamza take the ball away slightly. Looked like an effort ball as well from Hamza. Bending his back. Bowlers like to see that response when the ball thuds into the gloves of the keeper at waist height. Pitching outside maybe. There was a huge appeal or a sigh from the fielding side. Just the aborted appeal. Really, that angle is causing Abdullah Shafiq a little bit of problem in this over. The previous one went away from him, and this one was straighter. It looked like he lost his balance. It's fallen away slightly. Hamza is a good exponent of that, because he'll build that pressure. If he gets the one to swing back in from middle and off, that can really trouble the right-hander. Nice and solid by Abdullah Shafiq. As we come to the end of 12 overs, it's 40 for none. Central Punjab. They played well in National T20, qualified for the semi-final. Hunain Shah, the younger brother of Naseem Shah, also on your screen. Danyal also, he bowled really well until that
Last over he bowled in National T20, where he costed him a few runs. Probably the match too. That's better. This is where you should be looking to bowl most of your deliveries. That's the drive me length. Again, another important aspect of this first-class season is that in the morning we saw Central Punjab, the coaching staff. As we watch this one, slightly back of a length. Could do with a yard fuller. Paul Franks was there. Richard Stonier, who's worked before in Pakistan's domestic cricket, and Bilal Shafayat from Nottinghamshire. They're part of the coaching staff. Oh! Probably going down. And a little higher with the naked eye. Interesting replay, but Asif does create that angle which brings the ball in. Look, from quite wide of the crease, the angle was going down. And a little bit of high as well. Imran Javed had to make the call. And I think it's a good decision. Such a huge opportunity for this Central Punjab side, being coached by the foreign coaches. Bilal Shafayat we're talking about, Paul Franks also. Bilal Shafayat has played first-class cricket in Pakistan. That is such a huge opportunity for these youngsters to learn all the trades of the game, the modern-day game also, all these techniques. So they got to make the most use of this opportunity, these Central boys. They do. It's a great step as well from PCB. Richard Stonier in the picture, Paul Franks, Bilal Shafayat to the right of your picture. It's a great initiative. Bringing new ideas, modern day ideas into the domestic game will really help these youngsters to go to another level. So, you know, the competition is intense. We saw in the National T20, the margin between these 6 teams is very little. So they need to progress to the next level. And this high quality coaching will definitely help them. Absolutely, the tools are there. You got to make the use of it. You got to learn as cricketers. There's Sindh side. And Fisher for Sindh. This is nicely played, but fielder is placed there. It's the fielding coach for Sindh and Fisher. Paul Nixon is due to join Sindh side, but he hasn't come here yet. So that is what you were talking about. Such a huge opportunity for these youngsters, because they are the one who have to learn. PCB, yes, it's a great initiative. They can always provide you with the tools, but it's up to the individuals to learn. So huge opportunity for the cricketers. Ian Fisher is already joined, and like Ali said, Paul Nixon will be joining shortly. One was the call straight away from Abid Ali, and one he took. 13 overs gone, it's 43 for none. Slightly away from the ball. He's judged his run to the ball. Umar. Could have been an opportunity. Asif Mahmood on his debut, learning it the hard way. Bowling to top quality batters, test quality batters. The test can't be harder than this for the youngster. Steep learning curve. So far, he has been economical, but he hasn't threatened the batters a lot. Miranza will continue. That's effort delivery. You could just tell the effort was put in. Yeah, in the last over we were talking about the swing from Mir Hamza. We haven't seen that in swing from him to the right-handers. Two right-hander batters are on crease. Is that a stock delivery that he has kept? Is he setting them up? Or is it just that he's not finding that angle? He's not finding the rhythm for that in swing? Can be a setup as well.
You want to draw the batsman outside the off stump by angling it away. And when they get used to it, you throw in that in swinger with the front foot out of place, head out of shape, trap him in front. Oh, that's gone. That's the first wicket they were searching for. It was in the air. And the length we were talking about, they made him drive. And it went straight to that point fielder. So first wicket for Sindh. The old 1-2 trick, the bouncer to push him back in the crease, and then the fuller one. Abid's weight wasn't into the stroke. An aerial behind square. The experienced opener was trapped beautifully by Mir Hamza. This is quality bowling from the left armour. Yeah, that's experience for you. He bowled that bouncer that draw him on the back foot, and the next one was right up there. Abid Ali had to drive, and it went straight to the debutant Saim Ayub. It's 43 for 1. पानी का वक्फा तमाम हुआ। पहले घंटे के खेल में 13 ओवर्स 2 गेंदें हुई और सेंट्रल पंजाब ने 43 रन बनाकर 1 विकेट गंवाई। मीर हमजा जो है ये पहला घंटा इन्हीं के नाम रहा है, बहुत उम्दा इनने बॉलिंग की है, दोनों तरफ गेंद को स्विंग करने में कामयाब हुए, दोनों एंड से बॉलिंग की और उसका सिला मिला इन्हें टेस्ट ओपनर आबिद अली को जिस अंदाज से इन्होंने खेलने में मजबूर किया, उन्हें अपने दाम में लेकर आए। अली ज़रियाब वन डाउन पोजीशन पर खेलने के लिए आए हैं, बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं और इनके भी इब्तदाई अयाम है इनके फर्स्ट क्लास करियर के। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने अब्दुल्ला शफीक से ज़्यादा फर्स्ट क्लास रन्स बनाए हुए हैं, 1249। अब्दुल्ला शफीक ने आज अपने 1000 फर्स्ट क्लास रन्स मुकम्मल किए जब उन्होंने पहला चौका लगाया था सुबह के खेल में। तो इससे कह सकते हैं हम रन्स के एतबार से ये अब्दुल्ला शफीक से ज़्यादा तजुर्बेकार हैं। 3 स्लिप्स और गली को ला खड़ा किया है नए बैट्समैन के लिए। अच्छी इब्तिदा की, थोड़ा सा अपने हाथ दूर ज़रूर ले गए थे लेकिन 2 रन लेने में कामयाब हुए। पूरे इख्तियार के साथ शॉट खेला अली ज़रियाब ने। विकेट की अशद ज़रूरत थी, खासे जतन कर रही थी सिंध की टीम और स्क्वायर ड्राइव करते हुए आबिद अली आउट हुए। दूर से खेलना है, इतना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर फर्स्ट क्लास मैच के पहले सेशन में। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में अयाज शाह आए हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया तारिक। नहायत ही शानदार जाल बिछाया था मीर हमजा ने।
दुरुस्त फरमाया आपने, बड़ी टेक्निकल तरीके से आबिद अली को जाल में फंसाया। पहले शॉर्ट बॉल किया, सर के ऊपर से चौंका देने वाला बॉल था, और उसके बाद फुलर लेंथ बॉल था और उसको मजबूर कर दिया आबिद अली को खेलने पर। और आबिद अली को पवेलियन की राह दिखाई मीर हमजा ने। यहाँ कमज़ोर से शॉट खेले आबिद अली, जिस गेंद पर वो आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक ने दोनों ही ओपनर्स, मीर हमजा ने दरअसल दोनों ही ओपनर्स को खासा परेशान किया। जब ये बॉलिंग कर रहे थे मीडिया सेंटर एंड से, तो अब्दुल्ला शफीक के लिए इन्होंने परेशानियां खड़ी की, और अब जब ये पवेलियन एंड से बॉलिंग करने के लिए आए, ये आप देख सकते हैं लूज शॉट था ऑफ स्टंप के बाहर। वैसे भी जब बाएं हाथ के सीमर के सामने आप ये शॉट खेलते हैं तो आपके हाथ ज़्यादा दूर चले जाते हैं। और आप कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह गैप में निकालने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रन आ सकें। अच्छी बॉलिंग, कामयाब ओवर मीर हमजा का, जो वक्फे के दोनों तरफ बड़ा उम्दा रहा। इसमें विकेट भी आई और सिर्फ 2 रन्स गए, 45 पर 1। चार रोज़ा मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से आप बराह रास्त देख रहे हैं। आसिफ महमूद बॉलिंग करेंगे। ये वो लेंथ है जिन्हें इख्तियार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आसिफ ने आज ज़्यादा, या तो गेंद बहुत ज़्यादा बल्ले के करीब गिराई है, या बैट्समैन से दूर करते रहे हैं अपने ही हाफ में। ये सीखना होगा। अंदर आया बॉल, काफ़ी लेट स्विंग हुआ, बड़ी शानदार बॉलिंग कराई है आसिफ महमूद ने। पहला मैच खेल रहे हैं आज, और जिस किस्म की विकेट है रावलपिंडी की, मौसम बड़ा शानदार आज। उनकी रफ्तार जो है वो दीगर दोनों बॉलर्स से ज़्यादा थी, मीर हमजा से भी और मोहम्मद उमर से भी, लेकिन लेंथ वो नहीं है जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ज़ेब दे, क्योंकि अपना पहला मैच खेल रहे हैं, इससे दबाव में भी होंगे और सीखने को भी मिलेगा। साइम अयूब का भी पहला मैच है, और अच्छी यादें हैं साइम अयूब की ये पिछले चंद हफ्तों की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से। जिस तरह इन्होंने T20 क्रिकेट में ख़ुद को मनवाया, अपनी हैसियत को मनवाया, क्योंकि ये इब्तदाई टीम का हिस्सा नहीं थे। एहसान अली जब अनफिट हुए तो इन्हें सिंध के T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, फिर प्लेइंग 11 में जगह मिली, और यहाँ रावलपिंडी की चैलेंजिंग पिच पर इन्होंने जिस तरह की बैटिंग की, ये दूसरों से बहुत आगे नज़र आए। जिस तरह गेम को टाइम किया, और ख़ासतौर पर इनका जो रिस्ट वर्क था, इन्होंने बहुत से अपने परस्तार बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने गली में खेला, हवा में गेंद गई, लेकिन कोई फील्डर नहीं था। 4 रन और मिल गए। किसी फील्डर को हिलने का मौका भी नहीं मिला। काफी तेज बल्ले से लगने के बाद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई बॉल। निहायत ही शानदार आखिर तक बॉल पर नजरें जमाई हुई थी अब्दुल्ला शफीक ने। थोड़ा सा पे शूट जरूर हुआ, लेकिन गैप तलाश किया। दानिस्ता खेला था अब्दुल्ला शफीक ने, बाउंस को अच्छा उन्होंने हैंडल किया। काबिल तारीफ है रावलपिंडी की पिच, जहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए बाउंस है, सीम मूवमेंट भी है, गागा। बैट्समैन जो है, अगर आप स्ट्रोक मेकर हैं, आपकी टेक्निक बेहतर है, तो यहाँ पर अगर आप बॉलर्स से बचना जानते हैं तो उसके बाद रन्स भी बहुत हैं।
अब्दुल्ला शफीक ने जो बैक फुट पंच किया आज बड़ा काबिल दीद था। स्ट्रोक ऑफ द मॉर्निंग हम कह सकते हैं अब तक 15 ओवर्स के बाद 49 पर 1 सीपी। बहुत ज़्यादा मजबूत बैटिंग लाइनअप नहीं है सेंट्रल पंजाब की, क्योंकि यहाँ ज़रूर नौजवान खिलाड़ी इस लाइनअप का हिस्सा हैं, लेकिन थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में तजुर्बे का फुकदान है, इसलिए आमिर यामीन को हिस्सा बनाया गया, जो कि अच्छे ऑलराउंडर हैं। अलीशान विकेट कीपर हैं, वो भी बैटिंग कर सकते हैं। अली ज़रियाब जो हैं ये हम कह सकते हैं कि डिफेंसिव तर्ज के बैट्समैन हैं। रमज़ा गेम को स्विंग करने में कामयाब हो रहे हैं, हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं दे रहे। दिफा बड़ा मजबूत है अली ज़रियाब का, और फ्लिक कर दिया इस बॉल को। हल्का सा अंदर आया मीर हमजा का ये बॉल। दोनों फास्ट बॉलर्स को दरअसल दोनों रन से आजमाया गया है। ये अच्छा शॉट खेला, इस बार बैकफुट पर जाकर इनको गैप में धकेला, 2 रन हासिल किए अली ज़रियाब ने। ऑफ द मार्क हुए और सेंट्रल पंजाब ने ये अपना पहला मार्का मार लिया 50 रन का, जिसके लिए उन्हें खासी तगदौ करना पड़ी। शानदार पंच था, बॉडी से थोड़ा दूर था, लेकिन नजरें आखिर तक बॉल के ऊपर थी। ज़्यादातर ये आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट ही खेलते हुए नजर आएंगे। अली ज़रियाब एक बार फिर स्क्वायर ड्राइव किया, क्योंकि उनकी कोशिश होती है कि गेंद को अपने करीब आने दिया जाए, और यहाँ बॉलर की यही कोशिश होनी चाहिए कि इनको फ्रंट फुट पर लाया जाए, इनके पैड्स को अटैक किया जाए। ड्राइव कराने की ही यहाँ पर कोशिश होनी चाहिए मीर हमजा की। ये पीछे का बहुत बड़ा शानदार दिफा है इनका, दिफा बहुत मजबूत अली ज़रियाब का। यहाँ पर शायद जो दूसरा एंड है ये, क्योंकि हम दूसरे घंटे में आ चुके हैं, लेग स्पिनर को भी ला सकते हैं सऊ शकील खेल में, जायद महमूद को, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो पहला सेशन होता है उसमें स्पिनर्स के लिए होती है पिच से मदद, गेंद रुक कर आती है, और क्योंकि जो हल्की सी तरावत है इस पिच में वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं जल्द अज जल्द आकर। जायद महमूद और अच्छी बॉलिंग फॉर्म में भी हैं, और जाहिद महमूद में वो सलाहियत है कि वो ब्रेक थ्रू दिलवा सकते हैं अपनी टीम को। नहायत ही उभरते हुए पाकिस्तान के टैलेंटेड क्रिकेटर जाहिद महमूद, गुगली बड़ी अच्छी करते हैं, फ्लिपर बड़ा अच्छा करते हैं, और ऐसा लगता है कि शायद उनने ऊपर तोल रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। अच्छा दिफा किया, गेंद को एक बार फिर अपने करीब आने दिया अली ज़रियाब ने। 16 ओवर्स के बाद मजमुआ है 51।
16 ओवर्स के बाद जाहिद महमूद को आजमाने का फैसला किया है। सिंध के कप्तान सऊद ने 153 फर्स्ट क्लास विकेटें हैं, 52 मैचेस खेले हुए हैं, एक मैच में 10 विकेटें भी हैं और लंबे स्पेल करना जानते हैं जाहिद महमूद। और शायद जो है लेग स्पिनर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले इतने मैचेस उसके होने भी चाहिए, आपके 40-50 मैचेस होने चाहिए, फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा अच्छे कंट्रोल के साथ बॉलिंग कर सकेंगे। ये उस्मान कादिर के साथ हम कभी कभार मसला देखते हैं, उनने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई नहीं है इतनी ज़्यादा, यही वजह है कि वो कई बार ढीली ढाली बॉलिंग कर जाते हैं। और बिल्कुल बड़ा वसी तजर्बा है जाहिद महमूद का, फर्स्ट क्लास में एनर्जेटिक हैं, बॉलिंग के साथ साथ शानदार फील्डर भी हैं। इस वक्त विद द विंड बॉलिंग कर रहे हैं लेग स्पिनर, और गेंद जो है वो आपकी हवा आपकी स्क्रीन के दाएं से बाएं जानी चल रही है। गेंद को और ज़्यादा घुमा सकते हैं आसानी के साथ जाहिद महमूद, लेकिन बड़ी दिलजमी के साथ बैटिंग की है अब तक अब्दुल्ला शफीक ने, बड़े एतमाद के साथ और लंबी इनिंग्स खेलने की तान के आए हैं ओपनिंग बैट्समैन। यहाँ निर्मल सी हवा चल रही है। अब ये पोठोहार में रुत की रंगत है, ये तब्दील होना शुरू होती है जो ही ये सितंबर का आखिरी हफ्ता आता है, तो यहाँ जो मौसम की अदा है वो भी बदल जाती है। और मौसम की अदा के साथ साथ बॉलिंग में भी बड़ी मददगार साबित होती है ये हवाएं। यहाँ मुझे याद है जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट मैच हुआ था 1998 में, तो पहले दिन मैकगिल से बॉलिंग कराई गई थी। शेन वॉर्न उस दौरे पर दस्तयाब नहीं थे और मैकगिल ने पहले सेशन से विकेटें लेना शुरू कर दी थी। और पहले दिन जो पाकिस्तान की बैटिंग उस रोज़ नहीं चल पाई थी, उसमें मैकगिल ने बड़ा तबाहकुन स्पेल किया था। उससे स्पिनर्स को यहाँ जल्दी लाने में कोई मुजायका नहीं होता। 2 रन हासिल किए अली ज़रियाब ने। बाहर वाला किनारा लगा अली ज़रियाब के बल्ले का, थोड़ा जल्दी खेल गए इस बॉल को। जैसे कि आपका शानदार तजर्बा है तारिक, आपने अभी जिक्र ही किया था और जाहिद महमूद को इशारा कर दिया कप्तान ने बॉलिंग पे लाने का, और आज अच्छी बॉलिंग का आगाज़ किया है जाहिद महमूद ने। शानदार इस बार बैकफुट पंच किया किसी दिक्कत के बावजूद, और 4 रन्स पा लिए अली ज़रियाब ने। जाहिद महमूद के पहले ओवर में 7 रन्स बने। इख्तिताम अच्छा नहीं कर सके अपने इस अव्वली ओवर का। 58 पर 1। शॉट से ही अंदाज़ा हो गया था और हिलने का गवारा नहीं किया अली ज़रियाब ने, और बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। नहायत ही शानदार चौका। अट्ठावन पर 1 मोहम्मद उमर को वापस लाने का फैसला किया गया पवेलियन एंड से।
रन्स मिल रहे हैं अब्दुल्ला शफीक को। आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि थर्ड मैन के इलाके से उन्हें डैब करके रन्स हासिल किए हूँ। आज खासी नबी तुली बॉलिंग कराई है मोहम्मद उमर ने, लेकिन थोड़ा सा बल्ले से दूर दूर रहे हैं। सिंध और सेंट्रल पंजाब ये दो बड़े पहलवान हैं पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, क्योंकि क्या में पाकिस्तान से पहले जो कराची और लाहौर ये दो शहर थे जहां पर क्रिकेट जो है वो ज़्यादा खेली जाती थी। सिलसिलावार लाहौर पहला मरकज़ था शुमाली हिंदुस्तान में क्रिकेट का, और उसके बाद कराची और सिंध की जो क्रिकेट टीम थी और क्रिकेटर्स उनको कामयाबियाँ मिलना शुरू हुई। और क्या में पाकिस्तान के बाद जो पहला फर्स्ट क्लास मैच था वो भी सिंध और पंजाब के दरमियान ही खेला गया था। लॉरेंस गार्डन जो बागे जिना कहलाता है उस मैच का मेज़बान था, और असलम खोखर ने उस पाकिस्तान के पहले फर्स्ट क्लास मैच में सेंचुरी स्कोर की थी, लेकिन थोड़ी सी नीचे रही उमर की। बल्ले का अंदरली किनारा लगा, स्क्वायर लेग पर गई बॉल। बड़ा वसी तजर्बा, और वहीं से पाकिस्तान में क्रिकेट की मोहब्बत पैदा हुई और बड़े मुस्बत लोग सामने आए। सिंध और पंजाब के माबाइन जब मुकाबले शुरू हुए, फवाद आलम जो हैं अच्छा लग रहा है इनको क्रिकेट फील्ड पर वापस आते देखकर। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने बहुत ज़्यादा खाक छानी और उनकी मेहनत का उनको सिला मिला जब ये वापस आए पाकिस्तान की टेस्ट टीम में। वो श्रीलंका में नहीं खेल सके थे, लेकिन ये अभी भी बड़े कलीदी बैट्समैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। रेड बॉल क्रिकेट का बड़ा तजुर्बा है, बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं, और सिंध की टीम की भी ये बड़ी ज़रूरत है जी। और नौजवानों के लिए इंस्पायरेशन भी है, जिस तरह मेहनत करके कमबैक किया इन्होंने, और रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं इस वक्त सिंध की बैटिंग लाइन की। यहाँ ये दोनों स्टॉलवर्ड्स हैं, फवाद आलम और खुर्रम मंजूर। सिंध की टीम को तजुर्बा चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपनी जो बैटिंग है वो मिडल ऑर्डर ही वो मिली जुली तश्कील दी है। इम्तजाज है नए और माने हुए खिलाड़ियों का, तो अच्छी मुतवाज़िन टीम लग रही है सिंध की पेपर पर। 18 ओवर्स के बाद 60 पर 1। या 4 ही बॉलर्स को अब तक आजमाया गया। आसिफ महमूद महंगे रहे और उनको हटाकर जायद महमूद से बॉलिंग कराई जा रही है इस वक्त मीडिया सेंटर एंड से। देखना ये कि जायद महमूद जो हैं ये बहुत ज़्यादा अराउंड द विकेट बॉलिंग करते नहीं हैं, तो ये कितने कंफर्टेबल होंगे बॉलिंग क्रीज पर लेफ्ट हैंडर के सामने। लेकिन बाउंस तो इनको मिलता रहेगा इस पिच पर, ये किसी भी दिन बॉलिंग करेंगे जाहिद महमूद। उछाल अच्छा मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंडेड बैटर को बॉल करने में थोड़ा सा मुश्किल भी पेश आती है लेग ब्रेक बॉलर को।
क्योंकि 4 ही बॉलर्स मौजूद हैं, तो जाहिद महमूद को यहाँ पर नपी तुली बॉलिंग भी करना होगी। इनको जाहिर है कि ये दोनों तरह के किरदार अदा करना होंगे, रन्स रोकने का भी, ताकि दूसरी तरफ फास्ट बॉलर ज़्यादा अटैक कर सकें, और विकटें भी यहाँ पर इनको लेना होंगी। ये ज़्यादा अच्छी गेंद नहीं थी, लेकिन फ़ायदा नहीं उठा सके अली ज़रियाब। मोहम्मद असगर आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि इस टीम में नहीं खेल रहे, बाहर में खिलाड़ी, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं मोहम्मद असगर। आमतौर पर सिंध की टीम जो है ये 2 स्पिनर्स खेलना पसंद करती है, लेकिन ये विकेट ऐसी है, ये एबटाबाद में जब या रावलपिंडी इस्लामाबाद में जब आप खेलने के लिए आते हैं रेड बॉल क्रिकेट, तो टीमों का इन्हिसार कम हो जाता है स्पिन बॉलिंग पर, और ये विकेटें ज़्यादातर सपोर्ट करती हैं फास्ट बॉलिंग को, मौसम की वजह से, ग्राउंड की वजह से। बड़ा मजबूत दिफा। स्पिन नज़र आ रही है, लेकिन खासी स्लो स्पिन है, ज़्यादा रफ्तार दिखाई दी नहीं। 61 पर 1। आया है बैटर को, का अली ज़रियाब जो हैं ये अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए। न्यूजीलैंड के दौरे पर गए थे आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। ज़्यादातर टीम से इन आउट होते रहे। 2020 के सीज़न में खासे मौके मिले थे जब सेंट्रल पंजाब की टीम जॉइंट चैम्पियन बनी थी केपी के साथ। हसन अली कप्तान थे। हसन अली अब सदर्न पंजाब की क़यादत कर रहे हैं आज फैसलाबाद में। तो ये पिछले बरस जो हैं ये इक्का दुक्का मैचों में कप्तान के तौर पर भी नज़र आए थे सेंट्रल पंजाब के अली ज़रियाब। 63 पर 1। Abdullah Shafiq batting on 30. He's batted well through this morning session. Facing a different challenge, that is of Zahid Mahmood. Sindh opting to bowl first. A seemingly grassy pitch. It hasn't done a lot. Probably not as much as Saud would have expected. This is sumptuous, beautifully played. Just the use of the feet and little caress down the ground. Really got to the pitch of the ball. Once he did that, he wasn't looking to hit the ball hard. Just pure timing and class from Abdullah Shafiq.
Zahid shouldn't be perturbed by that. He did the right thing by drawing Abdullah out of his comfort zone, out of his crease. Yeah, beautiful shot. And Abdullah Shafiq played excellent innings right from the beginning. He's playing some sensible cricket and playing accordingly and doesn't try too much. He's just letting the ball come to him. Exactly what you said. Just waiting for the ball. If you were the Sindh captain, would you be satisfied so far with the efforts of your bowlers? Yeah, I think Sindh did well so far, but we have to give credit to Abdullah Shafiq and early on Abid Ali. They played well. They played according to plan, and they let go the outside off-stump delivery. They didn't hang their bat, and the credit must go to Abdullah Shafiq for building this inning. I think we were discussing with earlier on as well that the lengths, we'll continue talking about it. Overgone, 67 for 1. We're talking about Sindh's efforts so far in these 21 overs. Would you be critical of the lengths the fast bowlers bowl? Would you have liked them to bowl slightly fuller? Yeah, definitely. They've got the wicket from same length you're talking about. A little fuller, more planned towards, the field. Just like that. That's exactly what you said earlier, that Abid and Abdullah didn't do. They didn't hang their bats. But Aliat Zaryab did. He didn't have to play that. Yeah, honestly, this is the first delivery I've seen him hanging outside the off stump. Early on, he played well. He let the ball come to him and didn't check his off stump really. This is the first time they have checked him, and I think as a bowler now, this is the time that he may go there. So this is again that I was talking about. Umar, the one that was angling away. He just suddenly went back for the in-swinger. Lack of plan, probably bowl a few in that same channel before you try the other one. Yeah, definitely. He has control. We can see he can swing the ball both sides. The first delivery ball outside it was going away to the left-hander, and now he brought him in. But he has to be he has to show some temperament here. Go outside the off stump, couple of deliveries more. Cannot come straight away inside. Just like that, but that's a better length, better line, drawing the batters forward. Like we saw with Abid Ali's dismissal, you draw the batters into that comfort zone where they think they're in, and they go for that big drive, and if they don't get to the pitch, they can edge the ball, and there's plenty of catchers behind the stumps, even at this stage of the session, 2 slips and a gully. So that fuller length will test the batters. Umar looks like he's the workhorse of this bowling attack into his 8th over. That's beautifully bowled. That's the lengths we're talking about, and that's the consistency. Excellent. Yeah, now the ball is talking. It's semi-new now, and we have 1.5 hour past the game, and this was came in. If you see, ball is a bit doing now. Yeah, the lacquer must have come off, and the breeze is blowing as well. And Umar, like
like you said, he has the ability to bring the ball back into the left-hander as well. And this one off the seam, not in the air, off the seam. Interesting passage of play just before lunch. So I can think of 3 consistent deliveries in good areas. That's excellent from Umar. Yeah, well bowled and well played. This is testing time for Ali Zaryab. He already got 13 on 29. But he has to really work hard to get runs here. 2 slips Senegali. Ring of fielders on the offside. Point, cover and mid-off. I'll ask Yasir's opinion about this field after this ball. Angling away. This time Ali Zaryab's discipline was good. 22 gone, 67 for 1. Abid Ali, the only casualty, gone for 29. Remember, he was making a comeback after that illness that he suffered at the back end of the last season. It was really good to see him on the park at the start of the season. Had a good enough outing, just faltered on that drive. Couldn't cope with the angle of Mir Hamza. There's a lot of talk about the wicket. Yasir, you were out there in the morning. What were your impressions of the wicket first thing, and has it played according to what you thought about it? See, the pitch is, as my opinion, when I saw the pitch, and I think it will help fast bowler throughout the day, at least today, because tomorrow they will cut the grass, maybe it do something different, but this pitch, the fast bowler is in comfort zone. If he bowls in the right areas and swing the ball with the control, with the plan, he bowl with the plan, according to plan, doesn't do much, you know. So I think it's good pitch for fast bowlers no, I think it's a good pitch for fast bowler as well, and good pitch for batter as well. The batsman like Abdullah Shafiq, you know, he played with discipline early on, and same Abdullah and Abid were playing when they were playing. When Abdullah shift his gear, he's just waiting for cut shot. He didn't go for drive, whereas Abid, when he transformed, he shifted his gear, he went for that drive, which was expensive. So drive may be expensive till the end, because the pitch has grass, pitch has that, you know. You make a good point, Yasir, because I can draw from a lot of the experiences. We've seen a lot of cricket here, and Yasir in particular has played a lot of cricket here as well. Every time that we used to play as well, we'll come back and continue this about the wicket. 23 gone, 69 for 1. Mir Hamza 7 overs, the only wicket taker, 1 for 18. Asif was all over the place in his first spell on his debut. Zahid has had a little ball, none for 14. Nothing much is expected of him on the first day. So Shakil rotating his frontline bowlers.
Asif is coming back now from the far end, the pavilion end. He bowled in different lines and lengths as well. Got picked off easily by the two batters in his first spell. Once again starts off 2 straight. Yeah, Asif, now the ball is getting a bit older and pitch is drying up, so conditions are suitable for him now because he hits the hard length, and maybe if batsman make mistake, goes to Asif then. Yeah, I think we've gone past that phase where should have been looking to pitch the ball up and get the drive. Wicket is drying out. Squared him up a little bit. There's a little bit of movement in the air still for Asif. It's quite muggy out there, not much breeze now, which should help him to swing the ball. We were talking about the wicket earlier, and like you just concluded, that this wicket is good for faster bowlers, especially if you keep inviting the drive. Also, the wicket, as we were talking earlier, that when it dries out, it should be very good for stroke play. You can see a lot of back foot punches, cuts and pulls, and bowlers will also enjoy that extra bounce, probably in the second session. Nicely took to mid wicket. Only a single. Yeah, this is supporting pitch, Faisal, and it's good for batsmen as well. If you work hard and you are selective in shots, you can't play all the shots in first class because you have 3 slips in place, and bowlers have planned. They tend to play you those expensive shots. If you hold yourself, if you are disciplined, it's very good bat. It's very good pitch to bat on, like Abdullah is doing. Exactly. You have to bide your time. You got to know what are your scoring shots on this pitch. And at the moment, in the first session, we saw a lot of back foot strokes. Yielded good results, especially for Abdullah Shafiq. And Yasir Afir, you were telling me that you can draw your experience of playing a lot of cricket here at the beginning of your first class cricket. You saw a similar looking pitch you were telling me about, and it'll be interesting to see what happened in that game. I pulled that one out, and like you said, it was a good supporting pitch. It helped both batters and the bowlers. And I know you can boast about it. You scored 148 in the first innings in that game on a similar pitch. Yeah, it's same sort of pitch there was, and I think same days, end of September, October. And Pindi has, same sort of pitch in first class, and we see same sort of pitches. And for those, if you want to get big 100, you have to be selective in your shot selection. In that game, I played, I remember, cut shots, pull shots, and I drive just in the slot, just like that. Beautiful shot, and excellent fielding by Saud. That's the drive you were talking about. Not expensive drive, little check drive. You can do that. And you're talking about that innings. You remember quite a lot of it. And I remember quite a lot of it as well, because I was in the field for most of the time. And I remember those cuts and pull shot that you're talking about. Continue talking about it. 71 for 1. Yeah, Faisal, you were very slim and smart in that time, I remember. Well, I'm more smart here now. Yeah, that's for sure. You get wiser when you get older. Probably I take that as a compliment. Definitely, yeah, you are wiser. Zahid's role on a first day of a 4-day game, the spinner is not expected to run through a side. But like we're talking about, this Pindi pitch has a little bit of extra bounce, and the leg spinner will enjoy that, even if there's not a lot of turn, but he will enjoy that bounce on the first day. Yeah, I think this pitch is
dying a bit, you know, like the grass we saw because of the surface very dry, and it should help Zahid because he's a quality leg spinner, we know. And in this national T20, we saw a lot of Zahid, and he's developed that very good leg googly as well. Before this season, he was bowling a lot of leg spinners. Now he's improved on his googly as well. Yeah, these now if you see, this is, I think it's good bowling, but it's very full, and he's trying to block it. So sometimes you regret these opportunities, you cannot miss. And you see, that's drop. That's the bounce I was talking about. Zahid really surprised Ali Zaryab, and Quaid-e-Azam was taken by surprise as well. Look at that, excellent flight, little bit of turn, but more bounce, and Quaid-e-Azam was nowhere. Horribly misjudged that. Yeah, you have to be very, very alert in first slip, especially on spinner. And that was I was talking about. You have to take those singles when you given an opportunity, and it was beautifully bowled by Zahid. I must say, if you see the replay, singles will disrupt the bowler's plans as well, like you correctly said. So if you're not getting singles when available, or you're not maneuvering the ball into the gaps, you can allow the bowler to work a plan against you. 25 gone, 72 for 1. ball got big on him, and I think he lost his balance, and that's why. And yeah, he was on the move, and he was not in the good position to catch the ball, and he for the batsman, like balance is the key for the batsman. It's the same like for the slip fielder. You have to be balanced on your feet to get those catches. See, he was not watching the ball at all. He was not watching that bad edge. It's very important, and he's most senior and most experienced. Sometimes it happens, cricket. Probably he wasn't concentrating. He didn't expect the ball to come his way, which obviously is not the right way, but concentration does play a huge role in these longer version games. As a batter, as a bowler, and even as a fielder, it's completely wrong-footed. He was going the wrong way, which shows that he wasn't anticipating it. Yeah, concentration is the key. You have to be 100% concentrate. You should concentrate on when you're facing the ball as a batsman. When you're bowling, you have to see where you are going to pitch the ball, and as a fielder, you have to watch that edge. Back of length, too easy for Ali Zaryab. He got the width, got on top of the bounce as well. Beautifully played. Good shot. This time it doesn't miss that opportunity to get away. So, good shot by Ali Zaryab. And that's the length easy to manage, Yasir, because it's not threatening your wicket, and the bounce is so true that you can easily play those back foot strokes with the straight bat or with the horizontal bat. It always help you. You have to play these shots, which you can. Bowler tempting him to come onto that front foot. Ali Zaryab is now settling into the crease. He had a waft in the last over against Umar, but
He's generally a very good, disciplined player, Ali Zaryab. He's very young as well, making his name at this level. Certainly would like to push on, and to do that, to be a successful top order batter, he's got to know where his off stump is. Yeah, well played, but he played cut very close to his body when he dropped in the slip. And last shot we saw, which he got the boundary, it was same sort of shot. But this time he got boundary. I think he placed this shot. If you look at Asif's action, arms are pumping. The load is from quite low to high, so it generates a lot of power from that, and a lot through his shoulders, because that's run up doesn't really give him a lot, but those last couple of strides he really gallops. Edge and gone. That's the length and a little bit of movement. First wicket in first class cricket for Asif Mahmood. Beautiful ball, and in the right area, and Khurram Manzoor caught it very easily. He's an experienced fielder. He's a seasoned campaigner. He doesn't miss many. It was the length. It was a good delivery, Faisal. Around the wicket, angling in and just straightening down the line with the seam. And Ali Zaryab just poked at it. Excellent take from Khurram Manzoor in the slips. Announces his comeback into the first class scene. Zaryab gone for 19. Central Punjab 77 for 2. Central Punjab skipper Mohammad Saad, a prolific batter for Central Punjab. Could be tricky time just before lunch, 6 minutes to go. And if Umar can find those right areas, we know that Mohammad Saad doesn't have a big stride. If he can just draw him forward, those slippers will be in play again. That will be his chance when he faces the seamers. At the moment, Zahid Mahmood will bowl from the media center end. Sindh has to be smart about it. They need to rush through the overs to get at least one over from Asif at Mohammad Saad. Yeah, Saad is at crease, and Sindh is back in business, definitely back in business. 6,058 runs in 115 games, not a bad record. Played well. Now mid-off fielder is up. They are stopping that single because it's probably second last over of the session. And now they are in the game, Sindh. They'll come back on plan A now, which was executed early on but negotiated very good by Abdullah Shafiq and Abid Ali. If you were the skipper of Sindh, would you not allow Abdullah Shafiq one run to just have a go at Saad before lunch? As many balls as you can? No, I think they won't, because there is another over left, and that will be Asif. That I think Asif will do that. Yeah, in that case, they would have to keep Abdullah on strike. Two balls, they need to keep Abdullah on strike. Abdullah is not looking for a run anyway. No, Abdullah is very solid, and
this is his shot. He plays straight down the ground, but this is not the right time to play this shot. He knows this. He's a smart batsman. Like a googly, went for that expensive drive, not quite middling it. End of a maiden from Zahid. Job well done. And the contest will resume between Saad and Asif. 77 for 2. This will be probably the last over before lunch. Coach is talking to Abid, who missed a big opportunity. This is his first game after his illness, and he was doing well. He was doing well, but missed that opportunity. But never mind, second innings is there. Next game is there. Richard Stonier is doing all the talking, and Abid Ali is doing all the listening. But this will be interesting now. Look at this slip cordon. It's quite scattered. First slip, Khurram Manzoor. Then there's a wide second slip. Well, they've now plugged that gap. But that third slip, fourth slip, or a fine gully rather, they will be waiting for the edge. That's a good length. First up, little bit too full. But at least drawing him on that front foot. He tried to york him first up, but I think he should be on basis. Basics are very important here because he has to ball in right areas. As a batsman, when batsman comes first up, his feet movement are not that correct. So maybe you have to pitch the ball in the right area. Deliveries too early for a newcomer, maybe, or he just want him to push him back in the crease. We'll have to see what is the follow-up delivery. But there's plenty of noise in the field right now from the Sindh fielders. They're really making it hard for Saad because they realize it's a good time to take a wicket. Definitely, and this is his first game, and he thinks that this bouncer will help him, but it doesn't know that the right area. This is last over before lunch. Plate. Again, very full, very easy to him. He's angling the ball in. Quite full, like Yasir said. Saad Mahmood done well. They're keeping Saad on strike for the remaining 3 deliveries. That's good from Sindh. Good hustle. Now they need Asif to produce a perfect delivery. This will be easy for Saad. Saad is a good player of back foot, and although you can see his balance is not quite there just yet, more comfortable on that back of a length. Yeah, the good thing about him is, as I have seen him in last season, his head is very straight when he plays, and that is the key. That's the key for any batsman, to keep his head straight. And early on especially, he's not leaning, he's letting the ball come to him. Only one thing can disturb him. Beautifully bowled. You see that short stride that we were talking about? Saad is very reluctant to get onto that front foot. And that one, it looked like it just seemed away at the last minute. That's that one I was talking about. This length can definitely check him and make him confused as a batsman what's going on. That came on the fifth ball of the over. Bit too late. Well, if he can follow it up with another good one, still has one more chance to go at Saad. Last delivery before the lunch break. Good delivery. Once again, not comfortable, Mohammad Saad, but he's negotiated it safely, and that will bring to a close a very, very enthralling first session of Quaid-e-Azam Trophy season 22-23. We've seen some excellent cricket, good bowling, good disciplined batting, and at the end of the first sessions,
I would reckon the honors will be even. What do you think, Yasir? Yeah, credit goes to Abdullah Shafiq to hang in there. Otherwise, I assume that the wicket column could have been 3 or 4. Well played, Abdullah. And Sindh did well in the end. In last half an hour, they got 2 wickets and they are going happily outside. 28 overs in the session as well. Over rate pretty decent. Definitely helped by the introduction of Zahid. Abdullah Shafiq, 38 of 72, really looked good. Untroubled for the most part of that first session. Just the 2 wickets in the first session. Abid Ali went for 19. Ali Zaryab also for 19. Abdullah Shafiq is batting on 38. Mohammad Saad just came in just before lunch. Just the 1 extra as well, and like I said, over rate was pretty decent. Seen some good action in this first session. Loose drive in the air, early doors, but there were no fielders there. Abdullah Shafiq's start was good, and he carried out through the session. Mir Hamza, 7 overs and 18 runs with 1 wicket. And Asif Mahmood. These 2 are in the wicket column. And Muhammad Umar did well. He bowled with discipline, 8 overs, 14 runs. And Zahid Mahmood, obviously, he is very experienced and he can make. Well, it's just about time for lunch. Players are taking lunch, and we'll take a short break as well. And we'll be back with you with the post-lunch session in just about half an hour.
सिंध ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। सेंट्रल पंजाब की जानिब से आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक ने ओपन किया। आबिद अली 19 रन बना सके। अब्दुल्ला शफीक मौजूद है 38 रन पर। दूसरे आउट होने वाले खिलाड़ी अली ज़रियाब जो 19 रन बना सके। और अब कप्तान मोहम्मद साद मौजूद हैं अब्दुल्ला शफीक के साथ। 4 बॉलर्स का इस्तेमाल किया गया। 1 विकेट हासिल की मीर हमजा ने और 1 विकेट हासिल की आसिफ महमूद ने। अच्छी इनिंग रही है। अब्दुल्ला शफीक की जानिब से 38 रन पर मौजूद हैं। बहुत ही टेक्निकली करेक्ट, बहुत कैलकुलेटेड, रिस्क फ्री क्रिकेट हमें देखने को मिली है अब्दुल्ला शफीक की जानिब से। और मेरे साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान के विनर अयाज शाह, ऑल द वे फ्रॉम डीजी खान। आपको खुशामदीद कहते हैं अयाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच अली यूनस, अली भाई द ग्रेट। अब्दुल्ला शफीक शानदार बल्लेबाजी इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, नहायत ही शानदार पारी खेल रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये टेलर मेड है इस फॉर्मेट के लिए। जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, टेक्निकली बहुत करेक्ट है, टेम्परामेंट बहुत शानदार है, पेशेंस है, सारी शॉट्स भी मौजूद हैं। और आज तो शानदार रहा। पहले सेशन में जिस तरीके से इन्होंने बैकफुट पे पंचेस खेले वो काबिल दीद थे। और जैसा ये याज पिच लग रहा है, जैसे जैसे ये बैटिंग करते चले जाएंगे स्ट्रोक मेकिंग आसान होती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे एक बड़ी इनिंग खेलने के मूड में है। जो मुश्किल सेशन था वो अब्दुल्ला शफीक ने गुजार लिया है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा विकेट पर इनका, और ये ठहरे रहेंगे, लंबी बिल्ड कर लेंगे इनिंग को, और ये ऐसे प्लेयर हैं जो मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ ये शानदार शॉट है, ये गैप में बॉल गया है, 4 रन मिल जाएंगे। बहुत ही कमाल का शॉट अब्दुल्ला शफीक की जानिब से। लेट खेले, करीब आने दिया बॉल को और गैप तलाश किया। बल्ले के साउंड से ही अंदाजा हो गया था, निहायत ही शानदार आवाज आई, पूरा मिडल हुआ, कोई फील्डर नहीं हिल सका। और अब्दुल्ला शफीक पूरे एतमाद हैं पहले शॉट से लेकर अब तक। जो हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे क्रीज पे रहेंगे जितना अच्छा पिच लग रहा है। कप्तान इस वक्त उनके साथ मौजूद है, सीनियर बल्लेबाज आबिद अली विलियन लौट चुके हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का बखूबी अंदाजा है। मोहम्मद साद एक सीनियर फर्स्ट क्लास तजर्बा इनके पास, गुजरांवाला के शहर से इनका ताल्लुक। ये पुरहतमाद इतना शॉट नहीं था, एक आउटसाइड एज हुआ। बहुत ही सीजन्ड प्लेयर है मोहम्मद साद, सेंट्रल पंजाब की कप्तानी कर रहे हैं बहुत सालों से, एक रेगुलर मेंबर हैं। देखिए थिक आउटसाइड ज़रूर हुआ था, लेकिन लकी रहे कि हवा में बॉल नहीं गया। तो काफ़ी अरसे से पहले लाहौर की नुमाइंदगी करते रहे, अब सेंट्रल पंजाब की कप्तानी कर रहे हैं। इसके बाद जब अज़हर अली आ जाएंगे वापस, तो अज़हर अली कप्तान होंगे सेंट्रल पंजाब के। ये अच्छा बॉल था, पूरा मिडल हुआ, एतमाद आया होगा इस शॉट से मोहम्मद साद को। 82 पर 2 एसपी। मीर हमजा दूसरे एंड से बॉल करेंगे लंच के बाद। और ये वाहिद ऐसे बॉलर नज़र आए थे हमें जिन्होंने थोड़ी थ्रेटिंग बॉलिंग की थी, थोड़ा विकेट टेकिंग डिलीवरीज जो हमें देखने को मिली वो मीर हमजा से मिली। आगे पिच किया, बॉल ड्राइव करवाने गए, विकेट भी हासिल की। ये एक्सपीरियंस है यार, जितनी जितनी आप क्रिकेट खेलते हैं, जितनी डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हैं, आपको बैटर को सेटअप करना आ जाता है, आपको विकेट्स लेनी आ जाती हैं। तो यहाँ पे यही मीर हमजा ने हमें दिखाया। और मीर हमजा बड़े कॉन्फिडेंट हैं, पूरे एतमाद हैं। इनके साथ दूसरे बॉलर्स को भी बड़ी मदद मिलेगी जो डेब्यू कर रहे हैं, आज पहला मैच खेल रहे हैं। आसिफ महमूद, मोहम्मद उमर। अच्छा बॉल था, थोड़ा सा लेग स्टंप पर पड़ा, सीधे बल्ले के साथ खेले, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान। बहुत ही शानदार और पूरे एतमाद बल्लेबाजी देखने को मिली है अब्दुल्ला शफीक, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम में भी जगह बना पाए। और कहीं ना कहीं इनके उस्ताद मोहतरम
आमिर वसीम का जिक्र किया जाए, क्योंकि उनकी बहुत मेहनत ग्रास रूट लेवल से उन्होंने इन्हें मेहनत करवाई और आज उसका फल अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान बल्लेबाजों में शुमार होते हुए। पाकिस्तान डोमेस्टिक का बहुत बड़ा नाम आमिर वसीम, बाएं हाथ से बॉलिंग करने वाले बहुत ही शानदार लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और जिस तरीके से आप उनकी लेगेसी को कैरी कर रहे हैं अब्दुल्ला शफीक, नज़र आता है कि किसी अच्छे कोच से कोचिंग लेके आए हुए, लेकिन बहुत टेक्निकली बहुत साउंड है, सॉलिड है, फुटवर्क बहुत कमाल का है, करीब खेलते हैं, बल्ले के नीचे बॉल का जो कांटेक्ट पहला होता है वो आंखों के बिल्कुल नीचे होता है और यही एक टेक्निकल बैटर की निशानी होती है। बॉल को मुकम्मल अपने पास आने देते हैं, बॉडी के पास आने देते हैं अब्दुल्ला और पूरा मिडल करते हैं। जितनी तारीफ़ की जाए इनके उस्ताद मोहतरम आमिर वसीम की और उनके जितने प्लेयर्स हैं पूरे पाकिस्तान में नाम रोशन करते हुए उनका, और सियालकोट में उनका लगाया हुआ पौधा आज तमाम पूरे पाकिस्तान में नज़र आते हुए। ये अच्छी लाइन और लेंथ है, यदि एंगल बाहर निकाल रहे हैं अब्दुल्ला को और इसी लेंथ की हम बात कर रहे हैं सुबह से कि अगर आपने इस पिच के ऊपर विकेट्स हासिल करनी है तो आगे बॉल फेंकना होगा, ड्राइव वाला बॉल करना होगा। ये बेहतरीन एग्जांपल थी। वो जो सुबह आप बात कर रहे थे अली भाई शाह फैसल के साथ, काफ़ी दूर बॉल्स की है उमर ने और आसिफ महमूद ने, लेकिन मीर हमजा ने अपने तजर्बे का बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाया है। यहाँ थोड़ा मार्जिन शायद हमें देना होगा हयाज, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट से शिफ्ट की है रेड बॉल क्रिकेट में, तो दोनों क्रिकेट की जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है। जब आप वाइट बॉल खेलते हैं तो आपको थोड़ा खिंचा हुआ बॉल करना होता है, दूर बॉल करना होता है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में आपको आगे करना है, ड्राइव खिलानी है, तो डिफरेंस है। शायद थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि आज आगाज़ है, पहला दिन है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का। जैसे जैसे बॉलिंग करते जाएंगे अंदाज़ा होता जाएगा कि पिच कैसी है, कहाँ कौन सी बेहतर लाइन और लेंथ है। और जहनी तौर पे भी बॉलर थोड़ा सा एडजस्ट लेने में टाइम लेते हैं पहले दो सेशंस में, जैसे कि मोहम्मद उमर ने आगे से बॉल स्विंग किया और अली जरियाब को खेल से बाहर किया। अच्छा शॉट था, ये अच्छा शॉट मारते हैं, बैक फुट पे बहुत कमाल का शॉट खेलते हैं अब्दुल्ला शफीक। ये आज हमने देखा है पहली लाइन से पहले से में भी कि जो भी बॉल थोड़ा शॉर्ट ऑफ द लेंथ हुआ है ये उसे पनिश करने जाते हैं, ज़ोरदार कट मारते हैं, कंट्रोल में शॉट होता है। और इनके शॉट लगने के बाद इनके चेहरे पर इनका एतमाद देखा जा सकता है कि शॉट जब लगी है तो ये अपने चेहरे की तासुरात से बता देते हैं कि शॉट कहाँ जाएगी। ये इनकी पूरे एतमादी में भरपूर इजाफा करते हुए अब्दुल्ला शफीक। एक और बेहतरीन बॉल था ये। मीर हमजा को दाद देनी होगी, आज जिस तरीके से बॉलिंग की है उन्होंने, 8 ओवर्स ज़रूर किए, अच्छे स्टेमिना से बॉल किए, अच्छी जान से बॉल किए। यहाँ पे 82 पर 2 सेंट्रल पंजाब। पाकिस्तान के अपने कप्तानी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे चुके हैं और बहुत एतमाद आया इनको कप्तानी करने के बाद मीर हमजा को, जिसमें इनकी परफॉर्मेंस में बड़ा निखार पैदा हुआ और अपनी टीम को सेमीफाइनल फाइनल तक रसाई ले जाने की बड़ी कोशिश की इन्होंने, और सीनियर और जूनियर्स के कम्बिनेशन को लेकर चलते हुए मीर हमजा एक और अच्छा साइन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। 3 फॉरेन कोचेस जो सेंट्रल पंजाब के साथ एसोसिएट हुए हैं। आई एम श्योर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इन तीनों कोचेस के आने से बहुत मदद हासिल होगी इन यंग क्रिकेटर्स को फर्स्ट क्लास लेवल पे, क्योंकि ये ग्रूमिंग नर्सरी है, यहाँ पे आपको सबसे बेहतरीन सीखने के मौके मिलेंगे। बड़ा ग्रेट इनिशिएटिव है ये पीसीबी का। चेयरमैन पीसीबी ने बहुत बड़ा इकदाम उठाया, ग्रास रूट लेवल से लेके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तक तमाम मकामात पर आपको चेंजिंग नज़र आएगी अली, और स्कूल क्रिकेट से लेकर उसके बाद क्लब क्रिकेट का बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है इन 3 से 4 सालों में, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और इसका पूरा क्रेडिट देना होगा पूरी बॉडी को, पूरी बोर्ड को,
जिन्होंने ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट को उठाया और ख़ास तौर पे स्कूल लेवल से लेते हुए क्लब लेवल के भी। अब साउदर्न पंजाब का फाइनल हुआ। ये बेहतरीन शॉट है, लेंथ को बहुत जल्दी परख लिया था, बैकफुट पे गए और ऐसी जगह भेजा जहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था। तो 4 रन हासिल किए हैं मोहम्मद साद ने पहली बाउंड्री लंच के बाद। इसी लूज बॉल के इंतजार में थे, काफ़ी टाइम मिल गया था। मोहम्मद साद को बैलेंस बरकरार नहीं रख सके, अपना तवाजुन खो बैठे थे, लेकिन शॉट उनके बल्ले पे पूरा आया। या इतना शॉर्ट बॉल नहीं था, लेकिन एडजस्ट बहुत जल्दी कर लिया। ये शो करता है कि कितनी अच्छी नज़र है इनकी, कि बहुत जल्दी लेंथ को परख लिया था। और 4-डे क्रिकेट के ये मज़े तो हैं कि फील्डर मौजूद नहीं होता है बाउंड्री लाइन पे, आप पार कीजिए और रन हासिल कीजिए। इस बार ऑफ साइड पे खेलें, लेकिन अच्छी फील्डिंग। कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद साद में आता जा रहा है, और हम जानते हैं कि ये अगर सेट हो जाते हैं तो ये लंबी बारी खेलते हैं। ये ऐसे प्लेयर हैं जो पूरी यूटिलाइज करते हैं अपनी बैटिंग को, विकेट थ्रो नहीं करते हैं। और पिछले शॉट से इनकी फिटनेस का भी बखूबी अंदाज़ा लगाया गया। बड़ा फिट क्रिकेटर हैं इस वक्त मोहम्मद साद, और ख़ुद को एडजस्ट किया उन्होंने। एक बार फिर खराब बॉल था, फील्डर ओह नाकाम हो गए। बॉल सीधा उनके हाथ में गया था, लेकिन ज़ोरदार शॉट ज़रूर था। लेकिन इस लेवल पे आपको ये कैचेस पकड़ने होंगे। डिसअपॉइंटेड हैं जाहिद महमूद, और क्या कहिए कप्तान मौजूद थे, कप्तान के हाथ में बॉल गया था। तो दूसरा कैच इस इनिंग का, ये देखिए बहुत ज़ोरदार शॉट था, लेंथ भी ख़राब थी और बहुत ज़ोर से जाके लगा हाथों के। साउद शकील काफ़ी अनलकी रहे। और मोहम्मद जाहिद भी पहला कैच उन्होंने अली जरियाब का ड्रॉप हुआ था स्लिप पर। फवाद आलम ने स्लिप में ड्रॉप किया था 15 के स्कोर पर, जब अली जरियाब 15 पर थे। और ये काफ़ी तेज़ शॉट था। मोहम्मद जाहिद के चेहरे से थोड़ी सी मायूसी नजर आई, फील्डर्स उनका साथ नहीं दे रहे। ऐसे कैच पकड़ना होंगे अगर मैच में रहना है तो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कंडीशंस मुश्किल है बॉलिंग के लिए, इतनी आसान नहीं है। और अगर आपके फील्डर्स आपका साथ नहीं देंगे तो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बिल्ड होती जाती है बॉलर के अंदर। और दोनों अगर रिलेटिवली देखें तो आसान कैचेस थे, पकड़ने चाहिए थे इस लेवल पे। मोहम्मद साद जैसे फील्डर से काफ़ी मुस्बत उम्मीद है, उनको ये कैच पकड़ना चाहिए था। कप्तान हैं, एनर्जेटिक हैं, यंग हैं, टैलेंटेड हैं। नहायत ही आसान कैच था ये, बैक फुट पर गए, पंच गए, थोड़ा सा पिच खेला, बॉल मिडल नहीं हुआ सही। अली क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत ज़ोर से मारने चले गए थे, और ऐसा अक्सर हमने देखा है कि जब आप एक बैटर को हाफ लेंथ डिलीवरी नज़र आती है, शॉर्ट डिलीवरी नज़र आती है, तो जहन में तो उसने 6 रन बना लिए होते हैं। अब कभी कभी पेस डिफरेंट होती है तो आप उस तरीके से टाइम नहीं करते हैं, और शायद यहाँ पे भी यही हुआ, थोड़ा तेज़ बॉल आ गया उनकी तरफ, लेंथ परख लिया था। बेहतर होता कि फील्डर के ऊपर से खेल देते, लेकिन बहुत लकी रहे हैं अब्दुल्ला शफीक। कहीं ना कहीं मोहम्मद साद के चेहरे पे ही आया है कि बहुत बड़ी गलती की है अब्दुल्ला शफीक जैसे बल्लेबाज का। अगर इनका कैच छोड़ेंगे तो काफ़ी लंबा हदफ देने में कामयाब रहेगी सीपी की टीम, सेंट्रल पंजाब की टीम। अब्दुल्ला शफीक जैसे बल्लेबाज को चांस देना खतरनाक साबित हो सकता है। एंड चेंज किया है मीर हमजा ने। मीर हमजा जिस तरह के बॉलर हैं, ये एक लाइन और लेंथ पे बहुत देर बॉलिंग कर सकते हैं, ये बहुत कंसिस्टेंट हैं। और यहाँ पे जब एंगल आपने चेंज किया, ये अच्छा एंगल है मुझे लगता है, क्योंकि बॉल अब थोड़ा पुराना हो रहा है, उस तरीके से स्विंग हमने देखी नहीं है जो अली नए बॉल से हमें मिलती है। तो अब जो वाहिद मौका है यहाँ पे, आप जितनी जल्दी बॉल पुराना हो, तैयार हो जाए रिवर्स स्विंग के लिए, तो ही बेहतर यहाँ पे होगा मीर हमजा के लिए। इस बॉल में बड़े तजर्बे का इस्तेमाल किया मीर हमजा ने, अंदर आया बॉल, खतरनाक साबित हो सकता था मोहम्मद साद के लिए। यहाँ पे बॉल करेंगे तो रन्स मिलेंगे, क्योंकि साद लेग स्टंप पे बहुत स्ट्रांग है। 3 रन्स बनने चाहिए, लेकिन शायद, जी हाँ, बहुत अच्छी रनिंग, बहुत ही लेट डिसाइड किया, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अब्दुल्ला शफीक और साद की जानिब से 3 रन्स हासिल किए। बड़ी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। आंखों आंखों में से इशारा कर लिया था उन्होंने।
कि 3 रन लेने हैं, और उसका भरपूर जवाब दिया मोहम्मद साद ने। पुरएतमाद, शानदार। अब्दुल्ला शफीक, मीर हमजा उनकी आंखों में देखना चाह रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक का कंसंट्रेशन, तवज्जो अपनी बॉल और बैट पर, आंखें मिलाते हैं, बॉल और बैट जहां कनेक्ट कर रहा हो वहां देखते रहते हैं आखिर तक। बड़ी स्ट्रॉन्ग इनकी टेक्निक है, दिफा बड़ा मजबूत है इनका, और जो शॉट मारते हैं बड़ा जारहाना शॉट होता है, पूरा मिडल करते हैं। सेंट्रल पंजाब 90 पर 2। पवेलियन सिंध का ये ताहिर महमूद साहब है, कोचिंग के फ्राई सर अंजाम दे रहे हैं। 2012 के बाद दोबारा इन हुए हैं, बड़े शानदार मेहनती कोच हैं। ताहिर महमूद ग्लासेस में आपको नज़र आ रहे हैं। इन्होंने साउदर्न पंजाब की भी कोचिंग की है और बड़े शानदार क्रिकेटर दिया। आजम खान साहब के साथ इनका पैनल था। आपके अच्छे दोस्त भी महसूस होते हैं हमें। मैंने इनकी कोचिंग में रीजन खेला है, और बड़े मेहनती कोच। 4 बजे का टाइम होता था, 3 बजे बुला लेते थे, और शदीद गर्मी में, मुल्तान की गर्मी आपको पता है, और बहुत ज़बरदस्त कोचिंग पैनल था। ताहिर महमूद, आज़म खान, मुनव्वर एक हमारे ट्रेनर थे, डॉक्टर तैयब। तो बड़ा शानदार वो दिन थे जो हमें याद आते हैं, और इन्होंने बहुत मेहनत करवाई तमाम क्रिकेटर्स को। इनके स्टूडेंट्स, इनके जो अब्दुर्रहमान मुजम्मिल खावर ओमान की तरफ से खेल रहे हैं, ज़ीशान कप्तानी कर रहे हैं ओमान की, राहत अली, आमिर यामीन, बैक फुट पर पंच किया मोहम्मद साद ने। अब्दुल्ला शफीक के साथ अगर मोहम्मद साद ठहर गए तो लंबा रन स्कोर करने में कामयाब होगी सेंट्रल पंजाब की टीम। तो यार अपने बारे में बताइए। वॉइस ऑफ पाकिस्तान आप जीते, कहाँ से आए, कैसे आए, कैसे शौक डेवलप हुआ, इस मुश्किल से करियर का आपने कैसे इंतखाब किया, किसका दिल दुखाया था आपने? दिल किसी का नहीं दुखाया। ये कोई वालदैन की दुआएं थी, अम्मा की दुआ है असल में ना। आपको पता है कि क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है कि किसी ना किसी तरह वो ग्राउंड में इन रहे, चाहे वो बेशक कि डोमेस्टिक से आगे ना जा सके, कोचिंग स्टाफ में चला जाए, स्कोरिंग में चला जाए, अंपायरिंग में चला जाए, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा जुनून है निहायत ही। मैं नहीं समझता कि कोई क्रिकेटर क्रिकेट के बगैर रह सकता है। अच्छा शॉट था, और ये आगाज़ मैंने 2003 से किया था। क्रिकेट कमेंट्री का टेप बॉल से स्टार्ट किया हमारे डोमेस्टिक लेवल पे, फिर T20 में एक दफ़ा कराची गया, बस वहाँ से नासिर हुसैन, रमीज़ राजा, इनको सुना, तारिक साहब हमारे आइडियल। आज उनके साथ बैठ के जितना शुक्र अदा किया जाए अल्लाह पाक का। मोहम्मद साद आहिस्ता आहिस्ता रन्स बनाते चले जा रहे हैं, और ज़रा उनके स्टार्ट्स की थोड़ा नज़र डालते हैं मोहम्मद साद की। तो सेंट्रल पंजाब के लिए सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं उन्होंने जब से नया फॉर्मेट आया, 2019-20 से स्टार्ट करें। अच्छी एवरेज है 39 की, 1703 रन्स बना चुके हैं, 2 सेंचुरीज और 1150 इसमें मौजूद हैं। ये 4 रन्स मिल जाएंगे। बहुत ही कमाल का शॉट खेले हैं अब्दुल्ला शफीक, अपने बेस्ट पे नज़र आ रहे हैं आज हमें, जिस तरीके से शॉट्स मार रहे हैं, जिस तरीके से टाइम कर रहे हैं, और प्लेसमेंट भी कमाल की रही इस बार। तो 47 रन पर पहुंच गए। शॉट से ही अंदाज़ा हो गया था उन्हें
उन्होंने भागने की जहमत ही नहीं की और मोहम्मद साद को उन पे इतना एतमाद है। देखें शॉट लगाने के बाद मोहम्मद साद बिल्कुल नहीं हिले, किसी फील्डर को कोई मौका नहीं मिला हिलने का। और जहां ये शॉट खेली है यहाँ पे बहुत बड़ा गैप होता है लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के दरमियान। सेंट्रल पंजाब 95 पर 2। अभी हम एक लिस्ट पे नज़र डाली हमने जिसमें बहुत ही शानदार बैटर्स मौजूद थे सेंट्रल पंजाब के। मोहम्मद साद उस लिस्ट पे टॉप पे हैं। नो वंडर कि आप वो कप्तानी कर रहे हैं। जरा लिस्ट पे नज़र डालते हैं एक बार फिर से। उस्मान सलाउद्दीन एक और बहुत ही शानदार टैलेंटेड प्लेयर। अजहर अली कोई शक नहीं, 54 की एवरेज। अहमद शहजाद, कामरान अकमल और आखिरी नाम बहुत इंटरेस्टिंग, अली ज़रियाब। तो बहुत खुशी होती है एक यंग बैटर जब इतने बड़े नामों के दरमियान उसका नाम शामिल होता है। तो एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है ये अली ज़रियाब के लिए। ओह, ये बेहतरीन बॉल था। ये विकेट से कैसे मिस हो गया, ये स्माइल बता रही है। ऐसी बॉलें छोड़ेंगे तो खतरनाक साबित हो सकते हैं। पिछले ओवर में भी इनका ऐसा ही बॉल छोड़ा था। देखिए बिल्कुल बॉल बच गए। बेल्स को ऐसे लग सकती थी, थोड़ी सी हाइट रही, अंदर आया बॉल। लेट स्विंग हुआ मीर हमजा का ये बॉल। मीर हमजा ऐसे बॉलर हैं जो आपसे क्वेश्चन करते रहेंगे क्योंकि इतनी तजुर्बेकार, बहुत ही स्किलफुल बॉलर हैं। नया बॉल हो, पुराना बॉल हो, हर बॉल से ही शानदार बॉलिंग करते हैं। मीर हमजा की जो सबसे अच्छी बात है, बैट्समैन की तरफ देखते हैं, जेन्युइन फास्ट बॉलरों वाली एग्रेशन नज़र आता है इनमें। गुस्सा करने के टाइम पे गुस्सा करते हैं, अपने साथ बात करते हैं। बल्लेबाज की तरफ देखते हैं, बैटर के साथ देखते हैं, उनका बॉल मिस हो जाए तो देखते हैं। और यही वजह है कि इस विकेट्स कॉलम में नंबर 3 पे मौजूद हैं सिंध की साइड से। इस नए फॉर्मेट में अगर बात करें, ताबिश खान बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल के बॉलर रहे। सोहेल खान तो अभी भी उतने ही अच्छे हैं जितने पहले दिन शायद अच्छे थे। मोहम्मद असगर, अबरार अहमद, शाहनवाज धानी पाकिस्तान नेशनल साइड का हिस्सा हैं। तो बहुत ही शानदार बॉलिंग यूनिट है ये सिंध की जानिब से इस नए फॉर्मेट में। एक कमाल का शॉट है, 4 रन मिल जाएंगे मोहम्मद साद को। लेंथ को देखना होगा। मीर हमजा एक बार फिर शॉट डिलीवरी कराते हुए, और मोहम्मद साद का तजुर्बा जितना है वो ऐसी बॉल्स को नहीं छोड़ने वाले हैं। बहुत टाइम मिल गया था। वो जैसे कि बात कर रहे थे अली आपके, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा बॉल क्लियर नजर आता जाएगा। मोहम्मद साद को पूरा मिडल हुआ, मिड विकेट के दरमियान से लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान से खेल दिया। शानदार शॉट था बैकफुट पर। यहाँ फील्डर मौजूद था मिड विकेट पे इसी मिस हिट या मिस क्यू के लिए, लेकिन साद ने जिस तरीके से बॉल को, बल्ले को बॉल के ऊपर रखा और ग्राउंड की तरफ खेले, अच्छा कमबैक डिलीवरी था ये मीर हमजा की जानिब से। तो यही क्वालिटी है, अगर आपका फील्डर मौजूद है मिड विकेट पे तो आप ज़मीन की तरफ शॉट खेलते हैं। आपके बल्लर का एंगल है वो ज़मीन की तरफ होना चाहिए, तभी बॉल रोलिंग होता हुआ जाएगा, क्योंकि प्लान सेट है मिड विकेट पे एक सरप्राइज शॉट डिलीवरी के लिए। और मोहम्मद साद को अपना तजुर्बा यहाँ पे यूज़ करते हुए, मिड विकेट पे फील्डर देखिए मौजूद है। अब शायद इसको पीछे लेके जा रहे हैं अब्दुल्ला शफीक के लिए डीप स्क्वायर लेग पे। 50 रन के बड़े करीब हैं अब्दुल्ला शफीक, इसीलिए उनके लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए एक जाल बिछा रहे हैं। और चौका खाने के बाद अच्छी वापसी थी मीर हमजा की। बल्ले का फ्लो नीचे था मोहम्मद साद का। अच्छी बॉलिंग है ये, काफ़ी फैसिनेटिंग से 47 रन किए अब्दुल्ला शफीक ने, जिसे हम क्रिकेट की ज़ुबान में कहते हैं कि फंस के बारी लेना। अब्दुल्ला शफीक की ऐसी ही इनिंग रही है, बहुत बॉलें, सॉलिड डिफेंस रहा। ऑल्दो नेशनल T20 भी खेले सेंट्रल पंजाब से, इतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी, ज़्यादा रन्स नहीं कर सके, लेकिन ये अच्छा मौका है। यहाँ पे बहुत टाइम मौजूद है, अपने हर तरह के स्ट्रोक खेल सकते हैं, अपना स्किल दिखा सकते हैं, अपना टेम्परामेंट दिखा सकते हैं। ये जो फॉर्मेट है ये आइडियली सूटेड है अब्दुल्ला शफीक के लिए। और ये मॉडर्न डे क्रिकेट भी है, ये कमाल का शॉट है और ये बेहतरीन शॉट मार के अपने 50 रन मुकम्मल किए अब्दुल्ला शफीक ने। ये एक बहुत ही टेम्परामेंट और स्किल से भरी हुई इनिंग रही अब्दुल्ला शफीक की जानिब से, अपने 50 रन मुकम्मल किए। और ये 50 रन की बारी कहीं ना कहीं इन्हें भरपूर एतमाद देगी वापसी लाने के लिए। शानदार बारी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस फॉर्मेट में टाइम आपके पास बहुत है,
आप विकेट पे स्टे कर सकते हैं। आखिर तक बॉल पर निगाह, हल्का सा स्लिप के ऊपर से उठा दिया उन्होंने और इस शॉट के साथ एक ठप्पा खाने के बाद बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। निहायत ही शानदार 50 रन की बारी। ये अब्दुल्ला शफीक के करियर का 5वां 50 है और ये काफ़ी मुश्किल 50 है। आसान कंडीशंस नहीं थी शुरू में और जिस तरीके से उन्होंने अपना टेम्परामेंट दिखाया है, स्किल दिखाया है, ये कमाल की बात है। और आखिरी शॉट तो उन्होंने ये भी दिखाई कि मैं मॉडर्न डे क्रिकेटर हूँ। 104 पर 2 सेंट्रल पंजाब। जाहिद फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं, अपनी बॉलिंग को जारी रखेंगे मीडिया एंड से मोहम्मद साद के लिए। सेंट्रल पंजाब की ये जो पार्टनरशिप है अब्दुल्ला शफीक और साद के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटर्स ज़रूर मौजूद हैं। कासिम अकरम, तैयब ताहिर, अली शान भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, आमिर यामीन भी हैं, लेकिन ये सारे मैं कहूँगा ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं। तैयब ताहिर स्पेशलिस्ट ज़रूर हैं लेकिन वो ज़रा तेज़ खेलने वाले हैं, इसलिए ये विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं अली कि ये 2 आखिरी मुस्तनद बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और अब्दुल्ला शफीक थोड़ा सा इसलिए भी फंसे अपनी इस 50 रन की बारी में क्योंकि दूसरे एंड पे उनका साथ नहीं दिया लंबा किसी भी बल्लेबाज ने, अली जरियाब, आबिद अली। निहायत शानदार दिफाई अंदाज अब्दुल्ला शफीक का, फ्रंट फुट डिफेंसिव स्ट्रोक, आखिर तक बॉल को निगाह में रखा, सीली ली हुई है अब्दुल्ला शफीक के लिए जाहिद महमूद ने। दो रन की कोशिश होगी क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट है, फर्स्ट क्लास 4 डे गेम्स हैं, गैप्स काफ़ी अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप अब्दुल्ला शफीक जैसे टेक्निकली करेक्ट प्लेयर हैं जिनको गैप ढूंढने आते हैं तो आपको रन्स करने चाहिए। परेशानी ज़रूर होगी। साउथ शकील आज पहले बॉलिंग करने को ऑप्ट किया, अवे साइड थे, इनके पास ऑप्शन मौजूद थी, टॉस कॉन्टेस्ट नहीं हुआ तो शुरू में शायद ड्राई घास मौजूद था, अभी भी है पिच के ऊपर, लेकिन उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठाया गया। बहुत ही शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉलिंग रही पहले सेशन में और हमने देखा है कि नए बॉल पे तो आपको आगे पिच करना है बॉल अगर आपने विकेट्स हासिल करनी है और स्पेशली अगर आपने पहले बॉलिंग का फैसला किया है। यहाँ पे थोड़ी चूक हुई सिंध के बॉलर्स में, थोड़ी लेंथ जो थी वो वाइड बॉल लेंथ हमें नज़र आई। जी बिल्कुल अली, या तो बिल्कुल बल्ले के पास बॉलिंग की या फिर बहुत ज़्यादा दूर की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया दोनों बल्लेबाजों को और आबिद अली भी थोड़ा सेट हो गए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी शॉट खेल दी उन्होंने। ये बेहतरीन इनिंग रही है अब्दुल्ला शफीक की जानिब से, बहुत ही टेम्परामेंटली स्किलफुल इनिंग रही है, बॉल को अपने करीब आने दिया और ऑन साइड पे जब आप इस तरह की ड्राइव खेल सकते हैं तो वो शो करता है कि आप कितने स्किलफुल हैं और आखिर में तो ये दिखाते हुए कि आप मॉडर्न डे टेक्निक भी उनके पास मौजूद है। एक शानदार 50 रन अब्दुल्ला शफीक की जानिब से। $107 for 2, Central Punjab. Negotiated the first half hour after lunch pretty safely. You see just a little bit of cloud cover here. Mir Hamza is bowling his heart out. Just the 1 wicket for 30 runs so far. Saad has also progressed well after lunch in the first half an hour. An important partnership for Central Punjab. Good time to say a very good afternoon to former Pakistan Test international Yasir Hamid. Good afternoon, Faisal. Mir Hamza with his 11th over.
pitch is getting better now after lunch. This is tradition of first-class cricket, especially in this weather. And in the winter, obviously, condition doesn't change as quickly. But this is tropical weather, good, nice weather. Clouds are covered, and Saim is wearing his pads. Slightly around his front pad. That's a good area for Saad. We all know he likes to hang in on that back foot. Let's try it. This time his head was in the wrong position, but no movement for Hamza, so bat could come down in time. He's not a wicketkeeper, Yasir, although he may seem that he's wearing the wicketkeeper's pads. He's fielding at short leg. Bit too big, those ankle guards. Yeah, he's on spinner, he's fielding on short leg, and now he's on catching position, should be on catching position, because... Excellent delivery. Once again, Saad hanging that bat, not fully committing to the stroke. Yeah, again, a very good delivery by Mir Hamza. He's getting there now. He's hanged, actually. He forced him to play this ball. It was very good delivery. Once again, testing line, testing length there from Hamza, drawing Saad out of his comfort zone. He doesn't like to play on that front foot. Good bowling. Yeah, good bowling by Hamza. He's looking good in this spell. And it's match between two concentrations here. Mir Hamza is persistent with his line and length, and ball is moving. And Saad, on the other hand, doing okay. He's doing well. He's not chasing it. Once again around that front pad. It was pretty straight. Hamza was really interested for a moment, but Saad did get some bat on it. This is a good contest, like Yasir said. And at the moment, Hamza is trying his best, but Saad is hanging in there. 36 gone, 108 for 2. Abid Ali got out the first wicket, was gone. It was Abid Ali, 19, and then Zaryab followed him with same number of score, 19. And now Saad is getting to that 19, 3 runs behind them. Let's see. It's very interesting because Saad is struggling, and on the other hand, spinner is bowling, Faisal. So as a batsman, it gives you a bit, sense of relief. When on other hand, there is spinner. Change of plan from Zahid in the recent overs as well. He had a short leg before, and now he's brought that fielder that we were watching in the last over, Saim Ayub, from short leg to silly mid off. So both his catchers are on the offside, and also there's a short cover. He's luring him into that drive. Saad got to be aware of the googly as well. Nice, excellent flighted delivery, a little bit of drift, but that would help. The strike rotation does allow the batter to get to the other end, and the bowler will have to start over with his plans. Yeah, this is the only way for a batsman like Saad, who is a seasoned campaigner, and he would like to change the strikes and he would like to get runs. He doesn't like too much to hang on.
This partnership is what, 32 runs now, 63, so they've been pretty active. Rotating the strike is important because you won't get many boundary balls. These are two quality bowlers, Zahid and Hamza. Excellent ball once again, hanging that ball in the air, Zahid, making Abdullah Shafiq wait and wait and wait. Yeah, Abdullah Shafiq is very watchful, and his 50 is very special here because the pitch is, we cannot say this is a batting pitch. This is a supporting track and he's playing with authority. Look at that square leg fielder behind square where that last ball went. It will allow Zahid to bowl a straighter line. And listening to great Shane Warne, the late Shane Warne, he always preferred that middle and leg stump line for the leg spinner. Exactly where Zahid is looking to bowl, and he's got some protection. Another very testing over, 109 for 2. Mir Hamza is continuing from pavilion end. No, it's change of ball, I guess. Umar is coming. Muhammad Umar is coming back from pavilion end, and again, it's interesting. Mir Hamza, I think maybe they are changing the ends. Probably it's the afternoon session and it's pretty hot and humid. They would want to rotate the quicks from one side and then allow Zahid to bowl, because Zahid has been very consistent. He hasn't gone for many runs. Probably that'll be the plan for the afternoon session. Yeah, starting with a wide delivery. Muhammad Umar has been very economical in his first spell. First 8 overs, just 14 runs. Unlucky he couldn't get a wicket, but he's very consistent with his line and length. And Mohammad Saad, I must say that he has to work hard because the ball is moving. Fishing at that one. Look at the carry as well. Sarfraz was taking the ball up above his waist and the ball was still on the up. That wicket is drying out, which means that we're going to see more and more of that good bounce. Saad really playing with the low hands. Couldn't cope with the bounce. There was nothing short. If you see, it wasn't cut, it wasn't drive. Just was double-minded, and that can cause. Came back in from the same length. This is the length to bowl on this pitch. Is that ball started to reverse? Just about that time, 37 overs gone. Have a close look at the ball. I think they've kept the ball pretty well. Yeah, good point, Faisal. You have to keep shining this one side. And that helps when the ball start reversing. Looks like the roughed up side is on the inside on that occasion. But Umar has bowled consistently. I was a bit critical of him in the first spell that he didn't pitch enough balls fuller, inviting the drive. But this afternoon session, back of a length should be the order of the day, where just push the occasional one in, lure the batsman into the drive. But with the drier pitch and good bounce, that back of a length could be a good strategy, Yasir. I think your point is right. You have a valid point. You can bowl, you can pitch the ball up, but Umar is different. You know, he's container basically. He believes
on stopping the run in all formats. And he's one of those that he's a white ball specialist basically. And in 4-day, he didn't play. Sorry, as you see a close look at the ball, that is the shiny side at the moment. The way he was holding it, I don't know. Still that little bit of wobble with this ball, keeping Saad honest. Another good testing over there from Umar, 109 for 2. Umar 9 overs, 14 runs. As Yasir was making a point, he's the workhorse in this bowling lineup. But with Zahid from one end, I think this time Umar can just take a little bit of chance and hunt for a wicket. Use of the feet, glorious. One bounce. Abdullah Shafiq is really good player of spin. Just got to the pitch of the ball. Never looked to hit it hard. Excellent batting. Yeah, this is the best way to play. Straight down the ground. And in any cricket, this is a good shot. Especially in 4-day, when the fielders are up in the circle, and he has all the time in the world to play this shot. Got to give a little bit of credit to Zahid. He's inviting that drive. And again, asking Abdullah Shafiq to continue to come down at him. This is a good contest. Zahid Mahmood, none for 38, could easily have one wicket. He had a drop chance in the slip before lunch. But he's working hard. Little bit of drift, it means that he's putting a lot of revs on the ball. For my liking, Faisal, he's bowling a bit quick. He should slow the pace and should drag the batsman. See, this is quick. This is quick bowling, and it's very easy to put away. Another boundary for Abdullah Shafiq. Quick on his feet, just capitalizing. This time it was a long hop. Abdullah is well set. He's too good a player to miss out on those. I think the skipper wouldn't be perturbed with the first boundary that Zahid got hit for. It's definitely the second one. Neither him nor Zahid would like that. Because like Yasir was saying, he needs to bowl a little slower and invite the batters out of their crease. And you can't set a field for a bad ball. And that was a bad ball. Leg spin is very, it's a difficult job. A slight mistake can cost you a boundary. Good shot to end the over. End of 39, 117 for 2.
Partnership of 40 of 78. Sindh haven't been able to break through after lunch. Something happening for the bowlers, not a lot, just enough to keep them interested and also to keep the batters in check. You can't just break free here on this pitch here at Rawalpindi. When two players are batting, say Abdullah Shafiq is playing, is batting for now 3 hours, right from the beginning, and Saad just joined him. There should be different plans for both of them. Saad should, Sarfaraz, Saud, they should plan something different for Saad. They have to plan something different for Saad. They have to invite for shots, invites to shots, and then something can happen, because you cannot bowl to both batsmen with same strategy. Abdullah Shafiq is more, you know, he's playing with authority, he is playing his shots, and he's very selective, he has class. Saad, on the other hand, you can invite him for some few drives, just check him with bouncer, with fielder behind. You have to do these innovations to get wicket. Otherwise, you'll bowl with same strategy. You'll lose this time. That's a very good point, Yasir, you make, because, and also to go with that, they're both different players. Like you said, Abdullah is well set. He's seeing the ball well. He's been there for a long time. Saad still feeling his way in. And we all know, like I said, he doesn't like to come onto that front foot. Sindh bowlers, probably, if you're ultra critical, you should say that they haven't invited him to come onto that front foot often enough in those 44 deliveries. Even the last one, you saw how well it carried to the wicket keeper, but it was comfortable enough, the length, for Saad to negotiate. That's where he's not comfortable, but they have to do it ball after ball. Oh, he played well. He played well, but it was in Sturm's delivery, and the ball was coming in. Good, he didn't go cross the line. Played well, straight bat, and that's the way he should play. For more about 10 or 15 minutes, then things will be more easier for Central Punjab. But as a Sindh skipper, I wouldn't mind this length from Umar. 2 in 2 now. Saad is feeling his way. You see, even on that drive, he was on the move when he made contact. Exactly, that's what I'm talking about. See, this shot, he was on the move. Absolutely right. He was on the move, and he adjusted himself well. That's good, he moved. Otherwise, he could have gone. Squared him up. Just that little bit that I was talking about, keeping Umar interested. He's a great trier, Muhammad Umar. Another good one from him, a maiden. 117 for 2. Richard Stonier in the Central Punjab dugout. Sindh is persisting with the seamers from the far end up until now, but now they've given Zahid a break, and Asif is coming back. Seam from both ends now once again for Sindh. I think they were looking to let Zahid bowl from one end, but that previous over was pretty expensive, and skipper Saud has made the change.
Yeah, I think good change, and maybe they change his end after a few overs. But this end is not very effective for Zahid. A bit expensive for my liking. You mentioned this end and you mentioned Zahid. It's another famous Pakistani fast bowler, Mohammad Zahid. He, on his debut on this ground, you watch flowing drive straight to the fielder. Mohammad Zahid got 11 wickets against New Zealand, and he bowled from this end, the media center end. Just a coincidence. This is not the same Zahid. But yeah, just a reference to the history. Yes, absolutely. That was in 2000, right? 97, 1997. 96, all right. Short and wide. He's got protection there. Just a single, but lovely weather. Cold weather. you got to change the plans for Saad at least, like Yasir was saying. Still got that deep cover fielder for Saad even. They need to keep him? I don't think so. At the moment he was looking to come in but still staying. What do you think about that, Yasir? I was just thinking that how good a player he is, Abdullah Shafiq. He's so easy on eyes, and he is pleasing on the eyes. Easy and pleasing. It takes his time, and quality player he is, and it's very easy to play with a quality player when he's playing with you. I think things will be easy for Saad and everyone play around him. Once again couldn't pierce the gap, but that ball is striking the middle of the bat quite regularly. Abdullah Shafiq, like Yasir was saying, he's very pleasing on the eye. Look at just flow of that footwork, bat coming down, high front elbow, that bent front knee. Can't ask for more. And one thing you are not forgetting, but you didn't mention the point of contact. Every time when he plays the shot, his point of contact will be in the line of the foot, and that's his key. All the top players have this point of contact. I confirmed it time and time again. You're a quality player, Yasir. We all remember you must be enjoying Abdullah Shafiq's driving, but I think our viewers would remember that you're a fantastic driver of a cricket ball as well. Flowing cover drives of Yasir Hamid, still fresh in the memory. Absolutely. Yeah, thank you, Faisal. Yeah. Beautiful. Excellent shot. Just roll off the wrist and played it along the ground, and that was the key for this shot. Beautiful shot. Great shot. Look at the balance. Look at the weight transfer. Got on top of the bounce and that roll of the wrist. And look at how quickly that ball sped away. There were two fielders there, but he hit him right in the middle of those two. Again, two things were common. Right under his eyes and point of contact. Good going for him, and he's approaching his 100. He can go big, I guess. He's just 66, 34 away, but he's well on the way.
Saad as well is very comfortable, very stylish on the back foot. And like we mentioned in the morning, on this pitch, when you get in, the bounce is so true that you can really express yourself as a batter, especially with the horizontal bat stroke, the back foot strokes. This wicket will allow you to do that. Probably will be the best time to bat. The afternoon, the ball is 40 overs old. Seen a little bit of movement, but not a lot, especially when two batters are well set. Saad has been in for 50 deliveries. Abdullah Shafiq has been there since the beginning. Yeah, talking about Saad, that's why he has 11 hundreds to his name in first class cricket, and now captaining Central Punjab. It's some achievement for him. Keeps the bowlers interested. He plays on that front foot and slightly around at times. Neither Umar or the other two quicks have been able to strike him on those pads in front of the wicket. Yes, so talking about Saad, 1100s. Last year he had a good season. He scored a double hundred as well, although those conditions were pretty benign at Gaddafi Stadium. This one's too straight. Couldn't find the gap just enough to get him off strike. You can see frustration building for Umar. He's tried everything. That's the time as a batter, when you hang in there, you can cash in. Yeah, they made his time. They made their time now, especially Abdullah Shafiq. He made his time, and now this is the time to cash in. Just hang in there for like till tea. I must say he should have 100 till then. It's again that little bit of sea movement inside edge, and that ball lodged in the pads. It's immediately dead ball when it gets there. But that's the movement I was talking about. Credit to Umar. He looked frustrated, but he's still bowling good areas, asking the right questions. Yeah, I mean you cannot keep bowlers out of play on this pitch. This is a quality of this pitch that it doesn't flat. So I think this is good sign for cricket. It should be balanced for both ball and bat. This time was the away swinger. Slightly away from the body, but negotiated safely in the end. 42 overs gone. Central Punjab, 124 for 2. And it's time for drinks.
अब्दुल्ला शफीक अब तक हीरो रहे हैं सेंट्रल पंजाब के लिए और 66 रन की उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है। शुरू में ज़रूर उन्हें मीर हमज़ा ने परेशान किया था, लेकिन जूं जूं क्रीज पर उनका वक्त गुजरा वो बेहतर होते चले गए। ये दूर से शॉट खेलते हुए आबिद आउट हुए और उसके बाद स्लिप में अच्छा कैच लिया खुर्रम मंजूर ने और इस तरह आसिफ महमूद अपनी पहली विकेट लेने में कामयाब हुए अपने एफसी करियर की। एक खिलाड़ी को मीर हमज़ा ने आउट किया, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने ख़ास तौर पर पहले सेशन में, और मोहम्मद उमर उन्होंने भी नपीतुली बॉलिंग की। ज़ाहिद महमूद ज़रूर थोड़ा सा आसिफ की तरह महंगे साबित हुए, लेकिन स्पिनर से आप पहले दिन बहुत ज़्यादा तवक्को रख भी नहीं सकते। आसिफ महमूद तेज़ से और जारहाना अंदाज उन्होंने बॉलिंग में अपनाया। तो अब 5वें बॉलर की बारी है। दिन का तकरीबन निस्फ हो चला है, 3 घंटे का खेल हो गया है और उसके बाद अपने जो 5वें बॉलर हैं फवाद आलम उनका इस्तेमाल करने पर मजबूर हुए हैं। और ऐसा उस वक्त भी होता है जब पार्टनरशिप एक पनप रही हो तो बैट्समैन जो हैं वो आ रहे हों कंफर्ट जोन में, तो वहाँ कप्तान कोशिश करते हैं कि अपने पार्ट टाइमर को लाकर गलती करने पर मजबूर किया जाए और थोड़ा ललचाया जाए सेट बैट्समैनों को ताकि वो गलती करें। अयाज मेरे साथ हैं कमेंट्री बॉक्स में। जी बिल्कुल, अब्दुल्ला शफीक मुकम्मल तौर पर सेट हो चुके हैं। जाहिद ने 2 चांस निकलवाए थे जाहिद महमूद ने, लेकिन उसको फील्डर्स अवेल नहीं कर सके। अब्दुल्ला शफीक का एक कैच ड्रॉप हुआ था मिड विकेट पर, शॉर्ट मिड विकेट पर। सैंतालीस रन की साद और अब्दुल्ला के दरमियान पार्टनरशिप हुई है। उससे पहले अब्दुल्ला शफीक और आबिद के दरमियान 43 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी। अच्छी बुनियाद रखने में कामयाब हुए थे दोनों ओपनिंग बैट्समैन। सिंध की टीम भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है इस खेल में, क्योंकि उनको अगर अब्दुल्ला शफीक की यहाँ पर विकेट मिल जाती है तो फिर एक खिड़की खुल जाएगी। अच्छा रन लिया, देखा फास्ट बॉलर मिड ऑन पर निस्बतन पीछे झुक कर खड़े हुए थे तो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ते चले गए और उसका भरपूर जवाब दिया अब्दुल्ला शफीक ने। आंखों में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के दरमियान, बड़ी अच्छी साझेदारी चलती हुई इस वक्त। अब्दुल्ला शफीक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने होम डेब्यू टेस्ट मैच में यहाँ सेंचुरी स्कोर की थी दूसरी इनिंग्स में। पहली इनिंग्स में सेट होकर आउट हो गए थे जब नेथन लाइन को खाने के वक्फे से कुछ देर पहले रोज़ ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश की। आज भी एक इन्होंने ज़ाहिद महमूद को लॉफ्टेड ड्राइव किया था बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन पूरी तरह इख्तियार में थे। उनका गो टू शॉट भी है स्पिनर के खिलाफ। बता फवाद को ये रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, कुछ ओवर्स कुछ गेंदें देखना चाहते हैं उन पर हमला करने से पहले। 125 पर 2। ये रिचर्ड स्टॉइनिस हैं जो ट्रेनर हैं सेंट्रल पंजाब के, और ये बड़ा ऐसा इकदाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि उन्हें गैर मुल्की जो प्रोफेशनल कोचेज़ और ट्रेनर्स हैं उनकी खिदमत हासिल की हैं इस डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास सीज़न के लिए। और ड्राइव करने के लिए गए और ले लिया कैच। अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की तरफ मूव हुई और ऑफ साइड में खेलने के लिए गए। गेंद आगे गिरी और उसी का सिला मिल गया और बड़ा ही शानदार कैच लिया डाइव करके सरफराज अहमद ने। इस विकेट की अशद ज़रूरत थी। ये देखिए ड्राइविंग लेंथ पर गेंद आई और स्ट्रोक खेलने पे गलती करने पे मजबूर किया 67 को।
जी बिल्कुल, जहाँ पे सुबह से बात कर रहे थे तमाम लोग, यासिर हमीद, तारिक, सईद साहब, और कि यहाँ आगे इस लेंथ पे बॉल करनी चाहिए इनको। काफ़ी या तो बहुत ज़्यादा पीछे बॉल्स किया, 56 बॉलों पर 20 रन बनाकर पवेलियन की राह दिखाई सरफराज। 125 पर 3। ये 513वां कैच था सरफराज अहमद का अपने फर्स्ट क्लास करियर में। 162वां मैच खेल रहे हैं सरफराज अहमद और तैयब ताहिर। ये सेंट्रल पंजाब की टीम में ज़्यादा पुराने नहीं हैं, अभी बड़ा मुतासिर कुन इनका नेशनल T20 का टूर्नामेंट था। मुख्तलिफ पोजीशंस पर खेलते हुए नज़र आए, 1 से लेकर नंबर 4 तक, और यहाँ 5वें नंबर पर खेलने का मौका मिला है। देखिए इनका जो वाइट बॉल का करियर है उसकी निस्बत फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनको मुश्किलात रही हैं, लेकिन ये जो डबल सेंचुरी थी ये पिछले बरस इन्होंने मुल्तान में बनाई सदर्न के लिए खेलते हुए। पिछला सीज़न जो है उसमें डबल सेंचुरियाँ, ट्रिपल सेंचुरियाँ लाहौर, कराची में बनती रहीं। और ये देखिए ड्राइव करने के लिए गए, ये अब देखा कि गेंद ज़्यादा करीब आ रही है, लेकिन इस पिच पर बॉलर को मदद मिलती रहती है। इसे सामने रन्स बनाना ये कभी भी आसान नहीं होता। रावलपिंडी में स्क्वायर ऑफ द विकेट यहाँ ज़्यादा रन्स बनते हैं, क्योंकि आपको स्विंग को एक तो कवर करके खेलना पड़ता है ख़ास तौर पर पहले दिन, और बाद में फिर बाउंस इतना ज़्यादा होता है, उसमें भी आप ज़्यादा स्क्वायर ऑफ द विकेट ही रन्स बना सकते हैं अगर आप में अहलियत है। बॉडी से बहुत दूर खेल गए। ये वो बॉल थी जो इशारा कर रहे थे खुरम काफ़ी देर से बॉलर्स को। खुरम मंजूर ने आउट होने के बाद दोबारा बॉलर की तरफ इशारा किया कि ये वो लाइन थी जहां काफ़ी देर से कह रहे थे सीनियर क्रिकेटर्स। ये बैकफुट पर खेलते हैं, इनको स्क्वायर और उसके पीछे रन बनाने का हुनर आता है तैयब ताहिर को, तो उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो पिच है ये इनके स्टाइल ऑफ प्ले को सूट करेगी। एक बार फिर बैकफुट पर जाकर इससे जाने दिया तैयब ताहिर ने। पुरानी तर्ज के ओल्ड स्टाइल, जो ओल्ड फैशन जो बैटिंग होती थी, ये उसी के कायल हैं। वैसी बैटिंग या ऐसी जो टेक्निक है ये इन दिनों बहुत ही आपको शाज़ी नादिर ही देखने को मिलती है। या तो कोई बहुत ज़्यादा मजबूत हो बैकफुट पर, और अब जितने जदीद टेक्नोलॉजी आई है वो अगले कदमों पर ज़्यादा खेलना कंफर्टेबल समझते हैं अपने लिए। 2 कैचर अभी भी हैं गली के अलावा स्लिप्स में। यहाँ पहली इनिंग्स में सेंट्रल पंजाब का आज पहला हदफ यही होगा कि वो 325-350 तक पहुँचने की कोशिश करें, वो अच्छा स्कोर होगा इस पिच पर। गो के सेंट्रल पंजाब की जो उनकी जो बॉलिंग है उसके बारे में अभी भी शक है, ज़्यादा तेज़ बॉलर्स जो हैं वो शामिल नहीं हैं। आज हुनैन शाह को जो ना खिलाने का फैसला था, उमैद आसिफ भी स्क्वाड का हिस्सा हैं, या अहमद दानियाल या जो हुनैन शाह, इनमें से किसी एक को हम कह सकते हैं या कि उनको टीम में शामिल किया जा सकता था इस पिच की पेस की मुनासिबत से। 125 पर 3।
बड़ी लंबी लंबी इनिंग्स खेलने की आदत है अब्दुल्ला शफीक को। ये अपने क्लब क्रिकेट के ज़माने से सियालकोट में जो इन्होंने खेली उस दौर से ही ये सेंचुरियाँ बनाने के लिए जाने जाते हैं। इनके वालिद भी फर्स्ट क्लास बैट्समैन थे, मोहम्मद शफीक। अच्छा डिफ्लेक्ट किया, गेंद गैप में चली है। यहाँ पर 2 रन बहुत ही आसानी के साथ हासिल किए तैयब ताहिर ने, ऑफ द मार्क हो गए। और इनके जो चचा हैं वो भी खेल चुके हैं, जो अरशद अली मुत्तहिदा अरब इमारात से, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। तो ये जो बैटिंग है या क्रिकेट का खेल ये इनके खून में शामिल है अब्दुल्ला शफीक के। अच्छा स्क्वायर ड्राइव, 1 ही रन या मैसर आएगा। और अक्सर हम देखते हैं जो क्रिकेटर्स या जो क्रिकेटिंग फैमिलीज से जो बैट्समैन सामने आते हैं उनकी टेक्निक ज़्यादा बेहतर होती है, ज़्यादा सॉलिड होते हैं। तो इस एतबार से घर में ही आपकी जो कोचिंग है उस पर बचपन में ही काम शुरू हो जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि उनका ओढ़ना बिछोना, उठना बैठना, हर तरह से बात करना क्रिकेट के ऊपर होता है। और वो अपना ओढ़ना बिछोना क्रिकेट को बनाते हैं और यही तर्ज अमल फिर उनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज निखर के सामने आते हैं। ये देखिए बड़ी मोतबर इनकी तकनीक है। बैटर पैड साथ मिलाकर खेलते हैं, गेंद की जो लेंथ है उसको बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं। इनके पास खासा वक्त है अपने स्ट्रोक खेलने का और बेपनाह सब्र भी है, कुव्वत बर्दाश्त है पिच पर रुकने की और खेलने की। 129 पर 3। अब्दुल रज़ाक जो हैं वो ये अभी आपको इस ड्रेसिंग रूम में नज़र नहीं आएंगे। हुमायूं फ़रत हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, उनके साथ उसामा मीर थे। रन जो हैं वो रोके हैं। एक मौके पर जो रन औसत थी सेंट्रल पंजाब की वो 3 से आगे निकल गई थी। उसके बाद फील्डिंग बेहतर रही है, बॉलिंग में लेंथ को बेहतर इख्तियार किया है इस सेशन में आकर उमर ने। और जो आसिफ महमूद थे उनका भी जो दूसरा स्पेल था वो पहले से कहीं बेहतर था। पहले स्पेल में वो महंगे रहे थे, दूसरे स्पेल में उन्होंने एक मेडन भी किया, एक विकेट भी हासिल की। यही वजह है कि इस वक्त जो रन रेट है वो 2.88 है गिरने के बाद। पहले सेशन में जो गलतियां की थी बॉलर ने उस पे कंट्रोल किया है और अपनी लेंथ और लाइन काफ़ी बेहतर की है, जिसकी वजह से रन रेट थोड़ा नीचे आया। और उम्दा शॉट अब्दुल्ला शफीक के, ये गेंद जोन में थी और इसे कट करने में कामयाब हुए और गेंद को उनने खुले मैदान में खेल दिया 4 रन के लिए। अब 70 के पेटे में आ गए अब्दुल्ला। शानदार शॉट था, आखिर तक बॉल को देखा उन्होंने, पूरी एल्बो खोली उन्होंने, नहायत ही शानदार शॉट। किसी फील्डर को हिलने का मौका भी नहीं मिला। फवाद आलम शॉट लगने के बाद ही समझ गए थे कि बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। यहाँ अब्दुल्ला जानते हैं कि बैकफुट पर यहाँ रन ज़्यादा बन सकते हैं, इसलिए फास्ट बॉलर को आज उन ड्राइव्स जो हैं वो ना होने के बराबर की हैं। ख़ासतौर पर पहले सेशन में उनने जो
फुल फ्लो के साथ वो ड्राइव करने से इज्तनाब करते रहे। इस दूसरे सेशन में एक बार उन्होंने मिड ऑफ पर ज़रूर ड्राइव किया था, तो इससे जो है वो अपने शॉट्स निस्बतन कम कर दिए हैं। अब्दुल्ला शफीक ने सामने की जानिब और विकेट की दोनों जानिब जो है वो स्क्वायर पे खेल कर रन्स बना रहे हैं। उनको अंदाज़ा है कि मेन विकेट पवेलियन लोड गई हैं, लिहाजा उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्रीज़ पर रहना है, जिसकी वजह से वो आज़ादाना नहीं खेलना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को क्रीज़ पर रखना चाह रहे हैं अब्दुल्ला शफीक। आखिरी उम्मीद है सेंट्रल पंजाब की। अयाज, एक आपसे सवाल है, अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो सेट होकर खेल रहे हैं अपनी 5वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी की तरफ, उनकी पेशकदमी है और यहाँ पर सेंट्रल पंजाब का स्कोर 135 है 3 विकेटों के नुकसान पर। दिन के हम निस्फ पर हैं, 3 विकेटें सिंध ने भी ले ली हैं। आप किसके ड्रेसिंग रूम में इस वक्त होना चाहेंगे? मैं वैसे तो मेरा आइडियल सेंट्रल पंजाब है, क्योंकि मैं सूरत हाल के एतबार से पूछ रहा हूं। सूरत हाल के एतबार से तो सिंध का पलड़ा अभी तक ज़्यादा भारी जा रहा है। अगर अब्दुल रज़ाक होते तो फिर तो सेंट्रल पंजाब आइडियल था। अच्छी क्रिकेट आज दिन भर देखने को आई। इन 46 ओवर्स में अच्छे स्ट्रोक देखने को मिले, अच्छी दिफाई बैटिंग और उम्दा स्विंग और सीम बॉलिंग भी। अच्छा स्पेल किया जाहिद महमूद ने भी, लेग स्पिनर ने, लेकिन बदकिस्मत रहे कि उनकी गेंदों पर 2 कैचेस गिर गए, एक अब्दुल्ला शफीक का और एक अली ज़रियाब का। जाने दिया इसे नज़र में रखते हुए तैयब ने 135 पर दी। ये धूप निकली है तो ये भी निकल खड़े हुए हैं। ये दोनों कुछ देर पहले तक यहाँ हवा चल रही थी और अबर आलूद था मतला, लेकिन शाह फैसल और यासिर हमीद जो हैं ये उस वक्त ये सेंट्रली एयर कंडीशन कमरे में थे, लेकिन धूप निकलने के बाद जो है इन्होंने भी तबाह आजमाई करने का फैसला किया मैदान पर। मौसम कदरे खुशगवार रहा है आज पूरा दिन, आइडियल मौसम है क्रिकेट के लिए और उसको ही इंजॉय करने के लिए निकले हैं टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद, आज हमारी कमेंट्री बॉक्स का हिस्सा, और उनके साथ शाह फैसल। गेंद जाहिर है कि लेग स्टम्प को छोड़ती हुई निकल जाती। अंपायर पर नज़र रखना होगी। यहाँ लेग बाई का इशारा दिया इमरान जावेद ने। फवाद आलम का इस वक्त किरदार यही होगा कि वो रन रोक कर रखें, बैट्समैन को फॉलो करते रहें, विकेट टू विकेट बॉलिंग करें, और ताकि इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको कुछ जो उखड़ी हुई सांसें वो बहाल करने का मौका मिल जाए, फ्रेश रहें फास्ट बॉलर। ज़्यादा जो बॉलिंग है ये सऊद शकील ने फास्ट बॉलर से, ये पवेलियन एंड से ही कराई है। इस एंड से उन्होंने ज़्यादा स्पिनर्स का इस्तेमाल किया, पहले जाहिद महमूद का मीडिया सेंटर एंड से, अब फवाद का, और उसी एंड से पवेलियन एंड से ही दोनों विकेट फास्ट बॉलर्स ने हासिल की, मीर हमजा ने और उमर ने। और पहले दिन पिंडी की पिच में ज़ाहिर है कि स्पिन ना होने के बराबर रहेगी इस दूसरे सेशन में, तो उसकी तवक्को ना रखी जाए। अलबत्ता बाउंस है फास्ट बॉलर के लिए, स्पिनर के लिए। एक दौर था जब मैचेस हुआ करते थे पिंडी क्लब ग्राउंड में, वो जो पिच थी वो स्पिनर्स की जन्नत थी। हालांकि मैदान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इस पिच का जो रवैया है और जो कैरेक्टर है ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, 180 डिग्री मुख्तलिफ है पिंडी क्लब ग्राउंड से। पिंडी क्लब ग्राउंड की विकेट थोड़ा थोड़ा घास होने की वजह से डराती भी रहती है बल्लेबाजों को।
आखिरी गेंद पर 1 रन लिया और अगले ओवर के लिए स्ट्राइक भी तैयब ने। 137, 3 विकेट के नुकसान पर सीपी। मीर हमजा ने 3 स्पेल किए। मोहम्मद उमर को भी अब तक 3 स्पेल्स में इस्तेमाल किया। छोटे छोटे स्पेल कराएं अपने 3 फास्ट बॉलर्स से सऊद शकील ने। इनको कप्तानी का है तजुर्बा। ये पाकिस्तान शाहीन्स के साथ श्रीलंका के दौरे पर गए थे और टीनेज क्रिकेट में भी इन्होंने क़यादत की हुई है मुख्तलिफ टीमों की। सऊद शकील ने सिंध की भी इससे पहले कप्तानी कर चुके हैं, तो जानते हैं कि अभी मौसम जो है वो निस्बतन गर्म है और फास्ट बॉलर से लंबे स्पेल कराना शायद इतना जायज़ होगा नहीं। लेकिन एक जो है एक जो हम कह सकते हैं कि सिंध की टीम, इनके पास 5वां 6ठा वो 7वां बॉलर भी है। खुद भी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं फवाद आलम की तरह, जिनने 3 ओवर्स किए हैं। साद खान बॉलिंग कर सकते हैं और साइम अयूब जो हैं वो तो मिस्ट्री स्पिनर कहलाते हैं। और साइम अयूब का बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है इस वक्त, काफ़ी अपने कैरियर के पीक पर हैं। अच्छी बॉडी लैंग्वेज है और रिलैक्स लग रहे हैं अभी सिंध के तमाम ही खिलाड़ी, क्योंकि जानते हैं कि अगर वो यहाँ एक विकेट ले लेंगे, ख़ास तौर पर अब्दुल्ला शफीक की जो विकेट है, तो उसके बाद ये नकब लगा सकते हैं आसानी के साथ सेंटर पंजाब की लोअर ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर की तरफ, क्योंकि बहुत लंबी बैटिंग नहीं है। कासिम अकरम जो हैं काफ़ी अरसे के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे। अली शान वो ज़्यादा देर तक विकेट पर रुकने वालों में से नहीं, जारहाना बैटिंग करते हैं और फिर इनके पास टेल है। और अच्छा स्कोर ड्राइव कर दिया, 4 रन्स। यही खूबी और ख़ासियत है तैयब ताहिर की कि ऑफ स्टंप के बाहर उन्हें कट करना और स्क्वायर ड्राइव करना हमेशा से पसंद रहा है। नहायत ही शानदार शॉट थी, हेड स्टिल था आखिर तक। जैसे कि आप कह रहे थे कि फ्रंट फुट और बैक फुट पर दोनों शॉट्स अच्छे खेलते हैं, हेड स्टिल था, हाई आर्म बाहर निकाला उन्होंने। नहायत ही तेज शॉट, कवर ड्राइव, 4 रन्स के लिए तैयब ताहिर। इस ओवर में बाउंड्री के अलावा जो बाकी गेंदें थीं वो सही लाइन और लेंथ के साथ की आसिफ ने। 141, 3 खिलाड़ी आउट।
It has been brilliant. The running between the wickets, the placement, everything going Abdullah Shafiq's way. He's not out on 74 now. It has been a fantastic inning. An inning that was needed. The player of his caliber, of his skill, it was much needed. He didn't have a good national T20, but he's making the most use of his form in this format that suits him. Driven nicely. It's all very comfortable at the moment for Abdullah Shafiq, as I've been joined by one of the best openers that Pakistan has ever produced. Mr. Yasir Hamid is alongside me. A very good afternoon, Yasir. Thank you, Ali. Good afternoon to you as well. Tayyib Tahir has joined Abdullah Shafiq. He's somebody who always looks for runs, Abdullah Shafiq, and Tayyib Tahir with him. So this is a very key partnership. You miss your playing days, don't you? Yeah, definitely. If the player, the caliber of Abdullah Shafiq is batting with you, the batting becomes touch easier, Ali, and definitely he got a lot of potential. We all know this. He has proven beyond the limits that he's most talented with his technique and with his temperament on the highest level, even in Test cricket. On a difficult pitch against Bangladesh, he played a brilliant inning, and that 100 defines his talent, how talented he is and how far he can go. Although one thing that you will also agree is that at this young age, he's developed his temperament and his patience level to stay on the crease. Absolutely, Ali. The main thing is your basics, your technique. You have to develop as a batsman. If you want to become a batsman, you have to develop your technique. First of all, this is basic thing, and then you go for shots. And of over number 49, 144 for 3. We'll talk about it. This is day number 1, second session of the first game, live from Pindi Cricket Stadium. This is Central Punjab taking on Sindh for the very first game of domestic season, that is 4-day cricket. It doesn't get any tougher than this. It is such a remarkable format, this 4-day cricket, and alongside me is the master of this format. This is nicely cut, this is beautifully cut, but protection is there. There is a fielder placed just for that reason. Yeah, this is always a getaway shot for Abdullah Shafiq. And that was the feature of his innings. He never missed it. He didn't miss the cut shot opportunity. On this occasion, he gets one. Yeah, we were talking about earlier about the technique and the temperament and the patience level for Abdullah Shafiq. You can have that point fielded deep for Tayyib Tahir. That's exactly where he's bowling. I think this is a right idea, but for both batsmen, the strategy should be different as a bowling captain. Obviously, he is new on the crease. He will tempt some shots, make him play on the front foot. I would prefer, and in my liking, this length will not help them, because Tayyib Tahir also getting a lot of runs now. He has experience. Yeah, whenever you look at Tayyib Tahir, we got this feeling that he's always searching for runs. He's always looking for runs, like you used to do in your playing days. Always searching, always looking for runs, and that is the sort of player. Although not technically as sound as you were, but still he's looking for runs always, and that is
the definition of a modern day cricketer now, always searching for runs. Yes, you are right, but in this format, good shot and misfielding here by someone in the cover is, I think, Saim Ayub. Saim Ayub is, and Yeah, the youngster, the debutant. He's got those shin pads on. He's been fielding at silly mid-on. But still, it's not a justification that you let go the ball right under you. Look at that. That was firmly driven, right? I think captain should think about it. He has to adjust him in the slip cordon or somewhere on the catching position, because putting on these pads and diving the ball, and it's not easy. These pads are on, and he's saving a boundary and saving a single. Very difficult. Why does it always has to be a youngster winning those pads? Yeah, sir. He's making his debut. You're making him stand at a hot spot at a difficult position. Always a youngster. Ali, absolutely, you're right. This is something like when you go into college and that's your first day. Yeah. What is called? Yeah, but this is a difficult ranking if you're talking about that, because he's a youngster. But nevertheless, 50 overs gone, 149 for 3 Central Punjab. Abid Ali looked good for his 19 runs. Ali Zaryab could score only 19 runs also. Mohammad Saad was caught nicely by Sarfaraz Ahmed, scored 20 runs. And at the moment it's Abdullah Shafiq, who's unbeaten on 77. With him is Tayyib Tahir on 12. It's 149 for 3. Qasim Akram captained Central Punjab in National T20 Cup. Very good prospect, very good all-round cricketer. He's probably suited for that number 5 or 6 use of the crease. This will run away, might not. Yes, 2 runs will easily be collected. Yeah, slightly uppish, but it was catch or one tip. Okay. Let's see what was that. Yeah, he almost yorked himself. He gave himself the charge. Abdullah Shafiq. He's looked determined. He's hardly played a false shot technically. Yeah, he plays very clean and a very book cricketer, and he should be a. It was uppish. Yeah, but safe, because playing straight is always safe. This is the idea, I think, for Wad is he wants to drag him on back foot, and that's what happened here. But look how good he played. It can be risky. You got to be careful with those lengths. Quaid Alam is a part-time bowler, but he has this habit of breaking partnership. This is good running. This is excellent calling by Tayyib Tahir. He's one of the fittest in this central side. He runs well, and that is the disappointment probably on Fawad Alam's face. He was hoping that there will be no one, because once you give those easy runs, it gets easier for the batters. Absolutely takes the pressure off, and rotating the strike on this occasion, I would say you're right. $152 for 3.
Don't ball him there. He will punish you all day long. That is a fantastic shot. Abdullah Shafiq at his very best. Absolutely brilliant shot. Again, the same thing. Point of contact and playing right under his eyes. This is the key of his batting. If you watch this shot, you see it's a lot of wrist work and he play with authority. Yeah, the point you make, he just plays it so close to the body, right under his eyes. That is amazing talent. That is fantastic. Okay, that is easy. This length is quite easy. Again, so easy for him to rotate the strike and get on the other hand. Now he's approaching his 100 in a way that he can go for a big one. The stage is set. This 85 runs have come at a good time. Just 131 deliveries, which is a good rate nowadays. And you were talking about his technique, his temperament. It's very unlike that modern day approach that we see these days when you're taught. Yeah, the wrist work you were talking about. Very nice, late and lazy elegance. And let me tell you, Ali, this shot is boundary in every sort of cricket. Even in T20, if you have mid on back, even then it can be 2 or 3 runs. And this is always a safe and good shot, and very important for a batsman to have this shot, because 4-day cricket is all about from mid off to square leg. Of course, Abdullah Shafiq loves playing on this ground in this Pindi Cricket Stadium. He's played 1 test match and scored 100 here. So he knows this pitch, this ground is most comfortable. Like the man on my left, Yasir Hamid, who's played most of his cricket on this ground, scored lots of hundreds in this ground. He's been fantastic. And it's such a huge player to have him alongside me. So much to learn. Because he could bat, I tell you. He was fantastic. 3 centuries for him, for Yasir Hamid in this ground. 1 in 1 international. You remember them all? Ball by ball? Yeah, of course, not ball by ball, but I remember I got those hundreds. Ball by ball. Some shots you definitely keep remember. What do you think? Which one was your favorite ever on these 3 centuries? That the shot that gave you a lot of confidence? Against which bowler that was? I got 127 against New Zealand here. Carried the bat, faced my first ball and faced my last ball in 50 overs. That's international cricket is something else. But if overall, I would say 174 against Habib Bank on a difficult track. They had full bowling attack, loaded. Azhar Mahmood and Sajid Shah and all those. The pitch was, we got out on 100 in first inning. Then they took 50 runs lead. In second inning got 174. That was, I think, very clean batting from my side. It's 157 for 3 after 52. It's all been Abdullah Shafiq for Central Punjab since morning. 85 of 131, the inning of the highest order. And it's never easy when you're losing partners. On the other hand, he's lost 3 partners, but he's stood firm.
Fawad Alam. It's been a good weather also, not that hot as we expected. It's been nice, breeze, cloud cover also, and Yasir Hamid with a cup of tea. Alongside me, ladies and gentlemen, Ali Yunus, one of the best in the business nowadays. And Stop laughing when you say that, please. I'm not laughing, this is true. You are doing well. And Abdullah Shafiq, on the other hand, enjoying his time in the middle. And this is the time when he has to cash in. He done all the work hard, and now he is on 86 on 134 deliveries in full control. Yeah, wickets have been hard to come. So now you see all those tactics coming into the play. There's slip, there's short extra cover in place, there's mid wicket in place. So they're probably moving from plan A to plan B, where wickets are hard to come. So they'll have to do something different, something out of the box. Absolutely, they would love that Tayyab Tahir go for that big shot somewhere. And these two fielders which you are talking about, short extra cover and cover, and short mid wicket, three fielders for that shot, for that miss hit or something silly from Tayyab Tahir, but he's playing too easy. Yeah, the type of form Tayyab Tahir is in, it's going to be a mighty task to make him play that false shot. As we come to the end of 53 overs, it's 159 for 3. Little bird searching for food. Yes, it's law of nature. He's found one. There's something for everyone. Yes, absolutely. Oh, if there's a neck. Yes, it is. The finger is raised. Big wicket in the context of the game. Tayyab Tahir losing control. Just, we could say that the ball brushed his glove and went to the safe hands of Sarfaraz Ahmed. Mighty wicket for Sindh. Yeah, play with two minds here. Tayyab Tahir wanted to pull the ball, then wanted to leave it, then and took gloves in this occasion, and he must be cursing himself what he's done. Yeah, a bit of a confused shot by Tayyab Tahir. He was given this opportunity in red ball cricket, could not capitalize on this first inning. 13 runs he scored. It's 159 for 4 now. The next man in is Qasim Akram. He was captaining Central Punjab in T20 tournament, last tournament that they played. And he is smart cricketer, let me tell you. He's from under 19, from Pathway. He's playing now first class cricket, the most prestigious cricket in the country, premium cricket, and that's the point. That's the
place where he has to make his point. I'm good enough for big cricket. Absolutely, you're spot on. And credit to the management who's given him an opportunity. 10 matches, 389 runs, 350s. Average will go up because he is talented enough. 35 at the moment. What a wrong time. Well, there's never a right time though, but this was a wrong time to get out Tayyib Tahir because it was easy conditions. Runs were supposed to come, but just a bit of a nothing shot, just a confused shot by Tayyib Tahir. Yes, Ali, I think he should consider himself unlucky that missing this opportunity and this. See, ball was very wide. It should have gone for that pull shot along the ground. That shot was on. You cannot deny that shot. This is a shot of the game. And it was half-hearted attempt. I'll say this is a good opportunity for Qasim Akram. Although they've lost 4 wickets, but the situation that he is now come in, he's got to score runs, and if he's able to score runs here, that will give him a lot of confidence and respect within the side, because scoring runs at a difficult time when the team needs it, you earn a lot of respect within the camp. Yes, and when you have a reputation of getting runs in T20, we have seen him, but this is a different format. You have to be patient. You have to be good selection, shot selection, and that help you make runs on this level. You got to give the credit to Sindh boys. They chose to bowl first. First session didn't actually go their way. Just by the end, they got 1 wicket. But this session, it's fruitful at the moment. They've taken 2 wickets, not given away many runs. So Shakil has done well. His bowlers have responded. Just those couple of chances that did go down, courtesy Quaid-e-Azam and South Shakil. That was way high. Wide will be called. So had they taken those chances, it would have been a different story. Those 2 drop chances. Yeah, absolutely, catching is very important in every game, but in 4-day especially, when batsmen have all the time in the world to play, he has no pressure of overs and everything, you know. So those half chances, they have to take those chances, and this was nothing delivery. I'm not in favor of this bouncer. Oh, that was lucky. Was in the air for a while, but will run away. That is a very lucky boundary for Qasim Akram. Probably the plan was to push him at the back foot and then look to ball this drive delivery, which he did. Yes, very expensive shot. It was risky, went in the air. You can have 2 gullies. Not a bad idea to have 2 gullies on this pitch, because the ball is holding a bit at times, especially that the over pitch delivery or the ball who pitch on length delivery, it holds a bit. It was loose delivery, but well left. It's early on. And of over number 54, 164 for 4. Two wickets for Asif Mahmood, and 1 for Mir Hamza and 1 for Umar. Probably the best leg spinner we have in the country, Zahid Mahmood, in this format especially, at this level definitely.
He's into his 13th over without a wicket, though. He did manage an edge which was not taken by Quaid-e-Azam, and then another one gone down from South Shakil. So a couple of chances going down on Zaid Mahmood's bowling. Good use of feet hereby, and very good running between the wicket. Actually, they are running well, especially Abdullah Shafiq. We have seen it doesn't miss any run opportunity. That is the quality of a modern day cricketer. Always searching for runs. Even if you are technically correct, you've got temperament, but you're still searching for runs. Because this is a good inning, 136 deliveries for 88. That has come in a quick time. Nice, beautifully driven, but straight to the man. Just the way he drives, there is some X factor in it. There's something charming about his batting. Yes, everything is good about his batting, especially his technique, his head position, his body alignment. Was lucky. Ball went outside the slip fielder and got 3 runs. Again, good running. Yeah, a rare loose shot. We've not seen that from Abdullah Shafiq all day. It's very lucky. Look at that. Waited for it. Was not that short to cut that ball. Probably mixed up or got confused. And he was lucky that it didn't go to the fielder. And you're brave, luck favors you. Seems to be a different Zaid Mahmood starting off this spell. There's a different energy. Yeah, a bit slow. He's bowling a bit slow in the air. If you see, in first spell he was a bit quick. If we have bowling speed, but it's not here. That was good delivery to end the over. Number 55, 169 for 4. Lal Shifat, coaching, management, Amaya Farat also there. Just a wonderful opportunity for these youngsters, not just cricketers, but I'm talking about the coaches, the young coaches like Amaya Farat is, working with all these professionals from England. There's a lot to learn, and then if you can transfer it to the youngsters, not just coaching, but you've been the part of coaching different teams also. How huge is this? I'm not talking about the cricketers' point of view, but from the young coaches also. This is a great step, I guess. It will give a sense of relief to, obviously, to coaches in the dugout, and obviously they'll share things, and you know, they exert pressure. Obviously, they have a pressure of delivering a good results, and when you have guys like these guys, they join them. Obviously, they are feeling good about it. They learn a lot of things about the situations and how to, you know, get going with the things. Absolutely. I think with this modern day cricket, these techniques changing, the trainings have changed. Probably in your time, the trainings were different. And nowadays the trainings are different. So yes, definitely it will be a step up forward for all these young coaches also to learn from them these modern techniques and apply them. Yeah, absolutely. Even in our time, there were no trainings at all. At times. And you still played beautifully. This will run away for 4. It was edged. Very interesting replay to watch. Abdullah Shafiq rarely making mistake, and he was lucky, I guess. No, it was safe.
was good shot in the end, I guess. Yeah. Yeah, playing away from the body. That is not what we see from Abdullah Shafiq. He's edging closer to that century, that landmark. He's just 5 runs away. And this seems to be the last over, or maybe we can sneak in one more before the tea break. He probably wants to get over that. That is beautiful. Good bowling by Asif. He's probably bowled his heart out in this inning. He's taken 2 wickets into his 13th over. Alongside Mir Hamza, he's bowled beautifully too. But Asif Mahmood, this is probably the first time that you're seeing him. Looks like a big deal. Yeah, big opportunity for him. Playing in first class for Sindh because of his good performance and intent shown. But this time he bowled a very loose delivery to man in form and set. Abdullah Shafiq goes to 99. That was a superb shot. Full toss outside the off stump, nicely dealt with. The placement was perfect. And now he is just 1 run away from this historic moment, from this epic moment of getting that 100 in a big stage at first class levels. That's it. Beautifully done by Abdullah Shafiq. What a marvellous inning. An inning of highest order, full of skill, full of temperament, full of quality. Wonderful 100, 5th of his career. Excellent inning by Abdullah Shafiq. What a way to bring in. Great shots he played during his innings, and he'll get a rest now. It's tea. And what a feeling he has. Getting that 100, brilliant 100, quality 100, high class 100. I must say, flawless. Look at this. Beautiful balance. And so easy. It was no problem for him at all, but he worked hard for it. Great inning. Yeah, this session, 28 overs, 101 runs, 2 wickets, good run rate, 3.61. This will definitely go to Abdullah Shafiq and Central Punjab, being congratulated by the coaches. And why not? He's played a fantastic inning. At a time when solid inning was needed, he has delivered for his team. That's the way you play. This is batting all about. Abid Ali got out on 19, and then Abdullah Shafiq and Ali Zaryab, little partnership, and he got out on 19 again. Mohammad Saad just 1 runs ahead of them, 20. Tayyab Tahir lost his wicket on 13, and now Qasim Akram joined his partner Abdullah Shafiq. 178 for 4. Yeah, let's have a look at the highlights of this session. It's been all Abdullah Shafiq, played with some quality and skill. Mohammad Saad looked good for his 20 runs, played a couple of nice shots. But it was Abdullah Shafiq's show, I tell you. He's been brilliant all around the ground. Showed patience and that use of feet. Look at that for a shot, straight driven. He was helped by some average bowling by Zahid Mahmood. But he never lost his patience. This was a big wicket. Mohammad Saad losing his patience. But Tayyab Tahir also joined Abdullah Shafiq, looked good for that drive. And Abdullah Shafiq has been magnificent with all his wrist work. With that, and that was the loose shot you were talking about, losing wicket of Tayyab Tahir. A bit in the air. He was just a little getting edgy by the end of that inning. This was a glorious shot to get himself to 99. And the ball followed, he got his 100. His 5th of his career. It was a fantastic inning. It has been brilliant to watch. Mir Hamza, 11 over 31 runs with 1 wicket. Muhammad Umar, 13 overs he bowled. 7 maiden and 21 runs and 1 wicket. 2 wickets for debutant Asif Mahmood, 13 overs, 63 runs. A bit expensive, I must say. 1 maiden, 2 wickets. And Zahid Mahmood is bowling, but no wickets for him. And Fawad Alam, 6 overs, 14 runs, no wicket.
Yeah, we're going to take a breather. When we come back, we'll have live action in about 15 minutes.
चाय के वक्फे के बाद खुशामदीद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी सीजन 2022-23 का पहला दिन। सेंट्रल पंजाब बमुकाबला सिंध। ये अब तक की सूरत हाल। सेंट्रल पंजाब ने 178 रन बनाए हैं और 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं उनके। अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी की बदौलत अभी भी वो नॉट आउट हैं। 100 रन बनाए, अच्छा स्ट्राइक रेट, सिर्फ 144 गेंदें उन्होंने खेली। अच्छा साथ रहा उन्हें मुख्तसर लम्हों के लिए, पहले आबिद अली का, फिर अली जरियाब और मोहम्मद साद का। ज़्यादा बड़ी पार्टनरशिप्स देखने में नहीं आई, लेकिन अब्दुल्ला ने एक एंड संभाला हुआ है। पहली विकेट आबिद अली, लंबा ड्राइव खेल गए और यहाँ अच्छा बॉल था आसिफ का, थोड़ा सा सीम हुआ। मोहम्मद साद भी लंबा और खुला ड्राइव खेलने गए जो कि इस विकेट पे नहीं लग रही, ये देखा गया है। थोड़े से बदकिस्मत कहे जाएंगे। तैयब ताहिर लेग स्टंप पे जाने वाली बॉल से खुद को नहीं बचा सके। सिंध के बॉलर्स ने मेहनत की है मुसलसल इस विकेट पे, मदद मौजूद है लेकिन इतना आसान नहीं है। 2 विकेटें आसिफ महमूद ने हासिल की डेब्यू पर। मीर हमजा ने 1 विकेट हासिल की और 1 ही विकेट मोहम्मद उमर के हाथ आई। 56 ओवर्स का खेल हो चुका है। अच्छा ओवर रेट भी मेंटेन किया हुआ है सिंध की टीम ने। जाहिद महमूद और फवाद आलम ने 19 ओवर स्पिन के किए, इससे भी ज़ाहिर है मदद मिली है इन्हें। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं अयाज। खुशामदीद कहते हैं आपको अयाज। शुक्रिया शाह फैसल। नहायत शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है आज पूरे दिन, टेम्परामेंट शो किया है अब्दुल्ला शफीक ने, और ये उनकी कमबैक सेंचुरी भी होगी क्योंकि काफ़ी अरसे से वो स्कोर नहीं कर पा रहे थे और ये 100 रन उनको मदद देंगे वापस कमबैक करने के लिए। क्या कहेंगे शाह फैसल आप? ये फर्स्ट क्लास मैच तो उनका पहला ही है। इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में मुसलसल रन्स करते आए हैं और लॉन्गर फॉर्मेट में और ये अब्दुल्ला शफीक के 100 रन जिसके बारे में अयाज बात कर रहे थे अभी। स्ट्रोक्स विकेट के चारों जानिब, लेकिन जो चीज आप देखेंगे काफी कॉम्पैक्ट खेले, क्लोज खेले। यहां पे थोड़ा सा किस्मत ने उनका साथ दिया और कहीं कहीं बॉलिंग भी ऐसी नहीं थी जो उन्हें मुश्किल में डालती, लेकिन 100 के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी 2 सेशंस में। और अभी भी नॉट आउट हैं, काफी मैच बाकी है। यहाँ पे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम इस वक्त बादलों की ओट में है। प्लेयर्स के लिए अच्छा होगा क्योंकि थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो गई थी आफ्टरनून के सेशन में और अब थोड़ी सी हवा भी चल पड़ी है। देखना ये होगा कि सेंट्रल पंजाब की ये इनिंग्स किस जानिब जाएगी और यहाँ बोनस पॉइंट्स को भी ज़रूर खातिर में रखना होगा अयाज। जी बिल्कुल, अभी तक पलड़ा भारी रहा है सिंध का, लेकिन अब्दुल्ला शफीक मुज़म्मती दीवार बने हुए हैं तमाम बॉलर्स के सामने। मोहम्मद जाहिद महमूद ने काफ़ी मेहनत की है लेकिन फील्डर्स ने उनका साथ नहीं दिया। अगर अब्दुल्ला शफीक का कैच लेने में कामयाब हो जाते तो काफ़ी बड़ी विकेट आ सकती थी। जाहिद ने मुसलसल कोशिश की है फ्लाइटेड डिलीवरी पर और जो ड्रॉप कैच का जिक्र कर रहे थे अयाज, मिड विकेट पे 43 पे खेल रहे थे उस वक्त अब्दुल्ला शफीक, और यकीनन वो एक ऐसी गलती थी जिसका खमियाजा सिंध अभी भुगत रही है। आज काफ़ी अनलकी रहे जाहिद महमूद, दोनों कैच जाहिद महमूद की बॉल पर गिराए।
पहले फवाद आलम ने और फिर उनके बाद कप्तान सऊद शकील ने। पहले दिन की पिच में अमूमन स्पिनर्स के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसलिए बदकिस्मत कहे जाएंगे जाहिद। अच्छी मेहनत से बॉल की है और जब उन्होंने बॉल को फ्लाइट किया, बैट्समैन को इनवाइट किया है बाहर आने के लिए, वहाँ पे वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुए हैं। अच्छा सॉफ्ट हैंड से खेलकर अच्छा कॉल किया अब्दुल्ला शफीक ने, चाहे कि वक्फे के बाद अपनी इनिंग्स का दोबारा आगाज़ किया। अच्छा रिस्पॉन्ड किया कासिम अकरम ने भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर। एक इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप है सेंट्रल पंजाब के लिए, क्योंकि इसके बाद ऑलराउंडर्स शुरू हो जाएंगे। अली शान अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, आमिर यामीन भी। जू अब हम 100 ओवर के मार्क की तरफ जाते हैं। बोनस पॉइंट्स की कहानी भी खुलना शुरू होगी, बात करेंगे इस ओवर के बाद। 179 पर 4। शायद महमूद की मौजूदगी की वजह से सिंध के कप्तान सऊद शकील को ये मौका मिला है कि ज़्यादा तौर पर वो आफ्टरनून सेशन के बाद पेस और स्पिन का अटैक बरकरार रखें। अब मीर हमज़ा को गेंद दी है पवेलियन एंड से। 11 ओवर्स कराए मीर हमज़ा ने अभी तक। कुछ छोटे स्पेल्स में यूज़ किया है कप्तान सऊद शकील ने, क्योंकि अच्छी हिकमत अमली है। देखना ये होगा कि इस निस्बतन पुरानी गेंद से मीर हमज़ा कितना बैट्समैन को तंग कर सकते हैं। ऐसा क्लाउड कवर था कुछ देर पहले और हवा भी चल रही है। एंगल जो है वो बॉल को बाहर की जानिब लेके जाएगा दाएं हाथ से खेलने वाले बैट्समैन के लिए। 2 स्लिप और गली। पहली गेंद के बाद लगा ऐसा कि मीर हमज़ा को कुछ तकलीफ का एहसास हुआ। उनका लैंडिंग फुट था शायद दायां पैर। फास्ट बॉलर की जो लैंडिंग होती है वो बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए, पूरा वजन उनका पड़ता है जब वो डिलीवरी स्ट्राइड में आते हैं। अच्छा एंगल किया अब्दुल्ला शफीक ने, 1 रन हासिल किया। ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे सेंट्रल पंजाब सिंध के बॉलर्स और फील्डर्स, क्योंकि वो कोशिश करेंगे कि नए बैट्समैन पे जितनी ज़्यादा बॉलिंग कराएं वो इस वक्त बेहतर है, क्योंकि कासिम अकरम अभी नए आए हैं। इस विकेट पे हमने देखा है कि जो बैटर्स हैं वो ज़्यादा सेट हो नहीं पाते, और यही पिंडी की विकेट का खासा भी रहता है। अगर आप देखें तो तमाम ही खिलाड़ी जो आउट हुए वो डबल फिगर्स में उनका स्कोर दाखिल हुआ। जी काफ़ी सरप्राइजिंग विकेट है। अच्छा एंगल क्रिएट किया मीर हमज़ा ने। थोड़ा ज़्यादा बाहर था इसलिए कासिम ने उसको खेलने की कोशिश नहीं की। ये जो मूवमेंट है देखनी होगी कि ये ऑफ द सीम थी या बॉल थोड़ा रिवर्स हुआ। बॉल पे काम तो काफ़ी किया सिंध के बॉलर्स ने। ये देखिए मुसलसल बाहर जाती हुई गेंद सरफराज के पास। आहिस्ता आहिस्ता हमजा मीर रिदम पकड़ते हुए नहायत ही शानदार बॉलिंग स्पेल किया आज उन्होंने। पूरा दिन किसी बल्लेबाज को आज़ादाना नहीं खेलने दिया। नहायत ही शानदार एवरेज उनकी अभी तक। ये ज़्यादा करीब से थी, कासिम ने जाने दिया, लेकिन ये बेहतर लाइन थी
मीर हमजा की। अच्छी मूवमेंट उन्हें मिल रही है, काफी परसिस्टेंटली बॉल कर रहे हैं। इस मरतबा बॉल अच्छा छोड़ा कासिम ने। पिछला बॉल थोड़ा बाहर निकला, ये वाला बॉल अंदर आया, लेकिन काफी दूर से ही परख लिया था बॉल को कासिम अकरम ने और जाने दिया सीधा सरफराज के हाथों में। स्लिप कॉर्डन अगर देखें हैं यार, पहली स्लिप तो रेगुलेशन फर्स्ट स्लिप है, उसके बाद काफी बड़ा गैप है और फिर 2 स्लिप्स हैं। देखें कासिम जब ये बॉल छोड़ रहे हैं, रिप्ले देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि लग नहीं रहा कि वो अपनी स्टंप्स कवर कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग रिप्ले होगा ये। जो कासिम का स्ट्राइड है वो बिल्कुल स्ट्रेट डाउन द विकेट जा रहा है, लेकिन अक्रॉस नहीं जा रहा बॉल की एंगल को कवर करने। स्लिप के फील्डर्स की बात कर रहा था, पहले स्लिप के बाद काफी बड़ा गैप है और जो तीसरी और चौथी स्लिप है उसमें भी काफी बड़ा गैप है। एक ही जगह पे गेंद किए मीर हमजा ने, खेलने पे मजबूर किया इस मरतबा उन्होंने कासिम अकरम को। आलम तेजी से आए, एक रन बनाने का कोई मौका नहीं था। 180 पर 4। फिर अच्छी फील्डिंग सऊद शकील की। सेंट्रल पंजाब की जो इनिंग्स रही है, जैसे मैं जिक्र कर रहा था, कोई भी बैटर सेट नहीं हो पाया। ये अच्छी फील्डिंग एक पंजा फिर देखिए, और पार्टनरशिप भी इसी वजह से ज़्यादा बड़ी हुई नहीं। 43, 34, 48 और 34। जो बात पहले कर रहे थे कि इस विकेट में बॉलर्स के लिए इतना ज़रूर कुछ मौजूद है कि वो इन्हें इंटरेस्टेड रखेंगे थ्रू आउट द मैच। चांस है, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई जाहिद से और दोनों बैट्समैनों ने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। कासिम अकरम ने हाथ के इशारे से बताया कि वो पहुंच गए हैं। थोड़ा सा उमर सुस्ती से आए। उमर के गुमान में कहीं ये बात थी कि बॉल ले लेंगे जाहिद महमूद, इसी वजह से थोड़ा सा सुस्त आए और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया कासिम अकरम और अब्दुल्ला शफीक ने। नए बैट्समैन के लिए भी कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं की फील्ड में जाहिद महमूद ने। मिड ऑफ का फील्डर थोड़ा सा पीछे है कासिम अकरम के लिए भी, लेकिन ऑन साइड पर भी 3 ही फील्डर हैं करीब में 1 रन रोकने के लिए, और ऑफ साइड पर 2। ये देखिए मिड ऑफ आपकी स्क्रीन के बॉटम पर, और उसी फील्डर को की जानिब खेल दिया और सिंगल हासिल किया। थोड़ा सा डीप रखा हुआ है जाहिद महमूद ने इस फील्डर को। कासिम अकरम नए हैं, शायद कोई ज़ोर से शॉट खेलने के चक्कर में हवा में खेल दें, लेकिन उसका दूसरा नुकसान ये हुआ कि स्ट्राइक रोटेशन हो गई और अब अब्दुल्ला वापस आ गए हैं क्रीज पर।
184 पे 4। सेंट्रल पंजाब का कोचिंग स्टाफ, दाएं जानिब रिचर्ड स्टोनियर, बिलाल शफात, पॉल फ्रैंक्स। बिलाल और पॉल का ताल्लुक नॉटिंघम शायर से है, इंग्लैंड में खेले भी है और कोचिंग भी करते हैं। बिलाल शफात तो पाकिस्तान में भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं। ये एक अच्छा इकदाम है पीसीबी का, ये कहना होगा। और नए आइडियाज़, फ्रेश आइडियाज़ लेकर आते हैं ये फॉरेन कोचेज़, और जो बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न आइडियाज़ होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं इस डोमेस्टिक लेवल पे। खूबसूरत शॉट, लाजवाब टाइमिंग और प्लेसमेंट। कासिम अकरम बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं। किताबी शॉट खेली, निहायत ही लाजवाब शॉट, जैसे कि शाह फैसल ने कहा। हेड स्टिल, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया उन्होंने, फ्रंट फुट आगे लाए, हेड डाउन किया, शानदार शॉट। मीर हमजा को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए इस चौके से, यही वो चाहते हैं। वो कासिम अकरम को बाहर निकालना चाहते हैं, अगले कदम पे ड्राइव खिलाना चाहते हैं। और जो पिछले ओवर में भी देखा, जब कासिम बॉल छोड़ते हैं तो अपनी स्टंप्स को कवर नहीं करते। ये शायद मीर हमजा ने देखा हो, अगर अच्छा इन स्विंगर हो तो कासिम को मुश्किलात में डाल सकते हैं। और मीर हमजा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पे फर्स्ट क्लास का एक ही मैच खेले हैं, और जिसमें उन्होंने 10 खिलाड़ियों को आउट किया था अक्टूबर 2017 में। तब मेरा ख्याल है कि उस सीज़न में लोकल मेड बॉल यूज़ हुए थे, ग्रेस का बॉल यूज़ हुआ था, और ग्रीन टॉप विकेट्स होती हैं अक्सर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पे डोमेस्टिक क्रिकेट में। लेकिन अच्छा एडजस्ट किया है जब से ये बॉल चेंज हुई है। मीर हमजा का एक सीज़न थोड़ा हल्का गया था, लेकिन पिछले 2 सीज़न से उन्होंने कोकाबरा बॉल से अच्छा एडजस्ट किया है। पिछले सीज़न में भी बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी, 8 मैचों में 27 आउट किए थे। और मुसलसल खबरों में है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, निहायत ही शानदार परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं मीर हमजा। एंगल अब चेंज किया है, राउंड द विकेट आ गए हैं। एंगल ज़रूर चेंज किया मीर हमजा ने। और ये जो स्लिप कॉर्डन है, अक्सर हमेशा कहा जाता है कि आप इनके साथ ज़्यादा टिंकरिंग अगर ना करें तो बेहतर होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखें फर्स्ट स्लिप तो रेगुलेशन है, दूसरे और तीसरे स्लिप में काफ़ी बड़ा गैप है, और तीसरे और चौथे स्लिप में ऑलमोस्ट फाइन गली। थोड़ा सा एक्शन भी चेंज किया इस दफ़ा, वहीं से अंदर करते हैं बॉल मीर हमजा और वहीं से बाहर, इसलिए 2 गलियां बिल्कुल पास, और स्लिप को नहीं हटाया अभी तक उन्होंने। और कासिम अकरम काफ़ी दूर से बॉल छोड़ रहे हैं, इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा मीर हमजा को। स्लिप कॉर्डन की बात करें, अक्सर जब इस तरह का स्टैगर्ड कॉर्डन होता है, जब एज लगता है तो ज़्यादातर वो दरमियान से ही चला जाता है। एक फील्डर बैकवर्ड पॉइंट पे भी है, अब्दुल्ला शफीक के लिए इस एरिया को पैक किया हुआ है हमजा ने। मिक्स फील्ड है, इसलिए कोशिश करें ज़्यादा बॉल सीधा भी करें, क्योंकि प्रोटेक्शन है उनके पास ऑन साइड पर भी। ओवर का अख्तिताम 189 पर 4।
नेशनल T20 में हमने देखा था कि जाहिद ने गुगली का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल किया था, आज ज़्यादा इस्तेमाल किया नहीं और पहले दिन का विकेट है, ज़्यादा टर्न भी नहीं होगा। नॉर्मली गुगली ज़्यादा टर्न होती है लेग ब्रेक की निस्बत पाकिस्तानी लेग स्पिनर्स की। अच्छी फील्डिंग जाहिद की, ये प्रेशर बना कर रखना होगा। हेड स्टिल किया, सीधे बल्ले के साथ खेले, अच्छे रन सेव किया जाहिद महमूद ने। कि बिलाल शफात सेंटर में बैठे हुए हैं, उनकी अच्छी यादें हैं रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड से। HPL की तरफ से खेलते हुए उन्होंने एक सेंचुरी भी यहाँ बनाई रावलपिंडी में 2011 के सीजन में, जब उन्होंने 104 रन बनाए थे। अपील LBW की, थोड़ा सा लगता है कि बॉल लेग स्टंप की जानिब निकल रही थी, इतना ज्यादा बाउंस नहीं हुआ जितना कासिम एक्सपेक्ट कर रहे थे पुल शॉट के लिए। बॉल थोड़ा सा नीचे भी रहा और पूरा बल्ले पे नहीं ले सके, जाहिद थोड़ा सा पीछे ही बैठ गए और लेग स्टंप से बाहर जाता हुआ ये बॉल। अपील की थी जोरदार फवाद आलम, सरफराज अहमद और जाहिद, नहायत ही शानदार फैसला इमरान जावेद का। लेंथ से अभी आज पहले दिन काफ़ी टाइम मिल रहा है बैटर्स को स्पिनर्स के खिलाफ। काफ़ी ड्राई है पिच और उसमें इतनी ज़्यादा पेस नहीं है, ख़ासतौर पे अब जबकि बॉल 60 ओवर पुराना हो चुका है। अच्छा टाइम किया, अच्छा प्लेस किया, उमर के पास मौका नहीं होगा इस गेंद को रोकने का। लाजवाब स्ट्रोक कासिम अकरम का, कदमों का शानदार इस्तेमाल किया इस बार कासिम अकरम ने, आखिर तक बॉल पर निगाह रखी, 2 से 3 कदम आगे निकल गए थे और पूरा मिडल किया। निहायत ही शानदार कवर ड्राइव, 2 फील्डरों के दरमियान से बॉल को खेल दिया, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। बिल्कुल आखिरी लम्हे पे बल्ले का रुख भी उन्होंने मोड़ा, जिससे गैप हासिल करने में मदद मिली उन्हें। फील्ड भी काफ़ी तेज़ है यहाँ पिंडी स्टेडियम की। एक सेट के बाद 195 पे 4। अभी तक बॉल को एंगल कर रहे हैं अंदर की जानिब अब्दुल्ला शफीक के लिए। हमने देखा आसिफ ने आउट किया अली जरियाब को, सिमिलर एंगल था, बॉलर राइट आर्म थे और बैटर जो है वो लेफ्ट हैंडेड थे। इस तरह का एंगल बनाने के लिए हमजा को बॉल बाहर निकालना होगा अब्दुल्ला के लिए या कासिम अकरम के लिए। अभी तक ज़्यादातर बॉल अंदर ही आए हैं, अगर इस एंगल से बॉल बाहर निकलेगा तो काफ़ी मुश्किल होगी बैट्समैन के लिए। और जो बॉल अंदर आए हैं वो विकेटों के बिल्कुल पास से गुजरते रहे हैं और उसके लिए फील्डिंग भी पैक की हुई है। अब्दुल्ला शफीक स्लिप और गली के ऊपर से उठा के बड़ा अच्छा खेलते हैं, आने दिया बॉल को, हेड स्टिल, निहायत ही शानदार बैक फुट डिफेंसिव अब्दुल्ला शफीक अपने दिफा की वजह से जाने जाते हैं। दो फील्डर पीछे हैं स्क्वायर लेग और फाइन लेग पर बाउंड्री लाइन के ऊपर। जेन्युइन शॉर्ट पिच डिलीवरी या बाउंसर का अभी तक इंतजार है। दोनों ही बैटर्स के लिए सेम हिकमत अमली है, फील्ड में कोई खास तब्दीली नहीं। जिस तरह पहले यासिर हमीद बात कर रहे थे, दोनों बैट्समैन के लिए आप एक प्लान नहीं रख सकते। अब्दुल्ला काफ़ी सेट हैं,
100 से ज़्यादा स्कोर कर चुके हैं ये 2 फील्डर्स ऑन साइड पर। इनमें से एक फील्डर को अब ऊपर बुला लिया गया स्क्वायर लेग अंपायर के पास और एंगल भी चेंज कर लिया मीर हमजा ने। इस एंगल से वो ज़्यादा तंग कर रहे थे कासिम अकरम को। सिंध के कप्तान सऊद शकील को देखना होगा कि नई गेंद के आने में 18 ओवर्स बाकी हैं इस ओवर के बाद। किन 2 बॉलर्स को फ्रेश रख पाते हैं नई बॉल के लिए, वो चांस लेंगे। अगर उस वक्त तक एक ब्रेक थ्रू मिल गया तो नए बैट्समैन के खिलाफ तो ज़रूर वो नई बॉल के लिए जाएंगे। अभी काफ़ी वक्त पड़ा उसमें, लेकिन अब से तब तक क्या हिकमत अमली होती है ये देखना होगा। अभी तक बॉलर्स का अच्छा इस्तेमाल किया है सऊद शकील ने। फास्ट बॉलर्स को उन्होंने छोटे स्पेल्स में यूज़ किया है। फवाद आलम से भी बॉल करवाए हैं। ये एक ऐसा लम्हा है जहां पर देखना होगा उनकी हिकमत अमली क्या होती है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ऐसा क्लाउड कवर है, हवा भी अच्छी चल पड़ी है। लगता है वो जो मदद बॉलर्स के लिए थी वो आहिस्ता आहिस्ता पुरानी बॉल से अब उतनी ज़्यादा नहीं है। चांस था यहाँ लेकिन मना कर दिया अब्दुल्ला शफीक ने। डॉट बॉल के साथ ओवर का खात्मा 196 पे 4 आउट। नहायत ही शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया आज अब्दुल्ला शफीक ने। मर्द आहन का किरदार अदा किया। 158 बॉलों पर 105 रन की बारी खेलकर अभी तक क्रीज पर मौजूद। कोई बल्लेबाज उनका ज़्यादा देर तक साथ नहीं दे सका, लेकिन तने तन्हा अपनी टीम को आगे लेके बढ़ते हुए। शॉर्ट कवर पे जो फील्डर था, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, वो काफ़ी स्ट्रेट था, उसे स्क्वायर कर दिया और जो एक्स्ट्रा कवर का फील्डर था उसे सीधा कर दिया। दरमियान का जो फील्डर है साइम अयूब, उनकी पोजीशन चेंज की। शानदार स्ट्रोक, कदमों का खूबसूरत इस्तेमाल, इनसाइड आउट, लॉफ्टेड ड्राइव अब्दुल्ला शफीक का। जितनी तारीफ की जाए इस शॉट की कम होगी। फेस खोला बैट का, कदमों का शानदार इस्तेमाल, एंगल बनाया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, आखिर तक बॉल को देखते रहे। निहायत ही किताबी शॉट। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कुव्वत सर्फ की इस शॉट पर। टाइमिंग लाजवाब थी। फुटवर्क और बैलेंस इतना अच्छा होगा तो टाइमिंग तो अच्छी होगी। 200 रन भी मुकम्मल हुए। सेंट्रल पंजाब ने पहला बैटिंग बोनस पॉइंट भी हासिल कर लिया इस इनिंग्स में। सिंध की टीम ने पहला बोनस बॉलिंग पॉइंट पहले ही हासिल किया था जब तीसरी विकेट गिरी थी। अच्छा लेट कट किया, पेस का इस्तेमाल किया जाहिद की, और ये बेसूद कोशिश साद खान की, लेकिन शानदार बैटिंग अब्दुल्ला शफीक की। शानदार बैलेंस था, आखिर तक बॉल पर नजर रखी, बैकफुट पर गए, लेट कट खेले, बॉल की स्पीड का भरपूर फायदा उठाया। फ्लिपर बॉल था, तेज हुआ पड़कर। अब्दुल्ला शफीक ने आखिर तक बॉल को देखा। ये अब्दुल्ला शफीक की खासियत है इस इनिंग्स की, उन्होंने किसी भी मरहले पर स्कोर बोर्ड को साकित नहीं होने दिया, सलसल हरकत में रखा। थोड़ा सा स्लो टर्न जाहिद के लिए, अब्दुल्ला शफीक के लिए कोई मसला नहीं, क्योंकि वो इतने सेट हैं कि इस वक्त वो बहुत अच्छा देख रहे हैं बॉल को।
इस ओवर में बड़े जारहाना मिजाज में नज़र आए, जो आज़ादाना शॉट्स उन्होंने पूरे दिन नहीं खेली, इस ओवर में नज़र आए अब्दुल्ला शफीक वो खेलते हुए। अच्छी फिजिंग लेग ब्रेक थी। चेंज किया था इस ओवर के आगाज पे जाहिद ने, और अब जो सिली मिड ऑफ का फील्डर है वो भी हटा लिया गया है। एक और रन का इजाफा, 205 पर 4। दिखाएं। और ये बोनस पॉइंट्स का सिस्टम इस साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए 16 पॉइंट्स मैच जीतने पर, 5 पॉइंट्स ड्रॉ मैच पर, और अगर टाई हो गया तो 8 पॉइंट। मैच बारिश की वजह से ना हो सका तब भी 5 पॉइंट। बोनस पॉइंट्स की तफसील भी है जो 100 ओवर्स तक वैलिड रहेगी। दो 200 रन पर बैटिंग का एक बोनस पॉइंट मिलेगा जो कि अभी सेंट्रल पंजाब ने हासिल किया, और 3 विकेट्स पर सिंध एक बोनस पॉइंट हासिल कर चुकी है। 6 विकेट्स और 8 विकेट्स पर पॉइंट मिलेंगे, और बैटिंग में 250, 300 और 350। कमेंट्री बॉक्स में आ गए हैं अली यूनुस और यासिर हमीद। Mohammad Omar into his 14th over, just given away 22 runs, 7 maidens. He's kept things tight, bowled into his limits. He knows his limits. He's got that 1 wicket too. Hint of reverse swing that we're witnessing. No doubt that they've taken care of the ball. We've seen them work on it, kept one side shining. They do have bowlers to utilize that reverse swing. Somebody like Mir Hamza also will come into play. Umar, we know that. Asif Mahmood also been very impressive. Yeah, you can see that. They've been really taking care of it. Saud Shakil himself. And it's very important in this sort of game that 1 or 2 players should sign it. Usually, ideally, it's the people standing at mid-off and mid-on, they do it. And they keep the ball away from the remaining fielders. It has been such a great day for the batters in Faisalabad. Abdul Fasi, the young opener from Northern, getting 100 of just 98 deliveries. Abdullah Shafiq getting 100 here. Just fantastic to see. A young batter coming through the system, scoring runs at this level. It's always heartening for Pakistan cricket. Another one, Qasim Akram on your screen. Really want him to go big in this Quaid-e-Azam trophy. I think this is a very important phase of his cricketing career. Qasim Akram been given the responsibility as a T20 captain, and now been given this responsibility to play at number 6 in 4-day cricket. That is a big moment. He has to deliver. He has, after this, whenever this season ends, he should be the player who should be at the top of the list for Central Punjab, because so much is expected of this youngster. As I see Yasir Hamid joining in from a fresh cup of tea. Very good looking. Yasir, good afternoon. Thank you, Ali. Good afternoon to you as well. Things are looking good for Central Punjab. Partnership is building up, as you said. Qasim Akram, the one for the future, has been captaining T20 side of Central Punjab quite well with the help of Shoaib Malik. He helped him a lot. We were watching, and he's a good prospect. Absolutely, it's never easy, Yasir, when Fahim Ashraf was the initial captain. He got injured. Then suddenly Abdullah Shafiq was made the captain. He withdrew.
And out of the blue, suddenly Qasim Akram was handed over that responsibility, and he did pretty well. And as you just said, he was helped by Shoaib Malik. But this is a different phase of his life, coming into from T20 cricket to domestic cricket, 4-day cricket. This is a new challenge for him. Yes, definitely. And the way he's adopting the game is very good. From T20 to 4-day cricket, he's adopting is in good manner. He's taking his time, complimenting his senior partner on the pitch. So some good signs from him showing. 64 overs gone, 206 for 4. They've done well as a bowling unit, Sindh side. Mir Hamza, Mohammad Umar have kept things very tight, and Asif Mahmood getting 2 wickets. A bit touch expensive, but wickets have covered it up. Zahid Mahmood still searching for his first wicket, so is Fawad Alam. 206 for 4. Zahid Mahmood into his 18th over, wicketless. Is it a bit setback for Sindh if Zahid is not getting wickets? Well, he did create some chances, 2 chances. If you're not going to catch those, it's never going to help the spinner, because there was such important phase of the game early on. Got those edges, but never caught. This is nicely played, but not quite placing it right, Abdullah Shafiq. So it's very difficult. You know it best. You played the cricket of the highest level. When a leg spinner is bowling, you don't take catches. It's never the same after that. Yeah, he bowled well. Bowled well, but obviously some missed chances by fielders. But the good thing is he is still on job, and he's good with his economy. He can get wicket any time because he's a senior bowler. He knows. Nicely swept, beautifully timed, and that wonderful placement too for Abdullah Shafiq. He's gaining confidence with every delivery he faces, and this will bring up the 50 partnership between these two, Abdullah Shafiq and Qasim Akram. Beautiful shot. It was very wide delivery outside the leg stump, and Abdullah Shafiq doesn't miss those chances. He never missed these opportunities. That's the difference between him and others. Just ease it for 1. Just wonderful to see that this young batter, you don't have to miss out on the bad deliveries. The example is the last delivery that Zahid Mahmood bowled way out towards his leg side, but he didn't miss out on that. You got to take runs on those bad deliveries. Yeah, good players do. They never miss the opportunity to get runs. And good bowlers never give you bad delivery so easily, like likes of I'm talking about international cricket. So you have to develop that habit that you can put on a bit 60-40 delivery to boundary as well. So that was a poor delivery though. Lucky that there was sweeper. Was punished by Qasim. Likes of Australians, he played a test match here in Pindi. Australians, we know, they are very precise with their line and length. Even if it's test match or T20, but still he got 100 in that match, and that was high quality innings as well. Very talented player.
Yeah, somebody who values his wicket. I think it's very important in this age of T20 cricketers who don't rate their wickets high. Abdullah Shafiq is somebody who really does that, who really values his wicket. And you can just tell by the approach, temperamentally very correct. He has all the time in the world. End of over number 65, 212 for 4. Yasir Hamid has another cup of tea. 10th of the morning. It's Not not good. 10th. I think it's 4th. I think it's too much for me. But you enjoy tea when you are talking about cricket. Well, absolutely. It just doesn't get any better than this. Birds flying around, nice weather, lovely tea, good company, excellent cricket. Everything working. Blessed day. Same goes for me, and that's good running between the wicket. Big gap. A bit hard day for Sindh, we must say. In the end, if they don't get 2 wickets, 1 or 2 wicket more. Nice placement and nice tap and run. That what T20 cricket helped these players to rotate the strike. There was a chance, but these two will run well. These very two fit cricketers run well. Abdullah Shafiq has been there for 170 deliveries, but hasn't looked tired. On the other hand, it's been a little hard work for the Sindh bowlers. Homer into his 15th over. If Central Punjab managed to play today, which is on cards, look like Abdullah Shafiq is playing nicely and Qasim Akram. Sindh may take second new ball after 80 overs, and those 10 overs are very crucial. That can change the scenario of the game. Yeah, you make a good point. They've got Ali Shan, Amir Yamin to follow. Osama Mir can bat a bit, and then it's Waqas Maqsood and Muhammad Ali. So if they can get 1 wicket here, it will definitely make things very interesting for tomorrow's day. Oh, beautiful delivery. Oh, I can feel it. The disappointment on Muhammad Umar's face. It was so close. Yeah, that was on the up, and this is not a good idea to play this shot on this pitch. We never seen a single shot. We never seen a single shot by Abdullah Shafiq on this pitch. He didn't play on the up. If you have noticed, he played cut shot and he played drive in the slot. That's it. His 2 shots. Yeah, that was a rare bad shot attempted by Qasim Akram, and that is what probably he's realizing. The disappointment is there on his face, and the smile is on Saud Shakil's face, because he wants him to play that wrong shot, that false shot. He's going to force it. There are 2 slips and a gully placed for that. There we go. There's 1 gully, there's 2 slips, all waiting for this shot of wrong, false shot attempted by Qasim Akram. I think in 4-day cricket, bowlers have all the time. Obviously, he has also all the time to bowl according to plan, and you cannot bowl on both sides. 214 for 4.
Quaid-e-Azam is back. He's bowled 6 overs for 14 runs. Left arm spinner, and you use such tactics when batters are really concentrating high. You bowl somebody like Quaid-e-Azam, who's not a regular bowler, just to make them open that bat, make them drive, make them come out of that shell. This is probably the idea from Saud Shakil, because Abdullah Shafiq and Qasim Akram, they're very technically correct, playing every ball on merit. Yes, but Abdullah Shafiq will not take this bait, I guess. Excellent, wonderfully done. The use of the feet is so sweet. Every time he comes out of the crease, he's looking to score runs and looking positive. Just 2 runs on this occasion. There is flow in his batting. He's focused, he's skilled. And obviously, if you have these 2 things, you'll get flow. So that's what he's getting. And excellence always attracts success. He's playing with excellence. So are you, Mr. Yasir Hamid. You're excellent too. Just like Abdullah Shafiq's batting, very smooth. Qasim Akram is playing well with his partner. Good partnership is building, which can hurt Sindh if they don't get 1 wicket here. They'll bog down, more bog down. Very good running, very good running. Good coordination between these 2 young players. Tap and run. Good cricket. Yeah, this is a very good thing. Central Punjab is doing. They are not allowing Singh to execute their plan. Rotating the strike, getting these 1-2s, that will hurt them more. Yeah, it won't be long that we see a change in their batting approach. As they approach to 250, they will earn their 2nd bonus point. And if they're able to get those 300 runs inside 100 overs. Oh, that's nicely swept. There is no one there. Wonderfully done. That is excellent shot by Qasim Akram. Yeah, he knew the fielder is up, and beautiful executed shot. And he was offline a bit. I don't know why he put that fielder up. I think that chance to, top edge and goes up. Central Punjab is placed well, 223 for 4. Yeah, we were talking about the change in the shift, change in the approach of these batters. Abdullah Shafiq scored his first 50 of 88 deliveries, and the second 50 coming of just 56 deliveries. So probably they realized the importance of those bonus points. At 250, they will earn their 2nd bonus point. And if they score 300 runs inside 100 overs, they will get the 3rd bonus points. It's all about these little initiatives, little gifts, I would say, that this new system have placed for these cricketers, just for that positivity in these games. Yeah, absolutely right. That's just to challenge them, and this is very good thing. You see, very good point you raised. The first 50 came in 88 deliveries, and second 50 came
in 56 deliveries. There's a huge difference of strike rate here. So this will give them challenge, and maybe the third 50 become, you know, same deliveries, 60 or 70. So very good strike rate. Yeah, they've got a new coach, Paul Franks. So probably he would have realized all this point system. I remember last year, Sindh missed out from just 1 point from Northern it was, and they qualified for the final. It was that close. And there was this 1 point at Gaddafi Stadium, and they could have declared, and they did not. They carried on playing and missed out on that 1 point. And in the end, it costed them a place in the finals. So it's very important to keep a check on these bonus points. Which bonus point, how you can get it, where you can get it. It's very important. Definitely very important. If last year it was just 1 point, that made a huge difference playing final. So obviously it will be in back of mind of obviously all the coaches and players who are playing. So this is the target. You have to get it in these overs. So very good. That's good. And so as Abdullah Shafiq easing the things for him, going for another milestone, which is 150. Well played, ball came in, but he adjusted it beautifully. Covered the line of off stump and just nudged to cover point area to get one. It's been hard work. 4-day cricket. New challenge. Players have just played National T20 Cup. There's a change in approach. That's what we were talking about. Paul Franks, the coach for Central Punjab, replacing Abdul Razak, the great Abdul Razak. Yeah, joining the team as a head coach, it will be a good challenge for him as well. New team, new atmosphere, 224 for 4. Batting card, you can see a huge difference between Abdullah Shafiq and other guys. No one could cross that 20 apart from Qasim Akram, who is playing with patience. Yeah, no real big partnership. It's been 43, 34, 48, 34, and this one has just crossed 50. Purpose has been served. Down the track, forcefully hit, just for 1. I can understand what Abdullah Shafiq must be thinking right now. He's so confident. He's coming down the track. He has to hold himself a bit for a long inning. Go for 200. Good shot, but straight to the hands. That's Ali Shan, the wicketkeeper batter, due in next. Played an excellent inning, I remember last year at State Bank ground. Single-handedly almost won the game. In the end could not quite finish it, but that was a wonderful 90-odd runs. So the Central Punjab is a very, very good side,
And definitely when Azhar Ali comes back, he will be the captain, and that will give a lot of energy to the side. That's 4. Beautifully done. Through the hands of the fielder. Good shot. Loose delivery. Over pitch. In his slot. And it didn't try too much. But just a placement into the gap for 4. A welcome boundary for Qasim Akram. Moves to 27. And he's shaping up well. Feeling confident now. "70 runs in 95 deliveries between these two. Change of bowling from pavilion, and Asif Mahmood comes back onto the attack, replacing Umar. Abdullah gets off the strike very quickly. Yeah, earlier I just pointed out that Sindh missed out from 1 point. It was 7 points. I've just been corrected, my fellow statistician, Mr. Farhan. It was just 7 runs, 7 points difference. Still, it was so close that it did make a difference. Sindh played beautiful cricket in that tournament, but missed out on that points. Classical, gorgeous. Has enough legs to go down to the boundary. 4 runs for Qasim Akram. Beautiful and pleasing shot. Pleasing on eyes. Qasim Akram. Over pitch delivery. And how good he played into the gap. Middled it with perfection. Runs are easy to come now for Central Punjab, and this partnership is just getting worried, a little worried for Sindh side. It has gone This ball. the length also. Beautifully bowled. I think that is where they should be looking to bowl most of the deliveries. Just outside the off stump, just teasing length. I call it drive me length. Edge taken beautifully. What an excellent catch that is by Sarfaraz Ahmed, and the length, line, everything working for Asif Mahmood. The much needed wicket of Qasim Akram. Beautiful ball. You can't help yourself with this length until or unless you are lucky enough to get away from these deliveries. Beautiful bowling, right on money. And excellent catch by Sarfaraz. Oh, he played well, but lost his wicket. On 31, it was brilliantly caught by Sarfaraz off Asif. It's 236 for 5. You have to feel for him. Played so well for his 31. .236 for 5.
चाय के वक्फे के बाद 14 ओवर्स के खेल में 56 रन बने हैं। काफ़ी दिलचस्प ये घंटा था, उसमें कासिम अकरम की विकेट भी अभी आसिफ ने हासिल की। बहुत ही अहम मौके पर उन्होंने कामयाबी हासिल की, क्योंकि ये जो 70 से 80 ओवर्स का दरमियानी अरसा था, इसमें बॉलर्स कदरे थके हुए ज़ाहिर होते और गेंद पुरानी हो चुकी है, तो बैट्समैन के पास हमेशा मौका होता है तेज़ी के साथ रन्स बनाने का। अब्दुल्ला शफीक ने आज शानदार सेंचुरी स्कोर की, अभी भी वो डट कर खेल रहे हैं, लेकिन दूसरे एंड पर उनके साथ किसी ने भी कोई बड़ी पार्टनरशिप की नहीं। नया बैट्समैन अली शान जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, और ये 80 ओवर्स तक यही सोच रहेगी कि एक तरफ से फवाद आलम तेज़ी के साथ रन न बनने दिए जाएं, और कासिम अकरम के आउट होने पर सऊद ने सुख का सांस लिया होगा, क्योंकि वो स्पिनर पर तेज़ी के साथ रन बना सकते थे। अब सेट होकर वो पर तोल रहे थे बड़े शॉट्स के लिए। लेकिन दूसरे एंड पर अब्दुल्ला शफीक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी धुन में मगन रहकर खेलते हैं, अपनी चाल पर खेलते हैं। ये उस तरह के बैट्समैनों में से एक हैं जिनको बेपनाह शौक़ होता है बैटिंग करने का, लंबी लंबी इनिंग्स खेलने का, अपनी विकेट की बहुत बड़ी कीमत लगाने का। अपने 1000 रन से ज़्यादा दूर नहीं है, और अगर इस इनिंग्स में वो ऐसा कर पाए तो सेंट्रल पंजाब की टीम को बड़ी खुशी होगी। एक सेंचुरी इनके नाम है पहले ही अली शान के, सिंध के खिलाफ ही इन्होंने वो सेंचुरी स्कोर की थी। एक और ख़ूबसूरती होती है जिस तरह ये फाइन लेग पर अभी फील्डर को लाया गया लेग स्लिप पर। सरफराज अहमद विकेटों के पीछे हैं, खुर्रम मंजूर भी स्लिप में हैं। तो जो नए बैट्समैन होते हैं इस तर्ज के खेल में, उनको तन्हाई महसूस नहीं होती पिच पर। आपको आसपास लोग मिलेंगे जब स्पिनर बॉलिंग कर रहे होंगे। अली शान अमूमन जारहाना बल्लेबाजी की वजह से जाने जाते हैं, और अब्दुल्ला शफीक जैसे मंझे हुए बल्लेबाज का साथ हासिल है इस वक्त उनको विकेट पर। इत्मीनान से खेला इनसाइड द लाइन, अपने बल्ले को लाकर अली ने 237 5 विकेट पे। आज के दिन सबसे ये बड़ी पार्टनरशिप थी जिसका पिछले ओवर में उमर ने खात्मा किया सरफराज अहमद की मदद से। राजा आसिफ महमूद ने बस ये करते चले, इन्होंने आज 2 विकेटें हासिल की हैं। ये अच्छा तरीका है, आपको पावर कराते रहना है सेट बैट्समैन को भी कि वो फ्रंट फुट पर आकर नहीं खेल सकते। आसिफ महमूद का जो पहला स्पेल था वो इतना कारगर नहीं था, तकरीबन उन्होंने सेमी न्यू बॉल जो है वो ज़ाया कर दी थी। उस वक्त गेंद को बहुत ज़्यादा पटक रहे थे या यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके पास से ये बॉलिंग क्रीज पर खासे सेटल लगते हैं। अच्छी लेंथ को इन्होंने अपनाया है, तो इससे एक ये भी हम मतलब ले सकते हैं अयाज के ये बड़े अच्छे लर्नर भी हैं। बड़ी तेज़ी के साथ इन्होंने सीखा है कि किस तरीके से इस पिच पर बॉलिंग करना है, इस फॉर्मेट में बॉलिंग करना है, क्योंकि T20 से आ रहे थे
तो आपको जो लेंथ है वो मुख्तलिफ करना पड़ती है। जी बिल्कुल तारिक, काफ़ी दूर दूर बॉलिंग कर रहे थे, जैसे हम कॉम बॉक्स में आप बात कर रहे थे सीनियर्स लोग, यासिर हमीद, तारिक साहब और अली यूनस, काफ़ी दूर दूर बॉलिंग की, लेकिन दूसरे सेशन में काफ़ी बल्ले के पास बॉलिंग की। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन ऑफ साइड स्वीपर मौजूद है। दूसरे के लिए वापस जाना चाहते थे, खासा आगे निकल गए और यहाँ तक के रन आउट हो गए। जी हाँ, सरफराज ने काम तमाम किया, अच्छी थ्रो आई बाउंड्री लाइन से। उमर बिन यूसुफ थे जो सिंध की टीम के सबसे फुर्तीले आउटफील्डर हैं। अब्दुल्ला शफीक ने मना किया और ये कॉल सुन नहीं सके अली शान अब्दुल्ला की, उनकी जो नो की कॉल थी। अली शाह ने फील्डर को देखा नहीं और पलट पड़े अपने पार्टनर की तरफ, लेकिन काफ़ी क्विक थ्रो था, आखिर तक देखते रहे बॉल। अब्दुल्ला शफीक एक रन 23 से मुकम्मल किया, फिर उसके बाद पलट कर देखा नहीं, काफ़ी तेज थ्रो था उमर बिन यूसुफ का और बहुत दूर निकल गए थे, वापस मोड़ना उनके लिए नामुमकिन हो गया था। यहाँ थ्रो बड़ी तेज़ी के साथ आई और अच्छा टिप्पा पड़ा सरफराज अहमद के सामने, इसलिए उन्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आई। अली को ज़रूर मुश्किल पेश आई, वो स्कोरर्स को जहमत दिए बगैर गए वापस 5 पे 0 पे 238 पर 6। आमिर यमीन, इनको भी सेंट्रल पंजाब की बैटिंग को सहारा देने के लिए रखा गया। अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं और नहीं रोक सके पॉइंट के फील्डर। बहुत बाहर गेंद मिल गई, आज़ादी मिली ये शॉट स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में खेलने की आमिर यामीन को, और उन्होंने वक्त ज़ाया किए बगैर इससे बाउंड्री पार पहुंचा दिया। उभरते हुए नौजवान ऑलराउंडर हैं आमिर यामीन और अपने शॉट्स खेलना जानते हैं। आते ही उन्होंने बताया कि वो क्रीज पर आ गए हैं। निहायत ही शानदार शॉट, तेज शॉट था। आसिफ महमूद ने खासे रन दे दिए हैं, लेकिन जो 3 विकेटें उन्होंने हासिल की वो कप्तान के लिए खासा हौसला अफजा होंगी। एक और अच्छा स्ट्रोक, इस बार पहुंच जाएंगे साद खान, लेकिन 2 रन हासिल किए। तो ये माहौल को कुछ गरमाएंगे आमिर यामीन, जो इनके खेलने का अंदाज़ है, क्योंकि ये उस तरह के बैट्समैन नहीं हैं जो विकेट पर रुक कर खेलेंगे, या दिफाई अंदाज़ इनकी जानिब से देखने को मिलेगा। ये अटैक करने के लिए जाने जाते हैं और जितनी देर क्रीज पर रहेंगे हलचल मचती रहेगी। आते ही उन्होंने 2 शॉट्स ऐसे लगाए हैं। सीज़न का जल्दी आगाज़ हुआ है इस साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। सितंबर के महीने में ही इस पर बात होगी अगले ओवर में चलकर। अंपायर का ये ख्याल है कि शायद अभी एक गेंद बाकी है, लेकिन जो हमारे स्कोरर्स हैं उनके मुताबिक 72 ओवर्स निमट चुके हैं। ये देखिए अगले कदम पर स्ट्रोक खेला, ये जो है इन्होंने फील्डर की तरफ ज़रूर देखा, लेकिन साथ ही बैट्समैन पर बिल्कुल नज़र नहीं थी अली शान की। इनका ख्याल था कि अब्दुल्ला शफीक डेंजर एंड की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि पहली बार दोनों एक साथ बैटिंग कर रहे थे, इसलिए वो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी। यहाँ तो सरकारी तौर पर अब ये 72वां ओवर ख़त्म हुआ है, 244 पर 6।
ये बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार की तरह अब्दुल्ला शफीक इस पिच पर मौजूद हैं और इनके जो ज़्यादातर जो इनके रन्स रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, जो इनकी सेंचुरियाँ हैं, और इस बार खेल दिया ये सामने की जानिब, लंबे सफ़र पर निकले अब्दुल्ला शफीक ने, ये ज़ोरदार छक्का लगाया, बिल्कुल साइड स्क्रीन को जाकर गेंद लगी। ये मर्दाना वार था। अब्दुल्ला शफीक ये शॉट खेलने में यकता हैं स्पिनर के खिलाफ। कदमों का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया इस छक्के के साथ, 250 का हिसाबूर किया, नहायत ही शानदार शॉट, हेड स्टील था, आखिर तक बॉल को देखते रहे। इस छक्के की मदद से जो 250 रन मुकम्मल हुए हैं 100 ओवर्स से पहले, तो इस सेंट्रल पंजाब को दूसरा बैटिंग बोनस पॉइंट भी मिल गया। सिंध की टीम जो है उसको भी 2 बोनस पॉइंट मिल चुके हैं क्योंकि उन्होंने 6 विकेटें ले ली हैं। अगर आप 100 ओवर्स तक 8 विकेटें लेते हैं तो आपको 3 बोनस पॉइंट मिलते हैं, और अगर 100 ओवर्स से पहले सेंट्रल पंजाब की टीम जो है ये 300 तक पहुंचेगी तो फिर इनको तीसरा पॉइंट मिल जाएगा। 350 पर इनको 1 पॉइंट और मिलेगा, या 400 तक आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं, 200 से 400 तक 100 ओवर्स की बैटिंग में, यानी 5 बैटिंग बोनस पॉइंट मैसर हैं। और इन बैटिंग बोनस पॉइंट्स में बड़ा अहम किरदार अदा किया है अब्दुल्ला शफीक के 138 रन ने। और अगर यहाँ पर 300 से पहले सिंध की टीम ऑल आउट कर लेती है तो उनको 1 बोनस पॉइंट और भी मिल सकता है। अगर आप 200 तक किसी टीम को ऑल आउट करते हैं या उससे कम स्कोर पर तो 3 बोनस पॉइंट मिलते हैं। 250 पर आपको 2 बोनस पॉइंट मिलते हैं ऑल आउट करने पे। थोड़ा सा पाँव में खिंचाव आया है फवाद आलम के। इतनी ज़्यादा क्योंकि हाल ही में इनको बॉलिंग करते हुए देखा नहीं है। फवाद आलम पिछले साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से दूर दूर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के साथ थे, और इस साल ये अच्छा देखने को मिल रहा है कि जितने भी जो टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी हैं, अब्दुल्ला शफीक या फवाद आलम, अजहर अली, अब इंग्लैंड से पहुंच रहे हैं काउंटी स्टिंट मुकम्मल करके पाकिस्तान। हो सकता है कि इमामुल हक भी, तो ये हमें नज़र आएंगे इस पाकिस्तान के प्रीमियर इवेंट में। और सिर्फ जो वाइट बॉल के स्पेशलिस्ट हैं, T20s खेलते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंगे। अच्छा इकदाम है, नौजवानों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा सीनियर प्लेयर्स के शामिल होने से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। ये 2 फास्ट बॉलर हैं सेंट्रल पंजाब के, अहमद दानियाल, और उनके साथ उनैन शाह नज़र आए थे। इस पिच पर खेलना चाहिए था इनमें से एक को। ये बैटिंग कारकर्दगी है पहले 100 ओवर्स में। ये पिछले सीज़न में जो सेंट्रल पंजाब ने 3.35 इनकी औसत रही थी पहले 100 ओवर्स में। और गेंद बल्ले के किनारे को लगती हुई गई, थर्ड मैन के खाली इलाके में 4 रन्स के लिए। और ये ऐसी पिच है जहां आप अगर 140 रन्स पर भी बैटिंग कर रहे हैं तो बॉलर आपको सवाल पूछते रहेंगे। यही आज सारा दिन हमने देखा है। थोड़ा सा बाहर निकला ये बॉल और अब्दुल्ला थोड़ा जल्दी आ गए थे, लेकिन काफ़ी खुशकिस्मत रहे दोनों फील्डरों के दरमियान से होती हुई बॉल 4 रन के लिए। आज जब मीर हमजा का सामना कर रहे थे अब्दुल्ला, तो उस वक्त जो 4 फील्डर स्लिप्स में से थे तो 2 के बाद गैप था, अगली 2 में वहीं से गेंद निकल गई थी। वहाँ मौका था
इनको जल्दी आउट करने का। फिर लेग स्पिनर की गेंद पर कैच गिराया खुद सऊद शकील ने मिड विकेट पर। और अगर आप इस तरह के बैट्समैन को इतने मौके दे देंगे तो फिर जाहिर है कि आपको बहुत देर तक ये सताएंगे, क्योंकि ये लंबी इनिंग्स खेलने वालों में से हैं, मौका ज़ाया नहीं करते। इन्होंने अपने पहले ही फर्स्ट क्लास मैच में सेंचुरी स्कोर की थी जब ये नॉर्दर्न के ख़िलाफ़ खेले थे स्टेट बैंक के मैदान पर, अब से 3 बरस पहले। और वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी थी इनके टीम में आने की। और इस सेंचुरी के बाद अगली इनिंग्स में इनको बैटिंग में डिमोट कर दिया गया, क्योंकि ओपनिंग पोजीशन पर उस वक्त इनको मौका नहीं मिल रहा था। तो 1 डाउन पर आकर इनने सेंचुरी बनाई थी, अपनी पहली सेंचुरी। और अगली इनिंग्स में फिर इनको बैटिंग ही नहीं कराई गई। और उसके बाद फिर जो है ये फाइनल में भी जगह नहीं बना सके थे प्लेइंग 11 में, जो फाइनल सेंटर पंजाब ने नॉर्दर्न से जीता था नेशनल स्टेडियम पर। और अब्दुल्ला अपना पूरा टेम्परामेंट शो करते हुए, निहायत ही सब्र से बारी करते हुए, जिसको कहते हैं कि बारी की भूख है इनमें। थोड़ी देर तक हवा में रही, ऑन द ऑफ खेलना चाहते थे अब्दुल्ला शफीक। सिंध के लिए ये बड़ी मौजूद सूरत हाल होगी, इससे ज़्यादा खुशकुन बात होगी नहीं अगर ये अब्दुल्ला शफीक चलता करें नई गेंद के आने से पहले और फिर टेल का सफाया हो जाए नई गेंद पर। बिल्कुल अभी तक मर्द आहन साबित हुए हैं अब्दुल्ला शफीक। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं। शानदार रनिंग, थोड़ा सा सुस्त आए फील्डर बॉल के ऊपर और उसका भरपूर फायदा उठाया अब्दुल्ला शफीक और आमिर यामीन ने। यहाँ 74 ओवर्स फील्ड में रहने के बाद आप तवक्को कर सकते हैं कि फील्डर जो हैं वो उतने तेज़ सर नहीं होंगे। देखिए बल्ला बिल्कुल सही हाथ में था, क्योंकि जब दाएं हाथ में बल्ला था तो ये लेग साइड की फील्ड को देख सकते थे फील्डर को थ्रो करते हुए भी। यही सही टेक्निक भी है रनिंग की। बेसिक्स बहुत ही अच्छी हैं अब्दुल्ला शफीक की, क्योंकि क्लब क्रिकेट इन्होंने बेपनाह खेली हुई है। 74 ओवर्स के बाद 6 विकेट पर पंजाब। बड़ा सख्त मुकाबला रहा है आज गेंद और बल्ले के दरमियान। दिन भर रन्स भी बने हैं, विकेटें गिरी हैं, सेंचुरी स्कोर की है अब्दुल्ला शफीक ने। बहुत कुछ हुआ है, कैचेस भी गिरे। सिंध की टीम की पोजीशन और ज़्यादा बेहतर होती है अगर कैचेस ले लिए जाते। और जिन दो खिलाड़ियों ने कैच गिराए हैं बड़े शानदार फील्डर हैं, निहायत ही शानदार, एनर्जेटिक। फवाद आलम जैसे काफ़ी फुर्तीले, फील्डिंग में काफ़ी जान पैदा करते रहते हैं। आमिर यामीन जो हैं ये फ़हीम अशरफ के जाने के बाद इनको मौका मिला सेंट्रल पंजाब की टीम में, और आज
ये ख्याल ये था कि शायद तेज़ बॉलर को खिलाया जाएगा, लेकिन इनकी जो बैटिंग सलाहियतें हैं और जो शक है सेंट्रल पंजाब की टीम मैनेजमेंट को अपनी बैटिंग पर, उस वजह से भी ये खेल गए, क्योंकि ये बैटिंग कर लेते हैं। एक डबल सेंचुरी भी है इनकी एफसी क्रिकेट में, तो शायद बॉलिंग से भी ज़्यादा इनको बैटिंग की बदौलत जो है वो खिलाया गया। हालांकि खासे मजबूत उम्मीदवार थे हुनैन शाह, जिस तरह की लेंथ पर वो नेशनल T20 कप में बॉलिंग कर रहे थे, खासी नेचुरल लेंथ थी उनकी लंबी क्रिकेट के लिए हुनैन शाह की, और रफ्तार भी 260 पर 6। दूसरी नई गेंद के आने में अभी 5 ओवर्स का खेल बाकी है। ये रिचर्ड स्टोनर हैं जो गैर मुल्की ट्रेनर हैं, ये बरतानिया से आए हैं, और यहाँ दोनों टीमों के खेमों में वो गैर मुल्की प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, जिससे बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को। जो खेल की जिद्दतें हैं उनसे हम आहंग होने का। और ये दूसरी टीम में जो इयन फिशर हैं, ये भी इंग्लैंड से आए हुए ट्रेनर हैं, सिंध के साथ हैं। दोनों टीमों के जो हेड कोचेज़ हैं आइंदा मैचेस में वो भी गैर मुल्की होंगे। सेंट्रल पंजाब को ज्वाइन कर भी लिया है पॉल फ्रैंक ने। आज फील्डिंग का म्यार इतना अच्छा नहीं रहा सिंध का। साइम अयूब से बिल्कुल भी खुश नहीं। जाहिद महमूद जो हैं ये ज़्यादा वक्त रिसीविंग एंड पर रहे हैं। बहुत ही बदकिस्मत बॉलर साबित हुए हैं जाहिद आज के दिन, और इन्हीं की बॉल पे काफ़ी ज़्यादा मिस फील्डिंग देखने को मिली है, और शायद इस वजह से इनको विकेट हासिल करने में काफ़ी देर लग गई। सीधा बॉल था, थोड़ा सा सुस्त हुए। खासी नज़ाकत है इस वक्त इस सूरत हाल में, क्योंकि आमिर यामीन तेज़ी के साथ रन्स बना सकते हैं, और इस पिच पर जो है बहुत खुलकर रन बनाना इतना आसान है नहीं। इससे ख़बरदार रहना होगा सिंध को। उनको ये मौका ज़ाया करना नहीं चाहिए, क्योंकि सिंध अभी भी इस पोजीशन में है कि इनको 310 315 तक इस इनिंग्स को समेट सके। और ख़ास तौर पर अब्दुल्ला शफीक के साथ अगर वो आमिर यामीन को रोक लेते हैं तो। हम पिछले ओवर में बात कर रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक की जो टेस्ट मैचों में उनकी जो ज़्यादा बड़ी इनिंग्स हैं वो पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में उन्होंने रन्स बनाए हुए हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी बनाई थी। बांग्लादेश में भी दूसरी इनिंग्स में इन्होंने पाकिस्तान को दोनों टेस्ट मैचेस जितवाए थे, चिटागोंग और ढाका में। और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स कोई भी नहीं भूल सकता। अच्छा खेलने में इस बार कामयाब हुए। गेंद बाउंड्री करीब आकर रुक जाएगी। 3 रन का इजाफा कनेक्ट करने में कामयाब हो गए थे अब्दुल्ला शफीक। और इस तरह जो दम्बूला का टेस्ट मैच इन्होंने पाकिस्तान के लिए ये फतहगर जब ये साबित हुए थे, 160 रन की इनिंग्स खेली थी, वो भी पाकिस्तान की दूसरी और मैच की चौथी इनिंग्स थी। लेकिन हाँ, ये जो पहले दिन के रन्स हैं ये आपको और ज़्यादा इत्मीनान देंगे। इससे ये भी जाहिर होता है कि टेस्टिंग कंडीशंस में भी आपकी टेक्निक अच्छी है। फास्ट बॉलर्स को भी आप खेल सकते हैं बाउंसी पिच पर। बिल्कुल, और टेम्परामेंट भी काफ़ी शो किया आज अब्दुल्ला शफीक ने। चेहरे से बिल्कुल नहीं लगा उनके, आखिर तक मुस्कुराते हुए और भरपूर अपनी बल्लेबाजी से इंजॉय महसूस करते हुए।
8 रन्स इस ओवर से आए, 268, 6 खिलाड़ी आउट। Three wickets for the debutant Asif Mahmood. A wicket apiece for Hamza and Umar, and a run out. Be interesting to see what decision skipper makes. 76 overs bowled. New ball will be due in 4 overs time. Will Sindh take it? The bowlers have toiled hard. Apart from Abdullah Shafiq, none of the central Punjabs could really get to grips with this Rawalpindi pitch. They got starts but couldn't convert. And this is an important phase of the game. 14 overs to go in the day's play. Last half an hour of scheduled play. We can go another half an hour just to get the overs in. Strangled down the leg side, a big shout. No, says umpire Imran Javed. Good evening, Yasir Hamid. Good evening, Faisal. Just 2 away, Abdullah Shafiq. It was brushed the pad, I guess. And noise heard by everyone close to the bat. Just 2 away. I think some discussion between Fawad and Captain Saud Shakil discussing some field change, I guess. Quaid-e-Azam has got through 11.1 overs, helping out his skippers and the fast bowlers as well to remain fresh. That's clearly the plan. He wants to bowl outside that leg stump, restrict the scorings until we get to that new ball. And Abdullah Shafiq closing in on yet another landmark. Very impressive strike rate as well, Yasir. 149 of just 200 balls. Yes, excellent strike rate. And played with authority, just 1 away from 150. Another milestone. Strike rate of 75. It's brilliant in 4-day match. A little fumble from Sarfraz. Was there an edge? Yamir Yamin, handy with the bat. His test will come when the new ball arrives. Sindh could really do well with getting Abdullah's wicket before that new ball arrives. They will have a realistic chance of rolling this innings over tonight. But Abdullah has been as solid as a rock. Yeah, the way Abdullah is playing, some miracle can do this. And very slim chances before the new ball. Not talking about new ball can do anything. But Abdullah Shafiq, the way he's playing, maybe he play well, new ball as well. That's end of 77th over and 269 for 6. Quick question, Yasir. If you were the Sindh skipper, would you take the new ball at 80 overs? Of course, Faisal. On this pitch, why not? You saw Asif just stretching out, just getting ready, getting loose. Probably he's got the signal from his skipper. Mir Hamza in the distance as well.
Regulation field. Trying to attack on that onside now. 4 fielders, 3 fielders. Well, now 2 fielders saving 1 and 2 have dropped down to the deep field. This is where Abdullah Shafiq is having a glance. And that's the moment. 150 for Abdullah Shafiq. Yet another landmark. Sheer genius and class from this man today. Relentless with his approach, and he's still going strong. Excellent inning. Flawless. And look at the strike rate. 201 balls, 24s, 16, 74.63. 150 runs for Abdullah Shafiq, coming back into the form. Guided away nicely by Amir Yamin. To come back for second now. He was a bit off color in T20s. 6 matches, 20 runs only. But now he has all the time in the world, and he took his time early on. Didn't go for any rash shot or anything extra. Just played accordingly. And now he's going. Good anticipation in the slip. Quaid-e-Azam preempted what Abdullah was doing, the reverse sweep, and he already started to move to his right. Stopped certain runs. Was it a catch? I'm not sure about that, but the anticipation was top class. Slog sweep. Bit of aggression from Amir Yamin. He realizes that's his moment to collect some quick runs before the new ball arrives. Yeah, that's what he's thinking. This is exactly he is thinking. If he's playing this shot, showing his all stumps to the leg spinner who can bowl flipper, googly, and a leg spin. The game situation is, if you look at the bonus points, both the teams are 2-all at bonus points. 2 batting bonus points for Central Punjab and 2 for Sindh. There was a single. Lapse in concentration. Amir Yamin wasn't ready. He apologizes immediately. 273 for 6. About 40 minutes are left into the day's play, if I'm not wrong. 5:30, yeah. Official time is 5:30. We'll play till 5:30, but if light allows, then it will go till 5:30. Maybe it goes till 5:20, 5:15, I guess. Could be a call-off time. Quaid-e-Azam continuing from far end. Bowling with this tight line, tight length. 2 fielders are back. Shouldn't he toss the ball up to Amir Yamin? I think they're really looking to just stop the scoring for another 10 balls. Amir Yamin showed some intent in the last over. He's prepared to take his time. This is also good if both these batters are there when the new ball arrives. Although Amir Yamin bats in the lower order, but he has good ability, especially when he's in. He's faced 24 deliveries already. Gives him a better chance to survive against that new ball.
Absolutely, he plays with positive intent. Amir Yamin, we have seen him on T20 or 4-day, but now 4-day player, he's playing with method. He's taking his time and he's not rushing. This is good. I'll throw another question to you, Yasir. Who would you bowl with the new ball for Sindh? You watch one straight to the fielder. Good defensive tactics from Sindh. Out of the three seamers you saw today, which two would you go with the new ball? One, definitely I'll go with Mir Hamza for sure. And The sweeper has come around. Umar, not before the batters can complete the 2 runs. I'll get your answer after in the next over, Yasir, as we see. Good lap sweep, just met the ball way out in front. Umar is a tired man. He's bowled plenty of overs. you get your answer here, I guess. 277 for 6. I think Asif Mahmood, he's playing his first game. He's more energetic. He bowled less overs than Umar, I guess. Umar had 2 long spells, if I'm not wrong. He's bowled 16 overs, and Asif also bowled 16 overs. But look at the look at the difference between Asif and Umar economy. Umar just gave 25 runs. That's brilliant. And as a skipper, would you take the 3 wickets or the less economy, the better economy? 3 wickets for 83. 3 Probably wickets. he was bowling the aggressive lengths. Yeah. He went for runs, but then he got you 3 wickets. Yes, wicket column is good for Asif, but look at I think Umar was a bit unlucky, but he has done his job as well. But Asif playing his first match, not bad, 3 wickets. Good sweep shot by Abdullah. He played this shot well, Faisal. Along the ground, this is very important. When you play 4-day, you play along the ground. He definitely, that sweep shot, he's really come good for him today. The key is his good wrist work and the footwork. He gets down low and gets himself balanced, and then he plays way out in front as well. That allows him to use different angles and play with the field a little bit. This one's found the gap. Chase is on. Sweeper will get there eventually. 3 runs to the total. Again, good running between the wickets. Abdullah Shafiq, we have seen him running all day and didn't miss any run opportunity, even if it's single or 3 run. That gives you more boost. Yeah, and you have to give credit to him for his fitness. If you look at him, he's hardly broken a sweat. It's been pretty hot today. He's been there since the beginning. A lot of other people on the park are sweating profusely. Abdullah Shafiq hardly broke a sweat. He's slightly short. Another big chase. Fine. Went straight to the fielder on that occasion. Amir Yamin is taking these gaps well. Last shot he played, it was a bit squarer, wider, got 3 runs. Now this time he got 1 run. Talking about sweat, I never sweat when batting. Some people don't, and Yasir Hamid is one of them. I can think of another great English player, Alistair Cook. They always used to use him to dry the ball or make the ball for the bowlers, because he never sweat. Neither did Yasir. 80 gone, 283 for 6.
Keep an eye on those umpires. Will Saud Shakil take the new ball? He's brought Hamza back. That's one giveaway. Probably he wants him to bowl a couple of deliveries with the old ball just to loosen up so that new ball is not wasted. Sindh could do better by using the new ball better than what they did in the mornings. That scorecard is completely and utterly dominated by Abdullah Shafiq. 154 glorious runs. Starts for the other batters. Nobody converted. Amir Amin is giving him good company now. Partnership of 45. Important 45 runs for the 7th wicket. Happy hunting ground this for Abdullah Shafiq. You all remember his 100 against Australia here. Played quite beautifully there. A new ball taken by Sindh. I guess they will. I think they will take new ball. They took or not, I'm not sure about it, but Sajid Afridi had a long day. He's a senior umpire, experienced. Still persisting with the old ball. Well, we've been boasting about the over rate all day. It's been pretty good. Got a long time taken before the start of this over. I'm sure the umpires are making a note of it. One thing, Yasir, we saw last year, there wasn't a lot of emphasis placed on over rates. That also does matter in the end when you're looking for decisions in these matches. Time lost through bad light or slow over rate. Today was pretty good for most parts. Bit of a loosener. In my opinion, two reasons for that. Number one, they use spinners. That was slow, kept slow. Ball pulled. And the other reason is that the debutant they played, Asif Mahmood, his run-up is not that long. He didn't took much time for his bowling, and also Amir Hamza, obviously they are experienced campaigners. Little bit of movement even with the old ball. Now Abdullah Shafiq is on strike. Will they take the new ball during this over? I'm not quite sure what's going on there, because when the reason you bring on Hamza, supposed to take the new ball, but you would have had a better chance against Amir Amin. But now Amir Amin is off strike. And now they have decided to take that new cherry. Two deliveries into the 81st over. This should mark a very, very interesting passage of play here. Yeah, here we go. New ball in the hand of Mir Hamza. After second ball, he felt well. I think the ball he was spot on. I think this is the right time to take the new ball. Little bit of shape, two slips and a gully. Those three fielders could be in action. Khurram Manzoor. Quaid-e-Azam has a story to tell to Sarfraz and Khurram Manzoor. Still talking. Must be some interesting story. What could it be, Yasir? It must be some new ball story of any match when they took and what happened. I think they were discussing plans for the dinner tonight. Maybe. After a long day. They deserve it, don't they? Yeah, I think they are back in the game. They are back in the game with these 6 wickets. Only one, Abdullah Shafiq, stood alone in the way. Otherwise, Sindh was well placed with all the other wickets. Credit must go to Abdullah for this.
day. And it is. In the air and away from the fielders. Slashing hard at a wide delivery. The angle was taking the ball away. A tired looking stroke, but luck has gone Abdullah's way. He dejected. He thought it will go into the hand, but it's nobody's fault. I must say it was good shot in the end. When he committed it, in the end, he opened the blade of the bat, sliced it. And the only good thing, he went hard. Otherwise, curtains for. Yeah, Mir Hamza has kept him waiting for that in-swinger. Another one angling across Abdullah. 288 for 6. This line is too far. Let him eat this ball. He's playing all day. He's playing for all day, and now he's seeing the ball as a football. Amin can be tested here. That's Umar now. You're right, Yasir, you make a good point, because the concentration levels may not be as good as they were in the morning. And now with a big score behind him, he would really like to go for those wide deliveries like he did in the last over. Little bit of seam movement there from Umar. He found that with the first new ball as well. It'll be interesting to see if he can bowl consistently in those good areas. Yeah, he covered the line well. But you're right. They need consistency, which is key to success. That length will be easy to manage. You allow a lower order batter with the new ball off the back foot, and it means that that wasn't a good delivery. Too straight as well. Amir Amin is no mug. He's quite capable. It'll take a good delivery to get rid of him. Talking about Abdullah, like Yasir was saying, he may not be concentrating as hard as he did this morning. So if you find good areas to him, he's likely to go after you. And that's where your chance as a bowler comes. It's again slightly away from the body, but that length was back of a length. Invite him for that drive. Let him play that expensive drive. Yeah, absolutely. That length allows him to stop, tap and run. Just pitch it up to him. Ball is swinging. It's evening time. Soft hands. No problem for him. Despite being too far away from his body, he's so set. If he's slightly fuller, I'm sure he'll go for it. Different kettle of fish now, Amir Amin. Beautifully bowled. Umar thinks what he needs to do to get that edge. Definitely, he is a bit unlucky. Couple of times in a day we have seen in the morning he bowled few deliveries like that, but couldn't lucky still now. But he's working hard. Maybe he gets reward in the end. A yard fuller, Yasir. A yard fuller. That will create a smaller angle after the ball moves, and that will give him a chance to find the edge. His margins are very small. I think if he's feeling pain, it will be not a good idea for him to continue, because he's bowling for all day. I think he was not warm up well. Maybe. Because we saw Asif was warming up. The way he's clutching at his hamstring.
Keep an eye. Squares him up, but that length allows him to adjust. He's working very, very hard, Umar. Yeah, clearly you can see him tired, putting his effort in. We can see this. He's working hard. If you look at his analysis, only 27 runs he conceded. That shows his consistency. In the air and away from the fielder. Amir Yamin couldn't resist the temptation. Wasn't in complete control, but will earn himself a boundary. Yeah, chances were created, but Amir Yamin is a strong lad. Posted over the top of point fielder. A bit risky, but lucky, I must say. Onto the boundary. 294 for 6. I think Hamza will cherish bowling to Amir Yamin instead of banging his head against the wall of Abdullah Shafiq. He's solid. One bouncer would be a good idea here, but right on target. It's been a long day, Yasir. Here Hamza, could he find that last ounce of energy to get a good short one and then pitch it up for the remainder of the over? Probably he didn't need a bouncer. Appealing. That in swinger with the naked eye, it looked like it was just sliding down the leg side. Yeah, clearly impact was outside the leg stump. Yeah, it's going down. It could be umpire call. Maybe hitting the clipping leg stump. Yeah, but good movement. That's what Mir Hamza will be excited about. Just the lines slightly straighter. These are, like I was saying, small margins. High. And too straight once again, but the ball is definitely moving for Mir Hamza. Last delivery. Pitched on the middle stump and swung. Swung and went to the leg stump, outside the leg stump. I think the idea should be outside the off stump a bit. Fifth stump, maybe. And slightly fuller. Was back of a length, slightly fuller. Get him onto that front foot or catch him on the crease with the feet static. He's tried everything. This was the away going delivery. Amir Yamin just squared up but was able to put bat to ball. Yeah, managed it well at the end. Amir Yamin. Good marks to him. Ball went other way. Made that S, as Tariq said. But he played it under his eyes, which meant that he was watching the ball till the last minute. Slightly short. Good bit of work. Excellent from Umar bin Yusuf. Late in the day. Good energy. Excellent in a shot and beautiful fielding by Umar. Look at the anticipation by Umar. He moved to the left. Everything was okay about this dive.
296 for 6. बढ़ जाएगा। दोनों काफ़ी अनलकी होंगे, कासिम अकरम और तैयब ताहिर। काफ़ी गहरी गुफ्तगू चल रही है कहाँ किस तरीके से इस पिच पे खेला जाना चाहिए था। शायद अब्दुल्ला शफीक से काफ़ी कुछ सीखना होगा कि ऐसी पिचेस पे आपको कैसे अप्लाई करना है अपने आप को, किस तरीके की बैटिंग करनी है। क्योंकि ये शानदार इनिंग रही है, 160 रन अकेले ही खड़े रहे हैं एक एंड पे। 296 पर 6 सेंट्रल पंजाब। 7 ओवर्स का खेल आज के दिन में बाकी है, या आधा घंटे का खेल बाकी है। दोनों में से जो पहले हो गया। अच्छा यॉर्कर था ये, और अच्छी रनिंग बिटवीन द, और सीधा ड्राइव किया 4 रन्स के लिए, और सीधा ड्राइव किया 4 रन्स के लिए, और अपनी टीम के लिए 300 रन्स मुकम्मल किए। और 100 ओवर से पहले मुकम्मल करने का मतलब है कि तीसरा बोनस पॉइंट भी सेंट्रल पंजाब ने हासिल कर लिया इस खूबसूरत ऑन ड्राइव की मदद से। स्टिल हैंड, नहायत शानदार शॉट ओपन फेस ऑफ द बैट। नहायत खूबसूरत बल्लेबाजी का मुजाहरा किया आज अब्दुल्ला शफीक ने, जितनी तारीफ की जाए उनकी कम होगी। अकेले ही मर्दे आहन का किरदार अदा करते हुए। काफी बाहर था बॉल, इसको खेलने गए लेकिन बैट का फ्लो थोड़ा नीचे रखा उन्होंने। असल अनलकी का तो आपने जिक्र ही नहीं किया। अली जो रन आउट हो गए आज, अली शान, जिन्होंने अपने पार्टनर की तरफ नहीं देखा। देखिए उसे अनलकी नहीं कहेंगे, उसे तो एरर इन जजमेंट कहेंगे। बेसिक स्कूल बॉय एरर था वो। और ये शानदार शॉट है, काफ़ी अच्छा कट खेलते हैं जब भी फ्लैट बैटेड शॉट खेलते हैं अब्दुल्ला शफीक, शानदार खेलते हैं। और इस इनिंग में तो बहुत हमें ये शॉट देखने को मिला है। बैक फुट पंचेस, बैक फुट कट्स, स्क्वायर कट्स। बहुत ही इम्प्रूव्ड इनिंग कहूँगा मैं अब्दुल्ला शफीक की जानिब से। जी बड़ा शानदार शॉट था, बल्ले का फ्लो फेस नीचे था, कोई ख़तरा नहीं था। काफ़ी तेज़ी से बॉल बाउंड्री लाइन की जानिब गया। आज सबसे शानदार बात फील्डिंग में उमैर बिन यूसुफ की जानदार फील्डिंग। एक रन आउट किया उन्होंने और उसके बाद पूरी तरह से ग्राउंड में बिजी रहे। इस बार रोक नहीं पाएंगे, ये बॉल चला जाएगा 4 रन के लिए। फील्डर को सर्कल के अंदर बुलाया था और आमिर यामीन जिस तरह के प्लेयर हैं वो मिस आउट नहीं करने वाले हैं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, इस पेस पे ये हमेशा ही 4 रन के लिए जाएगा। काफ़ी जारहाना मिजाज अपनी बल्लेबाजी की वजह से टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए। फ़हीम अशरफ के बाद बिल्कुल हिले नहीं अपनी जगह से, उनको अपने शॉट पर पूरा एतमाद था। और तेज़ी से रन्स में इजाफा करते हुए आमिर यामीन, काफ़ी देर के बाद बैटिंग लाइन में कोई बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक का साथ देने के लिए मौजूद है। चौरासी ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ। सेंट्रल पंजाब ने बनाए हैं 306 रन, 6 विकेट्स गवा के। शानदार बैटिंग कार्ड इस वक्त, और उसमें सफ़े अव्वल में 165 रन्स बनाकर अब्दुल्ला शफीक 217 बॉलें। नहायत ही शानदार टेम्परामेंट का मुजाहरा किया उन्होंने। और 33 रन्स की पारी खेलकर आमिर यामीन इस वक्त उनके साथ विकेट पर मौजूद।
काफ़ी बड़ी अपील थी ये, लेकिन शायद बॉल ऊंचा लग रहा है थोड़ा सा। काफ़ी देर के बाद मीर हमजा कामयाब हुए, बॉल थोड़ा अंदर आया, बैठ गए थे ज़मीन पर अपील करते करते। उनकी कोशिश है कि ज़्यादातर वो आमिर यामीन को खिलाएं बॉल को। नबीतुली बॉलिंग का मुजाहरा किया है हमजा मीर ने। ये काफ़ी करीबी अपील थी। नो वंडर कि मीर हमजा बैठ गए थे नीचे अपील करते करते, क्योंकि शायद ये बॉल लेग स्टंप को लग रहा था। जब आप पूरे दिन इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मुश्किलात की वाली कंडीशन से निकल के, और आखिरी 6 ओवर्स में ऐसी अपील हो और ऐसा बॉल लगे तो दुख तो होता है। बिल्कुल सही फरमाया। फील्डर वहां मौजूद है, एक ही रन बन पाएगा। एक बार फिर नजर डालते हैं, देखना होगा कि पिच लेग स्टंप पे हुआ, ये तो हम कह सकते हैं, और बॉल शायद लेग स्टंप को लग रहा था। जितनी जोरदार अपील थी इस चीज की गारंटी है, लेकिन इमरान जावेद को शायद इंप्रेस नहीं कर पाई वो अपील। आमिर यामीन मुल्तान के सबसे पुराने क्लब से इनका ताल्लुक, क्रीसेंट क्लब 1962। इनके क्लब से काफ़ी शानदार प्लेयर सुहेब मकसूद और अभी जूनियर्स में उभरते हुए नौजवान बल्लेबाज अराफात मिन्हास निकल कर सामने आए हैं। उज़ैर अब्दुल्ला ऑस्ट्रेलिया का टूर कर चुके हैं अंडर 16 की जानिब से, और अभी हाल ही में अंडर 16 में मिन्हास, समीर मिन्हास उभर कर सामने आए हैं। कुछ डेरा गाजी खान के बारे में बताइए, क्रिकेट कैसी है वहाँ पे, क्लब क्रिकेट का क्या स्ट्रक्चर है वहाँ पे, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको हम आइंदा फ्यूचर में देख सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं डेरा गाजी खान के क्रिकेट में और सियासी मामलात में भी। काफ़ी टैलेंटेड डीजी खान की धरती में इमरान रफ़ीक उभरते हुए नौजवान पाकिस्तान खेल रहे हैं, अभी फर्स्ट क्लास में भी आपको नज़र आएंगे। मोहम्मद शहजाद कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा है, मोहम्मद बासित लाहौर कलंदर का हिस्सा है, और सबसे अहम बात जो उभरते हुए टैलेंटेड नौजवान एक मोहम्मद शान अभी हाल ही में पाकिस्तान जूनियर लीग का हिस्सा बने हैं। नहायत ही मुतवस्सित घराने से उनका ताल्लुक़, और PCB ने, बोर्ड ने उनको मौका दिया, 135 की स्पीड उन्होंने कराई, और उनका ताल्लुक़ ऐसे घराने से है, मैंने उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है कि उनकी वालदा और वालिद कागज़ चुनने वाले घराने से ताल्लुक़ है, और अभी वो आपको नज़र आएंगे पाकिस्तान जूनियर लीग में। और डेरा गाजी खान की क्रिकेट में अहम बात आपको बताता चलूँ कि एक दौर था कि 92 में यूनुस खान भी डीजी खान में आकर सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट खेल चुके हैं। और चांस हो सकता है, डायरेक्ट थ्रो चाहिए थी। ये पहली बार नहीं है कि अब्दुल्ला शफीक की अपने साथी बैटर के साथ कंफ्यूजन हुई है। इस बार आमिर यामीन लकी रहे कि डायरेक्ट थ्रो नहीं लगी। यस नो अब्दुल्ला रुक गए थे। आमिर यामीन को काफ़ी बड़ा चांस हो सकता था, अपने पार्टनर की तरफ देखा ही नहीं उन्होंने, दिलचस्पी नहीं ली रन में, लेकिन शायद अब वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये 5 ओवर्स ख़त्म हो जाएं और हम नॉट आउट वापस जाएं, क्योंकि पूरा दिन बहुत शानदार बैटिंग की है, कॉन्सेंट्रेट किया है। 85 ओवर्स के लिए आसान नहीं होता है, यंग प्लेयर हैं, लेकिन इम्प्रेस तो सबको किया है अपने टेम्परामेंट से, अपने टेक्निक से और अपनी क्वालिटी ऑफ शॉट से भी, क्योंकि उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो भी शानदार है। सिर्फ 219 बॉलें ली हैं। 4 रन मिल जाएंगे। ये फ्लैशी शॉट है, जब भी बल्ला आप इतनी जोर से घुमाएंगे तो जो एज है वो 4 नहीं 6 रन के लिए चला जाएगा। ये कमाल का शॉट। आमिर यामीन का पहला छक्का काफ़ी ज़ोरदार तरीके से घुमाया उन्होंने, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं
स्पीड का भरपूर इस्तेमाल किया और 2 स्लिप्स के ऊपर से होती हुई बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। जितनी बॉलें फेस कर ले आमिर बॉलों को रंजों से मिलाना जानते हैं। ओपन फेस ऑफ द बैट, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं था। जैसा कि अली ने कहा कि काफी तेज बल्ला घुमाया। कमाल का शॉट खेले हैं इस बार बॉलर्स बैक ड्राइव। ये क्रिकेट की किताब में सबसे मुश्किल शॉट कहलाती है और उतने ही आराम से आमिर यामीन ने खेल के 4 रन हासिल किए। बहुत ही आला शॉट। पूरा मिडल हुआ आमिर का ये बॉल, आखिर तक आंखें बॉल के ऊपर थी आमिर की। स्पीड का भरपूर फायदा उठाया। निहायत ही शानदार शॉट था, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। बड़ा प्यारा साउंड आया बल्ले से। ये खतरनाक हो सकता था। शायद थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए क्योंकि नेचुरली अग्रेसिव प्लेयर हैं, अपने रन्स नहीं रोकते हैं, अपने स्ट्रोक्स नहीं रोकते हैं। यहाँ पे इनको ख्याल करना होगा कि अब ऐसे टाइम पे जबकि दिन का इख्तिताम होने वाला है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे फ्लैशी शॉट्स से इज्तनाब करें और नॉट आउट जाएं ताकि कल सुबह आएँ दोबारा फ्रेश होके दोबारा अपनी इनिंग का आगाज़ करें। खड़े खड़े खेल गए थे इस बॉल को आसिफ के। शानदार, ये लाजवाब शॉट है। इसे टाइम बहुत खूबसूरती से किया है। आमिर यामीन आज बहुत ही कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। कोई एक भी शॉट ऐसा नहीं है जो ख़राब दिखाओ, सारे मिडल ऑफ द बैट और सारे ही सूदमंद। अपने 50 के बिल्कुल पास, निहायत ही शानदार कवर ड्राइव। अब्दुल्ला शफीक ने शॉट देखते ही ये महसूस कर लिया था कि ये बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। बेहतर क्रिकेट है। एक रन हासिल किया। क्या ही कमाल के 49 रन बनाए आमिर यामीन ने कि एक ऐसे मौके पे जब कासिम अकरम आउट हुए, उसके बाद अली शान रन आउट हुए। एक अहम पार्टनरशिप की ज़रूरत थी और अच्छे टाइम पे या 80-85 रन पे पहुंच गई ये पार्टनरशिप, 85 रन की, और एक अहम टाइम पे और अच्छे रेट से आई है। सिर्फ 87 बॉलों पे ये 85 रन बनाए इन दोनों बैटर्स ने। छियासी ओवर्स के इख्तिताम पर 6 विकेटों के नुकसान पर बढ़ता हुआ स्कोर 324। आहिस्ता आहिस्ता गरूब होता हुआ सूरज। दिन के इख्तिताम पर बॉलिंग लाइन, निहायत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया मीर हमजा ने, लेकिन और सबसे ज्यादा कामयाब रहे आसिफ महमूद। 3 विकेट हासिल की, थोड़े से महंगे रहे। हवा में ज़रूर था लेकिन फील्डर जो हैं वो डीप पॉइंट पे खड़े हैं। एक रन आसानी से हासिल किया अब्दुल्ला शफीक ने। स्कोर पहुंच गया 325 रन। सेंट्रल पंजाब का बहुत ही एक शानदार इनिंग के बदौलत जो अब्दुल्ला शफीक 168 रन पर अभी भी मौजूद हैं। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है सिंध के बैटर्स को विकेट्स हासिल करने के लिए। अच्छे सेटअप करके विकेट्स हासिल की गई हैं, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिला है, सारी विकेट्स के लिए मेहनत करना पड़ी है। आमिर यामीन अपने 50 रन के बिल्कुल पास है।
इस तरीके से अपने 50 रन मुकम्मल किए हैं आमिर यामीन ने। इनके करियर का 12वां ये सगे मील उन्होंने अबूर किया है। 50 रन बहुत ही कमाल की इनिंग, एक बहुत टाइमली इनिंग, एक ऐसे मौके पे जहां टीम को बहुत ज़रूरत थी एक पार्टनरशिप की। साथ निभाया है अब्दुल्ला शफीक का और कमाल तरीके से निभाया है। बहुत ही कमाल स्ट्राइक रेट भी रही है, सिर्फ 54 बॉलों का उन्होंने सामना किया और एक शानदार निस्फ सेंचुरी अपने नाम की। 26 जून 1990 को मुल्तान में पैदा होने वाले शानदार उभरते हुए नौजवान ऑलराउंडर आमिर यामीन 50 रन का हिंसाबूर किया उन्होंने। शानदार बल्लेबाजी, नहायत ही कम बॉल्स का सामना किया उन्होंने और फुल फेस बैट, जिस वजह से वो टीम में शामिल है। ये वो 50 रन का शॉट हल्का सा फ्लिक किया, जहाँ काफ़ी खतरनाक शॉट हो सकता था क्योंकि क्रॉस काफ़ी शफल करके विकेट्स के सामने आ गए थे, वहाँ से फ्लिक किया है। अच्छा इस्तेमाल कलाइयों का, अच्छी इनिंग रही है, शानदार इनिंग रही है ये। सबसे फायदेमंद पार्टनरशिप, शराकतदारी दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। 92 बॉलों पर 90 रन अब्दुल्ला शफीक और आमिर यामीन। आमिर यामीन पहले बल्लेबाज हैं जो अब्दुल्ला शफीक के साथ ज़्यादा देर तक क्रीज पर मौजूद, और एक बड़ा हिंसा स्कोर बोर्ड की जीनत बनाया। क्या कहते हैं आप इनके चेहरों के तासुरात से, क्या आप कह सकते हैं? काफ़ी आपने आज हमें चेहरों के तासुरात से इम्प्रेस किया है, क्या कहेंगे आप इन तासुरात को? पवेलियन काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं तमाम लोग, और एक बड़ा स्कोर, ख़ास तौर पर आज का दिन अब्दुल्ला शफीक के नाम रहा। यहाँ काफ़ी अच्छा दिन रहा है बैटर्स के लिए। फैसलाबाद में अब्दुल फसी ने 100 रन बनाए, उमर अमीन ने अपने 10,000 रन मुकम्मल किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो ये दिन बैटर्स के नाम रहेगा। सबसे अच्छी इनिंग यकीनन अब्दुल्ला शफीक की रही, 168 रन 222 बॉलों पे, क्योंकि हमारे सामने खेली गई इनिंग है और हम कह सकते हैं कि किस शानदार तरीके से बैटिंग की गई है, कितने अच्छे टेक्निकल तरीके से रन्स किए गए हैं। वाह, कमाल का शॉट खेले हैं, फील्डर मौजूद है लेकिन ये बॉल उनके सर के ऊपर से चला जाएगा। अब अब्दुल्ला शफीक हर बॉल के साथ कॉन्फिडेंस उनका रेज हो रहा है। ये शानदार शॉट मार के 6 रन हासिल किए। जितना कॉन्फिडेंस से ये शॉट खेला, काफी देर से क्रीज पर मौजूद, स्टिल बॉडी का खूबसूरत शॉट, निहायत ही शानदार शॉट। फील्डर के मौजूद होने के बावजूद उनको अपने शॉट पर इतना एतमाद था कि ये बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगा। 334 पर 6। अच्छी इनिंग रही है, आते ही अटैक किया था और सबसे अच्छी क्वालिटी ये रही है कि अपने स्ट्रोक्स नहीं रोके, हर बॉल को मैरिट पे रन्स किए हैं, जहाँ का बॉल वहाँ ही खेला है और हर एरिया में रन्स किए हैं। कवर में शानदार चौके लगाए और एक बहुत ही उम्दा इनिंग आमिर यामीन के जानिब से 50 रन मुकम्मल किए। जाहिद महमूद, ये एक नया चैलेंज होगा, आखिरी प्रॉबेबली 2 ओवर यहाँ से करवाए जाएंगे जाहिद महमूद से। कोशिश तो यही होनी चाहिए यहाँ पे विकेट ना गवाई जाए। कल सुबह नए जज्बे के साथ फ्रेश आके इनिंग का आगाज करें। और एक और अयाज, सबसे अच्छी बात इस पार्टनरशिप की रही है वो रन रेट रही है। 5.15 से रन किए इस सेशन में, एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट भी हासिल किया है। और अगर यहाँ पे अगले 12.3 ओवर्स में ये बाकी 16 रन कर लेते हैं, 350 रन कर लेते हैं, तो चौथा बोनस पॉइंट्स भी सेंट्रल पंजाब को मिल जाएगा। हवा में बॉल है लेकिन बहुत दूर है, फील्डर के लिए कोई चांस नहीं, ये बॉल बाउंड्री लाइन के पार चला जाएगा। 6 रन के लिए, ऑल्दो थोड़ा रिस्की था, अगेंस्ट स्पिन खेलें लेकिन सेफ।
6 रन के लिए। और दूसरा छक्का लगाकर आमिर यामीन ने सेंचुरी पार्टनरशिप मुकम्मल की। जिस तरह खेल रहे हैं 350 रन मुकम्मल कर लेंगे दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए। काफ़ी कॉन्फिडेंट थे इस शॉट खेलने पर। कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल किया, झटके से बॉल को मिड विकेट के ऊपर से उठाकर बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया आमिर यामीन ने। काफ़ी तेज़ी से रन्स में इजाफा करते हुए आमिर यामीन। अच्छा बॉल था, दिफाई अंदाज में खेले, रन्स आ चुके थे। क्या यही क्वालिटी है इस पॉइंट सिस्टम की कि कोई भी सेशन, कोई भी ओवर डल नहीं है, क्योंकि अब बैटर्स को सर्च में है एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट की, जिसकी वजह से हमें थोड़ी एक्सेलरेशन भी देखने को मिल रही है, हमें बड़े स्ट्रोक्स देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि 100 ओवर्स में अगर 350 बनाते हैं तो 4 बोनस पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर 100 ओवर में 400 रन बनाते हैं तो 5 बोनस पॉइंट हैं। तो हर एक पॉइंट पे आपके लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव है। 88 ओवर्स के बाद 340 पर 6 सेंट्रल पंजाब। पॉइंट्स टेबल की हम बात कर रहे थे। आउटराइट विन, अगर आप पूरा मैच जीते हैं तो 16 पॉइंट्स मिलेंगे। ड्रॉ में आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर गेम टाई हो जाता है तो 8 पॉइंट्स मिलेंगे दोनों टीमों को। अगर किसी वजह से गेम अबैंडन हो जाता है तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और 2 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप फॉलो ऑन के बाद मैच जीते हैं। ये बहुत मुश्किल है, वैसे बहुत कम देखने को मिलता है हमें, लेकिन क्रिकेट में होता है। बिल्कुल, कुछ भी मुमकिन है किसी भी लम्हे। बिलाल शफात पाकिस्तान से काफ़ी क्रिकेट खेली है। हबीब बैंक को रिप्रेजेंट किया, कस्टम को रिप्रेजेंट किया। अच्छे बैटर थे, इस ग्राउंड पे एक सेंचुरी भी बना चुके हैं रावलपिंडी के अगेंस्ट 2011 में। या पॉइंट्स टेबल एक बार फिर आ गए, लेकिन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1 पॉइंट हमें सेव करेंगे अगर मैच फॉलो ऑन के बाद, और रिजल्ट अगर ड्रॉ होता है, ये अहम पॉइंट्स हैं। 200 रन पर 1 पॉइंट मिलेगा, 250 रन पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 300 पे 3, 350 पे 4, 400 पे 5 पॉइंट। लेकिन याद रखिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये 100 ओवर्स के अंदर अगर ये सब अचीवमेंट करते हैं तो ये पॉइंट्स मिलेंगे। बॉलिंग के लिए भी ऐसा ही है, 100 ओवर्स के अंदर। एक बार फिर देखेंगे हम इस बॉल के बाद। दूसरा इस ओवर में ये बॉल था जो इनसाइड एज हुआ आमिर यामीन के बल्ले से। मीर हमजा की शानदार बॉलिंग। जिस तरह आज तीनों सेशन खेले हैं अब्दुल्ला शफीक ने, डिजर्व करते हैं कि वो फिनिश अच्छी करें, आज के दिन का इख्तिताम अच्छा करें। 175 शानदार रन्स। लेग स्टंप पर था ये बॉल, क्लिक कर दिया इसको। दिफाई अंदाज आमिर यामीन का। 343 पर 6
सेंट्रल पंजाब। आज पहले दिन का ये आखिरी ओवर जाहिद महमूद करेंगे। 343 रन सेंट्रल पंजाब ने बनाए हैं 6 विकेट्स गंवाकर। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये रही कि अब्दुल्ला शफीक ने 176 रन की शानदार इनिंग खेली है। और अभी ख़त्म नहीं हुआ ये शो अभी जारी है, क्योंकि इस बॉल को उन्होंने खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही कमाल की बैटिंग जारी है, बहुत ही आला शॉट खेला है, बिल्कुल नहीं घबराए हैं कि आखिरी ओवर है, अपने स्ट्रोक्स को नहीं रोका है। यही क्वालिटी नज़र आई है हमें इनकी बैटिंग में। जितना सेट हो चुके हैं, शानदार बल्लेबाजी, जितनी तारीफ की जाए आज के दिन अब्दुल्ला शफीक की। छोड़ के किया बॉल, रिस्क लेना चाह रहे थे जाहिद महमूद, उसका भरपूर फायदा उठाया अब्दुल्ला शफीक ने। मिड विकेट के ऊपर से उठाकर बॉल को ग्राउंड के बाहर फेंक दिया। बहुत करेज चाहिए होता है दिन के आखिरी ओवर में ऐसा शॉट खेलें। कदमों का इस्तेमाल इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, ये कमाल का अटैक है। वो नहीं समझ रहे हैं कुछ भी जाहिद महमूद को, और ना ही इस सिचुएशन को कि आखिरी ओवर है। अपने स्ट्रोक शानदार तरीके से खेल रहे हैं। और यहाँ पे 350 रन मुकम्मल कर लिए हैं। इसका मतलब है कि 4 बोनस पॉइंट्स अब सेंट्रल पंजाब ने हासिल कर लिए हैं अब्दुल्ला शफीक की बदौलत। शानदार बारी, आज के मैच के हीरो। पहला मिड विकेट के ऊपर से उठा के खेले, इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठा के खेले। आखिरी ओवर में लूप दे के बॉल कर रहे हैं ताकि अब्दुल्ला शफीक रिस्क लें, और वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक जाहिद महमूद के बॉल्स पर रन समेट रहे हैं अपनी टीम के लिए, और 350 रन का हिंसा अबूर किया उन्होंने आखिरी ओवर में। आज के दिन के निहायत ही शानदार बारी, जहाँ एक पर्पस लगता है इस बारी के पीछे, इनफैक्ट इस सीज़न के पीछे, क्योंकि नेशनल T20 में ज़्यादा रन्स नहीं कर पाए, इन एंड आउट रहे टीम से, और हर्ट लगते हैं। और ऐसा लगता है कि अब दूसरी टीम्स को भी हर्ट करने वाले हैं ये, जिस तरीके से इन्होंने इस सीज़न का आगाज़ किया है, इस अथॉरिटेटिव वे से। देखिए अब बॉडी लैंग्वेज सरफराज जॉग कर रहे हैं, तो जब आप इस तरीके से ब्रूटल हेडिंग करते हैं तो आप दूसरी टीम का मोराल गिरा देते हैं, और यही शायद यहाँ पे सिंध के साथ हो रहा है। अब वो भी दुआ कर रहे हैं कि किस तरीके से आज का दिन इख्तिताम हो, कल दोबारा आए नई स्ट्रैटेजी के साथ, नए फ्रेश लेग्स के साथ, तो ही कुछ हो पाएगा। और अब्दुल्ला शफीक आखिरी ओवर में भी पहले ओवर की तरह शानदार बल्लेबाजी करते हुए। एक रन का मजीद इजाफा, 356 बढ़ता हुआ स्कोर। आमिर यामीन कहते हैं मैं भी कम नहीं हूं, अगर आप बाउंड्रीज लेंगे तो मैं भी कम नहीं हूं। अच्छी एफर्ट यहाँ पे। उमैर बिन यूसुफ आज बहुत मसरूफ दिन गुजारा है इन्होंने फील्ड में, बहुत फॉलो किया है बॉल ने, और आखिरी ओवर में ऐसी एनर्जी दिखाना ये कमाल की एफर्ट है। अच्छे तरीके से टाइम किया था, दोनों फील्डर्स के दरमियान बॉल गया था, लेट खेले, यही क्वालिटी है। देखिए अच्छी स्प्रिंट दिखाई, ये अच्छी फिटनेस है उमैर बिन यूसुफ की जानिब से। आखिर तक बॉल के पीछे गए और अपनी टीम के लिए रन सेव किया। या और इसके साथ ही आज के पहले दिन का इख्तिताम हुआ। सेंट्रल पंजाब बमुकाबला सिंध, ये पहला मैच यहाँ रावलपिंडी स्टेडियम में खेला गया। 358 रन बनाए सेंट्रल पंजाब ने, 6 विकेट्स गंवा के। काफ़ी कॉन्फिडेंट और काफ़ी अच्छा दिन साबित हुआ ये सेंट्रल पंजाब के लिए, क्योंकि टॉस नहीं हुआ था। अवे साइड सिंध ने अपने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया, और उनके पास कोई जवाब नहीं था अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग का। जिस अथॉरिटी से, जिस कमाल से, जिस अटैक से उन्होंने बैटिंग की है, ये बिल्कुल तारीफ़ के काबिल है। टेम्परामेंट शानदार रहा, टेक्निक भी कमाल की रही। सेशन के अगर हम देखें तो जैसे जैसे वक्त गुजारते चले गए, रन रेट बढ़ता चला गया। पहले सेशन में 2.75, दूसरे में 3.61, और तीसरा जो सबसे इम्प्रेसिव रहा वो 5.29 की रन रेट रही। इसका मतलब ये रहा कि जितनी देर उन्होंने वक्त गुजारा क्रीज पे, कॉन्फिडेंस आता चला गया।
और उनका भरपूर साथ दिया इस तीसरे सेशन में। आमिर यामीन ने जारहाना स्ट्रोक खेले ग्राउंड के चारों अतराफ, बिल्कुल नहीं रुके वो रन बनाने से। आज के मैच के हीरो, आज के शानदार बल्लेबाज, आज का दिन जिनके नाम रहा अब्दुल्ला शफीक। आबिद अली, अली ज़रियाब, मोहम्मद साद, तैयब ताहिर, ये सब सिमिलर स्कोर पे आउट हुए। 19, 20, 13, 31 रन बनाए कासिम अकरम ने। अली शान बगैर कोई रन बनाए रन आउट हुए। आमिर यामीन ने बहुत शानदार इनिंग खेली, अभी अनबीटन है 61 रन पर, लेकिन जो शो रहा जाएगा वो अब्दुल्ला शफीक के नाम रहेगा। 199 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, नजरें जमाए बैठे हैं एक बड़ी इनिंग पे, और 231 बॉलें उन्होंने ली, एक अच्छे रेट पे ये रन बनाए, और 358 रन सेंट्रल पंजाब बना सकी अपने 90 ओवर्स में 6 विकेट्स गवा के। और ये आज की शानदार बल्लेबाजी अब्दुल्ला शफीक के नाम रहा आज का दिन। जहां दिल चाहा उन्होंने खेला, कदमों का इस्तेमाल, शानदार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेले, लेट कैट, शानदार बल्लेबाजी, जितनी तारीफ की जाए। स्वीप खेले और स्क्वायर लेग के ऊपर से। किसी फील्डर के लिए आज कोई मौका नहीं। अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह की बारी खेली उनके साथ, आखिर में आमिर यामीन ने भरपूर साथ दिया। ग्राउंड के चारों अतराफ बहुत बिजी दिन गुजारा आज अब्दुल्ला शफीक ने। कदमों का इस्तेमाल, बॉलर के सर के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हैं जो जिसकी वजह से जाने पहचाने जाते हैं। और ये वो स्वीप गली के ऊपर से, शानदार बल्लेबाजी आज निहायत ही शानदार। जितनी तारीफ की जाए अब्दुल्ला शफीक के आज की इस बारी की कम होगी। और उनका आखिर में भरपूर साथ दिया आमिर यामीन ने। काफी तेजी से रन्स में इजाफा किया आमिर यामीन के आने के बाद सेंट्रल पंजाब की टीम ने। यहाँ मुश्किल वक्त रहा बॉलर्स के लिए। 1 विकेट हासिल की मीर हमजा ने, 1 विकेट हासिल की मोहम्मद उमर ने, 3 विकेट जरूर हासिल किए आसिफ महमूद ने, लेकिन रन्स बहुत दे दिए। इकॉनमी 6.06 की रही। जाहिद महमूद भी थोड़े महंगे साबित हुए, 4.78 की इकॉनमी, बगैर कोई विकेट लिए। फवाद आलम ने भी 13 ओवर्स किए, विकेट हासिल नहीं कर सके, और 358 रन 6 विकेट गवाकर सेंट्रल पंजाब ने बनाए। और आज यहाँ पे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से इतना ही। हम इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।